Very good evening, dear students. Welcome to Gate 2024 Marathon. Very good evening. Very good evening, dear students. Welcome to 2024 Marathon. In this session, let us discuss about some of the important basic concepts and the formulas and some of the problems from the network analysis. Okay, I hope all of you ready with your class notes. Now first let us see some points correspond to this voltage sources. Some points correspond to voltage sources. Now for this, now it is a symbol for the ideal voltage source. For this ideal voltage source, this internal resistance is equal to 0. Internal resistance is equal to 0. Now if you come to this symbol here, we can use this symbol for both AC as well as a DC source. जो symbol है ना, this symbol we can use for the both AC and as well as the DC source. Here भी confusion मत हो जाओ exam में. Generally many students get confused है इधर plus minus है, by default they go for DC. मगर इधर एक statement याद रख लो. If time is specified, if the time is specified, then it is an AC source. मान लो time नहीं दिया इधर, then it is a DC source. जो symbol है ना, we can use for the both AC as well as the DC. On other hand, देखिए मान लो इन द गिवन नेटवर्क if symbol given like this sir, now it is a representation only for AC source, क्यों बोलते प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पहले सोर्स भी चेक करो कौन सा सोर्स दिया, क्यों बोलते स्पेशली व्हाट विल हैपन, मान लो डीसी सोर्स दिया तो इंडक्टर है तो स्टेडी स्टेट में कैसे इंडिकेट करते हैं शॉर्ट सर्क्यूट, कैपेसिटर कैसे इंडिकेट करते हैं ओपन सर्क्यूट, मगर क्वेश्चन में एसी सोर्स दिया तो वी कैन नॉट गो फॉर ओपन सर्क्यूट शॉर्ट सर्क्यूट, वी हैव टू फाइंड आउट रेस्पेक्ट टू इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस. क्यों बोलते हो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ट्राई टू आइडेंटिफाई द सिंबल्स आल्सो केयरफुली, नाउ इन दिस एग्जांपल हियर देखिए, नाउ दिस इज अ वी आई कैरेक्टरिस्टिक करस्पॉन्ड टू आइडियल वोल्टेज सोर्स. मगर इफ यू कम टू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, देखो जी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए होना बोलते वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, देखिए इधर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए होना बोलते वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस ना बैटरी, नहीं तो वन मोर बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस जनरेटर. देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स सम इंटरनल रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस सम वोल्टेज ड्रॉप इज प्रेजेंट, देयर व्हाट विल हैपन ऑलवेज दिस आउटपुट वोल्टेज लेस व्हेन कंपेयर टू सोर्स वोल्टेज. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है इधर व्हेन द करंट गोस ऑन इंक्रीजेस हियर ऑब्वियसली दिस आउटपुट वोल्टेज गोस ऑन डिक्रीजेस. क्यों बोलते जब करंट इंक्रीज हुआ तो इधर क्या होता है ड्रॉप इज इंक्रीजेस, जब ड्रॉप इंक्रीज हुआ तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस. एंड इधर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज सोर्सेस वी यूज सम इक्विवेलेंट सर्क्यूट्स. क्यों बोलते हो क्वेश्चन में हमेशा एक स्टेटमेंट याद रख लो, स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई तो भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया तो पहले चेक कर लो इज देयर एनी वे टू सिंप्लीफाई द नेटवर्क. क्यों बोलते सिंप्लीफाई करने के बाद यू कैन इजीली रेट द रेस्पेक्ट टू इक्वेशन. विदाउट सिंप्लीफाइंग डायरेक्टली इफ यू वांट सॉल्व द प्रॉब्लम इट टेक द वेरी मच टाइम टू गेट द सॉल्यूशन. आप पुराना पेपर्स देखे तो भी मेनी क्वेश्चंस को कोई तो भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ना, कोई तो भी लॉजिक रहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. दैट्स वाई फर्स्ट ट्राई टू रिड्यूस द नेटवर्क. देखिए टू रिड्यूस द नेटवर्क वोल्टेज सोर्सेज के लिए वी कैन यूज सम इक्विवेलेंट सर्क्यूट्स. देखिए एग्जाम्पल में मान लो डिसिमिलर पोलैरिटीज आर कनेक्टेड, इफ टू वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज, इफ डिसिमिलर पोलैरिटीज आर कनेक्टेड वी टेक द नेट वोल्टेज एज ए एडिशन,
नहीं तो देखिए इधर इफ सिमिलर पोलैरिटीज आर कनेक्टेड हियर नेट वोल्टेज ऑफ दिस वन इज सब्ट्रैक्शन। हाँ, इधर भी सब्ट्रैक्शन कंक्लूड करते समय थोड़ा पोलैरिटीज भी ध्यान से देखना। इधर मान लो इधर V1 इज ग्रेटर, जब V1 ग्रेटर है तो जो नेट वोल्टेज है ना, नेट वोल्टेज पोलैरिटीज आर गिवन अकॉर्डिंग टू V1। अदरवाइज मान लो V2 इज ग्रेटर, देखो जी इफ V2 इज ग्रेटर नो पोलैरिटीज आर गिवन विथ रेस्पेक्ट टू V2। कम टू नेक्स्ट वन। देखिए एग्जांपल में V1 इज वन आइडियल वोल्टेज सोर्स, देखो जी V2 आल्सो वन आइडियल वोल्टेज सोर्स। जब दो आइडियल वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में है तो इफ यू वांट टू फाइंड रिस्पांस इन द लोड, now simply we can replace this one as a single source V1 equal V2। Here be same thing, मान लो resistance connected in parallel to ideal voltage source। देखो जी इधर in this example if I connect any load resistor, देखिए मान लो if your requirement is a load current, देखिए in order to find out the response of load current होना बोल तो जो resistance है ना, this resistance can be neglected। कोई तो भी रेसिस्टेंस इन पैरेलल टू आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो टू फाइंड आउट रेस्पॉन्स इन द लोड रेसिस्टर इट कैन बी नेग्लेक्टेड। मगर इधर थोड़ा ध्यान से अप्लाई करना है रिडक्शन टेक्निक। आपको रेस्पॉन्स को लोड में चाहिए बोले तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, मगर इन सम ऑफ द केसेस दे में आस्क यू टू फाइंड आउट द करंट करस्पॉन्ड सोर्स। आपको करंट करस्पॉन्ड सोर्स चाहिए बोले तो वी कैन नॉट अप्लाई द रिडक्शन टेक्निक, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा जो रिडक्शन टेक्निक है ना, इट इज वैलिड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू लोड। इफ यू आर डेवलपिंग फिगर लाइक दिस ओनली करस्पॉन्ड टू द लोड। सेम थिंग इधर भी देखिए व्हेन करंट सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल टू आइडियल वोल्टेज सोर्स, देखिए आपको रेस्पॉन्स लोड में चाहिए बोल तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, फॉर मेकिंग कैलकुलेशन इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, चलिए नेक्स्ट लेट अस कम टू लेट अस सी सम पॉइंट्स करस्पॉन्ड टू करंट सोर्सेस। देखो जी सिमिलर प्रोसीजर, सेम पॉइंट, सिमिलर पॉइंट्स यू कैन रिपीट करस्पॉन्ड करंट सोर्सेस। आई होप ऑडियो वीडियो एवरीथिंग क्लियर ना। Yes, in the two-port network also discuss some questions, don't worry। कौन है नो शर्मा जी, I'll discuss some two-port network questions also, don't worry। From every topic I'll discuss some questions also, okay, don't worry। And tomorrow maybe our networks G2Q will be all video also will come, there also discuss some questions, okay, in this session also discuss some questions, don't worry, okay जी, very good। देखिए इन द करंट सोर्स आल्सो, देखिए जो सिंबल है ना इधर भी सेम थिंग, दिस सिंबल वी कैन यूज फॉर बोथ AC एज वेल एज DC। आप इधर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया तो इट इज अ DC, टाइम स्पेसिफाई किया तो AC, टाइम स्पेसिफाई किया तो AC। देखिए आइडियल सोर्स में क्या होता है बोलते हो, करंट इज हमेशा कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, मगर जो आइडियल करंट सोर्स, देखो जी आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन्फिनिट। क्यों बोल, देखिए वी आर नॉट इंडिकेटिंग एनी रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ओपन सर्क्यूटेड रेजिस्टेंस कितना है जी, इन्फिनिट, ओपन सर्क्यूट रेजिस्टेंस इज इन्फिनिट। नाउ कम टू प्रैक्टिकल सोर्स। देखो जी इन द प्रैक्टिकल सोर्स, देखिए प्रैक्टिकल सोर्स में सम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू दिस वन, व्हाट विल हैपन, देखिए इधर मान लो IS करंट इज कमिंग हियर, देखिए ऑलवेज सम करंट इज डाइवर्टेड इन दिस ब्रांच, रिमेनिंग करंट गो टू द लोड। इधर हमेशा वी कैन कन्वर्ट इज लोड करंट इज लेस व्हेन कंपेयर टू सोर्स करंट। इधर भी आप ग्राफ डेवलप किया तो विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज नो दिस I वैल्यू गोस ऑन डिक्रीजेस। देखिए DC में वी फोकस ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस, मगर AC में वी फोकस ऑन इंटरनल इंपोर्टेंस। इधर भी क्वेश्चन में मान लो इफ मोर नंबर ऑफ करंट सोर्स आर प्रेजेंट, अगेन द we can apply some reduction technique correspond to current sources, देखो जी when two current sources are in parallel, मान लो both are in same direction, then the result will be addition। एडिशन करने के बाद डायरेक्शन में थोड़ा ध्यान से चेक कर लो, जो डायरेक्शन है ना I1 I2 का सेम डायरेक्शन इंडिकेटेड है, सेम डायरेक्शन इंडिकेटेड। देखिए सेकंड एग्जांपल में बोथ करंट सोर्स ने पैरेलल, मगर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन है तो नेट करंट इज अ सब्ट्रैक्शन। इधर भी थोड़ा डायरेक्शन ध्यान से देखना। इधर मान लो I1 इज ग्रेटर, जब I1 ग्रेटर हुआ तो
देखो जी, मान लो इधर I1 ग्रेटर हुआ तो डायरेक्शन इज गिवन अकॉर्डिंग टू I1। नहीं तो इफ I2 इज ग्रेटर, जब I2 ग्रेटर हुआ तो जो डायरेक्शन है ना, नेट करंट का डायरेक्शन है ना, इट इज गिवन विथ रेस्पेक्ट टू I2, इट इज गिवन विथ रेस्पेक्ट टू I2। देखिए अगेन सिमिलरली व्हेन टू आइडियल करंट सोर्सेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, वी कैन रिप्लेस बाय सिंगल करंट सोर्स I1 इक्वल I2। देखिए इधर भी व्हेन द एनी, देखिए मान लो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेस्पॉन्स इन द लोड, आपको लोड करंट चाहिए नहीं तो लोड वोल्टेज चाहिए। टू फाइंड आउट रेस्पॉन्स लोड होना बोल तो द रेसिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द करंट सोर्स, इन सीरीज टू करंट सोर्स, जो रेजिस्टेंस है ना इन सीरीज करंट सोर्स, दैट रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। मगर कभी कभी क्वेश्चन में दे में आज व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स, मगर आपको इफ यू नीड द रेस्पॉन्स करस्पॉन्ड करंट सोर्स वोल्टेज नहीं तो करस्पॉन्डिंग पावर डिसिपेशन एट दैट इंस्टेंट, दिस आर वैल्यू कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। हमेशा एक जनरल स्टेटमेंट देख लो, कभी भी रिडक्शन टेक्निक अप्लाई कर रहा बोलो तो रिडक्शन टेक्निक इज वैलिड ओनली टू फाइंड रेस्पॉन्स करस्पॉन्ड द लोड। देखिए हियर आल्सो सेम थिंग, if I connect the any load resistor here, if I want to get the current in the load resistor, this voltage source can be neglected, but if I want to get the current across this, if I want to get the voltage across current source, देखिए this V cannot be neglected। That's why the reduction techniques what we are indicating, all these are valid only to find response correspond to the load, अगेन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगेन वी कैन नोटिस दिस टेबल सिंबल्स। देखिए प्रैक्टिकल सिस्टम में मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दे कैन इंडिकेट एज वन डिपेंडेंट सोर्स। इधर भी डिपेंडेंट सोर्स प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोल तो अंदर क्या दिखा रहे इधर ध्यान से देख चेक कर लो, प्लस माइनस है नहीं तो एरो मार्क है, प्लस माइनस है तो इट इज इंडिकेट द वोल्टेज सोर्स। देखिए इधर एरो मार्क है तो इट इंडिकेट द करंट सोर्स। देखिए इधर एग्जांपल में इसका मैग्नीट्यूड है ना, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द करंट। इफ डिपेंड्स अपॉन द करंट क्या बोल सकते हैं इधर, करंट कंट्रोल नो इट इज द वोल्टेज सोर्स, दिस वन इट इज द करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। देखिए इधर भी इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज, व्हाट यू कॉल इज ए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। देखिए इधर एरो मार्क दिखा रहे बोल तो करंट सोर्स किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, करंट के ऊपर, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मेनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द विच वन इज गिवन, पोलैरिटी गिवन और एरो मार्क गिवन, पर ध्यान से चेक कर लो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है भाई, वो भी चेक कर लो। इन द नेक्स्ट टेबल टेक एग्जांपल्स आल्सो। कम टू द ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ है ना, our Ohm's law concept is valid for the linear resistor, linear inductor as well as for linear capacitor. We can apply for linear resistor, linear inductor and linear capacitor. देखिए resistor के लिए we can go for the different formulas. Resistor के लिए we can go for different formulas. We can use the V equal to I into R. We can go for the different formulas. We can go for the different formulas. देखो इधर reciprocal of resistance is the conductance. We may write in terms of conductance also. नहीं तो और एक फॉर्मूला क्या है जी, जो I है ना, I प्लेस में ऐसा भी लिख सकते हैं dq by dt. Now similarly इंडक्टर में देखिए we can write this one as a V equal to L dA by dt. देखो जी L equal to from this one we can write this one as a dA by dt. देखिए इफ यू कम टू रेसिस्टर के लिए ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल V बाई I. आप इधर नेचर देखें तो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोज द करंट, मगर जब इंडक्टर है ना, इंडक्टर ऑलवेज अपोजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होना बोल तो ये दोनों को रिप्लेस किया, रीअरेंज किया तो वी कैन गेट I इक्वल 1 बाय इंटीग्रल ऑफ VDT. इधर भी देखिए कैपेसिटर, अवर ओम्स लॉ कांसेप्ट कैन बी अप्लाइड फॉर द लीनियर कैपेसिटर्स आल्सो. देखो जी फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट इसमें से C इक्वल टू, वी कैन राइट इसमें से dU by dt. देखो जी आप ये तीनों एलिमेंट्स कंपेयर किया तो रेसिस्टर के लिए इट अपोजेज द करंट,
मगर इंडक्टर के लिए इट अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मगर कैपेसिटर के लिए इट अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज. That is the main difference if you come to the behavior point of view for the resistor, inductor and as well as the capacitor. Okay, we use the respective formulas as per the given data, as per given data. Now let us see some basic differences between the electric and the magnetic circuit. Electric and magnetic circuit. देखो जी, इलेक्ट्रिक सर्किट में एवरी टाइम वी फोकस ऑन द करंट, मगर मैग्नेटिक सर्किट में एवरी टाइम वी फोकस ऑन द फ्लक्स. नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट में वी फोकस ऑन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक सर्किट में वी फोकस ऑन मैग्नेटोमोटिव फोर्स. मैग्नेटोमोटिव फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है जी, N/I, यूनिट क्या है इधर, एम्पियर टर्न्स. देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में वी फोकस ऑन रेजिस्टेंस, इन दिस वन हियर वी फोकस ऑन द रेजिस्टेंस. मगर मैग्नेटिक सर्किट में देखिए मीनिंग ऑफ एस इज अ रिलक्टेंस. इधर रेजिस्टेंस का नेचर क्या है जी, इट अपोजेस द करंट. सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस है ना, रिलक्टेंस अपोजेस द फ्लक्स, रिलक्टेंस अपोजेस द फ्लक्स. सिमिलरली जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस वैल्यू इज डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल डायमेंशंस. देखिए रेसिस्टिविटी, लेंथ एंड एज वेल एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सेम कॉन्सेप्ट आप मैग्नेटिक सर्किट देखें तो जो रिलक्टेंस है ना, जो रिलक्टेंस वैल्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज वेल एज दैट परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द मटेरियल. ये भी देखिए इधर इलेक्ट्रिक सर्किट में वी फोकस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मगर मैग्नेटिक सर्किट में वी फोकस ऑन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक सर्किट में वी फोकस ऑन करंट डेंसिटी, बट हियर वी फोकस ऑन द फ्लक्स डेंसिटी. Flux density equal B equal pi by A. Similarly देखिए now we can write this current density field intensity relation. इधर भी flux density and magnetic field intensity relation. Similarly आप problem solve करते समय especially these relations are more useful. देखो जी हमेशा problem solve करते समय whenever you are solving any problem, if you want to find out the current, नहीं तो voltage, नहीं तो equivalent resistance, नहीं तो equivalent inductance, इस सब प्रॉब्लम्स में कॉमन पॉइंट क्या है बोले तो पहले कनेक्शंस आइडेंटिफाई करना है. इफ यू ऑब्जर्व द प्रीवियस पेपर से फॉर मेनी क्वेश्चंस स्पेशली दे फोकस ऑन द सीरीज कनेक्शंस एंड पैरेलल कनेक्शंस. इन सम ऑफ द एग्जांपल्स वी गो फॉर स्टार डेल्टा, नहीं तो वी गो फॉर अदर रिडक्शन टेक्निक्स. मगर मेनी क्वेश्चंस में in the other chapters also mainly we focus on two connections, series connection and parallel connection. देखिए when two elements are connected series, देखिए दो कंडीशन satisfy होना है. एक कंडीशन क्या है बोले तो one joint is connected together. देखिए हर एक एलिमेंट के लिए two joints are present. मान लो this is a starting point and this is a finishing point. here भी देखिए it is a starting point and other one is the finishing point. देखिए स्टार्टिंग एंड द R1 इज कनेक्टेड टू दिस फिनिशिंग एंड द R1 कनेक्टेड टू स्टार्टिंग एंड ऑफ द R2. दैट मींस बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर. कितना जॉइंट्स है जी, एक ही बार कनेक्ट होगा, वन जॉइंट. और एक कंडीशन क्या है बोल तो इन द सीरीज सर्किट द करंट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स आर द सेम. इन द सीरीज सर्किट जो करंट है ना, करंट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स आर द सेम. दो कंडीशन सेटिस्फाई होना है, एक तो वन जॉइंट एंड सेकंड वन इज द करंट ऑफ द ऑल एलिमेंट शुड बी सेम. देखिए सीरीज सर्किट में हमेशा वोल्टेज डिवीजन इज प्रेजेंट. देखिए टोटल वोल्टेज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं V1 प्लस V2 एंड इक्वलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू वी कैन राइट द R1 प्लस R2. सिमिलरली आप इधर पैरेलल सर्किट देखेंगे. नाउ पैरेलल सर्किट देखने के बाद आई विल डू द कंपैरिजन. देखिए पैरेलल के लिए अगेन टू कंडीशन शुड बी सैटिस्फाइड, दो कंडीशन शुड बी सैटिस्फाइड. वन कंडीशन फॉर दिस में देखिए वन जॉइंट इज कनेक्टेड टुगेदर, सेकंड जॉइंट इज कनेक्टेड टुगेदर. देखो जी एक बार इधर कनेक्टेड है, एक बार इधर कनेक्टेड है. कितना जॉइंट्स है इधर, दो जॉइंट्स. पैरेलल के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है बोल तो टू जॉइंट्स शुड बी प्रेजेंट. और एक कंडीशन क्या है बोल तो वोल्टेज. देखिए जितना वोल्टेज इधर है एग्जैक्टली वोल्टेज ऑफ दिस वन इज सेम. मान लो वोल्टेज ऑफ दिस वन इज V1, वोल्टेज ऑफ दिस वन V2. देखिए एग्जाम्पल में V1 V2 शुड बी एग्जैक्टली इक्वल, V1 शुड बी एग्जैक्टली इक्वल. वोल्टेज सेम होना है और क्या चाहिए, टू जॉइंट्स शुड बी रिक्वायर्ड, टू जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड. अब क्या करेंगे, लेट अस कंपेयर द आवर सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सीरीज मैग्नेटिक सर्किट. देखो जी सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडीशन क्या है, करंट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स आर सेम. इधर क्या है बोल तो फ्लक्स ऑफ द ऑल मैग्नेटिक सर्किट्स आर द सेम.
देखो जी दिस इज वन मैग्नेटिक सर्क्यूट. यार S1 का मीनिंग क्या है बोल तो रिलक्टेंस, रिलक्टेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक सर्क्यूट, दिस रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्क्यूट. देखिए रिलक्टेंस ऑफ द सेकंड मैग्नेटिक सर्क्यूट, रिलक्टेंस ऑफ द थर्ड मैग्नेटिक सर्क्यूट. इधर क्या बोल रहे हैं आप, R1 R2 बोल रहे हैं, इधर क्या लिख रहे हैं, इधर S1 S2 S3. देखिए R इक्वल इक्वल कैसे लिख रहे हैं, R1 प्लस R2, सेम लॉजिक इधर लगा सकते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3. देखिए इलेक्ट्रिक सर्क्यूट में वोल्टेज डिवीजन प्रेजेंट, मगर मैग्नेटिक सर्क्यूट में MMF डिवीजन इज प्रेजेंट. नाउ हियर द फ्लक्स ऑफ द ऑल एलिमेंट्स आर द सेम. नाउ सिमिलरली पैरेलल सर्क्यूट, पैरेलल सर्क्यूट में देखिए इधर पैरेलल सर्क्यूट में हियर करस्पॉन्डिंग एग्जांपल करंट डिवीजन इज द प्रेजेंट. जो टोटल करंट है ना डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन I1 एंड I2, मगर इधर क्या होता है जी, फ्लक्स pi1 इज कमिंग. देखो जी ये pi1 है ना, pi1 डिस्ट्रीब्यूट एज ए सम फ्लक्स गोइंग इन दिस पाथ and some flux going in this path. pi1 distribute as a pi2 and the pi3. देखिए the total pi1 flux equal to we are writing as a pi2 plus pi3. and reluctance के लिए देखिए इधर जो concept लगा रहे हैं resistor के लिए exactly same concept valid for the reluctance. ये भी देखिए now voltage are same, इधर क्या होता है, इधर MMF should be same. problem solve करते समय especially for electrical students, whenever you are solving some of the questions of your electrical machines also, this concepts will be useful. This series magnetic circuit and parallel magnetic circuit concepts will be useful. Okay, chaliye let us see some more points here. And in some of the questions we may need the inductance value. देखो जी inductance find out करने के लिए one of the basic formula is the n pi by I. By knowing the number of turns and flux we can find out the inductance value. On other hand देखो जी इधर inductance find out करने के लिए we can use one more formula. देखो जी from this formula होना बोल तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, we can write this as a जो टर्म है ना, टर्म शिफ्टेड टू द डिनोमिनेटर. अब यार थोड़ा ध्यान से देखिए तो देखो जी जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना, दिस डिनोमिनेटर पार्ट इज इंडिकेट द रिलक्टेंस. दिस इंडक्टेंस इक्वल टू होना बोल तो वी कैन आल्सो राइट दिस n स्क्वायर बाय s. आपको रिलक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स पता है तो भी इंडक्टेंस निकाल सकते हैं. एंड नाउ जो इफ यू आर इंडिकेटिंग L का मीनिंग क्या है बोल तो सेल्फ इंडक्टेंस. L मीनिंग इज अ सेल्फ इंडक्टेंस. इधर म्यूचुअल भी बोल सकते हैं, म्यूचुअल भी कंक्लूड कर सकते हैं. इधर देखिए सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या कंक्लूड करें, इधर n स्क्वायर n इंटू n, मगर म्यूचुअल में इट में हैव द टू मोर देन वन इंडक्टर. मान लो टू इंडक्टर्स आर देयर. देखिए सपोज इफ यू टेक द फिगर लाइक दिस, now reluctance is the s, number of turns is n1, number of turns is the n2. देखो जी फॉर दिस वन इफ दे नीड द म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू वी कैन नीड द n1 n2 by s. सेल्फ बोल तो कैसे लिख सकते हैं, इधर n into n, इधर म्यूचुअल के लिए वी नीड द n1 into n2. वी इंक्लूड द नंबर ऑफ टर्न्स द प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी. ओके, एंड वन मोर पॉइंट, इंडक्टर के लिए एनर्जी निकालने के लिए व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला फॉर दिस, वी कैन नीड हाफ Li square. सिमिलरली कैपेसिटर के लिए एनर्जी निकालने के लिए वी यूज द फॉर्मूला ऑफ द हाफ CV square. Now corresponding capacitor also, what is the basic formula in terms of charge, we can write it as Q by V. Observe one more point. देखो जी क्वेश्चंस में सिंपली देखिए तो VI characteristics. With help of the VI characteristics, they may ask you to conclude whether element is a linear or non-linear, नहीं तो unidirectional or the bidirectional, नहीं तो active or the passive. देखिए ये तीनों स्टेटमेंट कंक्लूड करने के लिए let us see these two examples. Come to the first example. देखो जी फर्स्ट एग्जाम्पल में
फर्स्ट लेट अस सी द इट इज लीनियर और द नॉन लीनियर। पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे लीनियर नॉन लीनियर। देखो जी एग्जांपल में कैसा हो जाए, लीनियर कांस्टेंट। आप पूरा कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक देखे तो पूरा कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक देखे तो व्हाट इज शेप ऑफ दिस वन इज अ नॉन लीनियर। कम टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, वी हैव टू कंक्लूड वेर इट इज यूनिडायरेक्शनल और द बाईडायरेक्शनल। आप थोड़ा ध्यान से देखें तो दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट आइडेंटिकल। इन दिस वन लीनियर कांस्टेंट, मगर इधर क्या है जी ओनली लीनियर, ओनली लीनियर। कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल बोल तो वी कैन नेम दिस वन एज ए यूनिडायरेक्शनल, वी कैन नेम एज ए यूनिडायरेक्शनल। कम टू वेर इट इज एक्टिव और द पैसिव। यार एक्टिव पैसिव कंक्लूड करने के लिए सिंपली फोकस ऑन दिस पॉइंट। देखिए इन दिस क्वाड्रेंट इफ यू ऑब्जर्व द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, वोल्टेज एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द साइन ऑफ द वोल्टेज, व्हाट इज द साइन ऑफ द वोल्टेज फॉर दिस वन इज अ पॉजिटिव, साइन ऑफ द वोल्टेज इज अ पॉजिटिव। देखो जी इधर भी देखिए करंट, करंट का साइन क्या है इधर पॉजिटिव। ये एग्जांपल में क्या हो रहा है जी, वोल्टेज पॉजिटिव करंट पॉजिटिव। जब वोल्टेज पॉजिटिव करंट पॉजिटिव हो तो V by a ratio also positive. That means if V by a ratio is a positive in the both quadrants, देखिए in this first quadrant we got the positive। देखिए इधर भी चेक करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए इधर क्या होता है जी, देखिए what is the sign of the voltage is a negative, sign of the current is a negative। देखिए वोल्टेज नेगेटिव करंट नेगेटिव, मगर रेशियो इधर भी क्या होता है पॉजिटिव। That's why if V by a ratio positive in the both quadrants, simply the element is a passive. Simply the element is a passive. Element is a passive. Come to second example. देखिए second example में first क्या है बोल तो by looking the shape many students get the confusion. ये confusion avoid करने के लिए पहले क्या करेंगे, whether it is unidirectional or bidirectional चेक करेंगे। देखिए हमेशा bidirectional satisfy करने के लिए, to satisfy bidirectional nature, necessary condition the characteristics should be identical in the opposite quadrants. Characteristics should be identical in the opposite quadrants. But if you observe carefully, these are the identical adjacent quadrants. Suppose let us assume the same characteristics we are getting in this quadrant also, then we can say exactly identical. But these are the identical adjacent quadrants. Adjacent quadrant means bidirectional nature is not satisfying. That means it is a unidirectional. It is a unidirectional. Now again come to active and passive. आप इधर देखें तो in this part we get a V by ratio positive, मगर इधर देखें तो देखो जी वोल्टेज पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, मगर करंट क्या इधर नेगेटिव। क्या है इधर V by ratio is a negative. If V by ratio negative in one of the quadrant, नहीं तो in the both quadrant, एक ही quadrant में, नहीं तो दोनों quadrant में नेगेटिव है तो then the element is a active. Then the element is an active. And come to whether it is linear or non-linear चेक करेंगे। आप कोई तो भी एलिमेंट को लीनियर कंक्लूड कर रहा बोले तो बाय डिफॉल्ट इट विल ओबे द बाइडायरेक्शनल प्रॉपर्टी। कोई तो भी एलिमेंट को आप इफ यू आर कंक्लूडिंग दैट एलिमेंट इज लीनियर बाय डिफॉल्ट इट विल ओबे द बाइडायरेक्शनल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट शुड satisfy बाइडायरेक्शनल नेचर। देखो जी इधर इट इज अ यूनिडायरेक्शनल, इट इज यूनिडायरेक्शनल। That means we can conclude as a it is not linear. Not linear बोलते we can conclude as a non-linear. If it is not satisfying bidirectional means it is not linear. That means indirectly we can say it is a non-linear. Just read this question. I'll explain. पहले क्वेश्चन पढ़ो जी एक बार, क्वेश्चन पढ़ो, I'll explain. सर PYQ करके जाएंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्सेप्ट्स। आपको बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत क्लैरिटी है, पुराना पेपर्स भी कर लिया, एंड एटलीस्ट फ्यू टेस्ट सीरीज डेफिनेटली यू गेट द गुड मार्क्स। देखिए इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट्स, मगर जितना हो सकता है एटलीस्ट अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने से फायदा क्या है बोल तो आपको पता चलता है आपका ब्रेन कैसा रिएक्ट कर रहे हैं एग्जाम लिखते समय। दैट इज द
दैट इज द प्राइमरी थिंग. ट्राई टू अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज. ओके, हाँ पढ़ो जी, क्वेश्चन पढ़ो, विल एक्सप्लेन. होना बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो. चलिए, क्वेश्चन में फिगर भी नहीं दिया इधर, क्वेश्चन में फिगर भी नहीं दिया. देखो जी, एज पर गिवन डेटा चेक कर लो जी. हाँ, ट्राई टू ड्रा द फिगर. आप फिगर ड्रा करने की कोशिश करो, आप ट्राई करो, आप ट्राई करो, फिगर ड्रा करो जी. आई विल शो द फिगर. पहले फिगर ड्रा करो. हाँ यस विवेक कुमार, वेरी गुड. देखिए, स्पेशली इन दिस एग्जाम वेन आवर यू आर अटेम्प्ट द क्वेश्चन देखते ही आपको थोड़ा पता चलता है वेर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और मोर लॉजिकल और ईजी और मॉडरेट. क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय दोनों ध्यान से चेक कर लो. इफ इट इज़ ईजी क्वेश्चन, नहीं तो मॉडरेट क्वेश्चन है तो तुरंत अटेम्प्ट करो. नहीं तो कुछ क्वेश्चंस में होता क्या होता बोलते, लेट अस टेक एग्जांपल इन आवर सब्जेक्ट ओनली. स्पेशली इफ यू ऑब्जर्व द प्रीवियस गेट क्वेश्चंस, to solve some of the questions we need the concepts of both network analysis as well as control system. दोनों सब्जेक्ट का बेसिक चाहिए. नहीं तो कुछ क्वेश्चंस देखे तो पुराना पेपर्स का, you need the concepts of both network analysis and signal system also. कुछ ज़्यादा ट्रिकी है तो क्या करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में डोंट अटेम्प्ट दैट वन. क्यों बोलते, देखिए स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन को पकड़ लिया तो क्या होता है, ड्यू टू एनी रीजन इफ यू डू एनी कैलकुलेशन मिस्टेक इमीडिएटली यू मे गेट सम नेगेटिव रिएक्शंस. दैट्स वाई इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद देन ओनली गो फॉर दैट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, नहीं तो वेरी लेंदी क्वेश्चंस. देखिए इन दिस एग्जांपल देखो जी, एज पर गिवन डेटा चेक करो जी. कैन आई डेवलप फिगर लाइक दिस? क्वेश्चन पढ़ लो. एज पर गिवन डेटा कैन आई डेवलप फिगर लाइक दिस? देखिए ये फिगर सॉल्व करने के लिए, देखो जी इधर ये फिगर सॉल्व करने के लिए वी कैन गो फॉर द टू अप्रोचेस. देखो जी, ये फिगर सॉल्व करने के लिए वी कैन गो फॉर टू अप्रोचेस. एक अप्रोच क्या है जी, क्या निकाल, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपको, एनर्जी. व्हाट द एनर्जी, बेसिक फॉर्मूला इज द energy equal to this integral of pdt. Now by doing integration interval क्या है इधर 0 to 24 seconds. क्या करना है इधर, इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हर एक इंटरवल के लिए इक्वेशन डेवलप करना है. इक्वेशन डेवलप करने के बाद इफ यू डू द इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड आउट एनर्जी. दैट इज वन अप्रोच. मगर इधर विदाउट डूइंग इंटीग्रेशन वन इजी अप्रोच इज सिंपली फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस वन. Simply find out the area of this one. देखो जी इन दिस एग्जांपल एरिया बोल तो वाई एक्सिस के ऊपर क्या है इधर पावर, इधर क्या है जी एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है टाइम. पावर इनटू टाइम इट गिव्स द एनर्जी. दैट्स व्हाई हियर बाय फाइंडिंग एरिया वी कैन इजीली कंक्लूड द आंसर. देखिए इधर 5 सेकंड्स के लिए पावर कितना है जी 4. व्हाट द शेप ऑफ दिस वन इज अ रेक्टेंगुलर शेप. प्लस देखिए 5 to 7 सेकेंड्स के लिए नो पावर इज प्रेजेंट 0. कम टू नेक्स्ट वन देखो जी 7 to 17, ये दोनों के बीच में इंटरवल कितना है इधर 10 सेकेंड्स. देखिए हाइट कितना है जी 8. व्हाट द शेप ऑफ दिस वन, आप इधर शेप देखे तो देखो जी कैन आई गिव द नेम लाइक दिस ABC का शेप कैसा है जी ट्रायंगल. कैन यू व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वन इज लेंथ ऑफ दिस वन इज 10. What the height of this one is 8. देखिए come to the next one. Next come to this part here. In this part कितना है इधर no 24 बोल तो again what is the shape of this one. देखो जी इधर भी give the any name here. इधर कितना है जी 7 into what the height is 8. हाँ चेक करो सिंप्लीफाई करके एनर्जी निकाल सकते ना. give the answers. मेनी स्टूडेंट गिव द आंसर्स आई अप्रिशिएट. मगर एक गलती है जी, जो आंसर्स दे रहा ना आप, यू आर गिविंग यूनिट एज ए वाट्स.
क्या निकालना है इधर, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या है जी, जॉल्स, यूनिट्स के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना है। इधर तो ऑप्शंस नहीं दिया, देखिए क्या निकल रहे इधर, एनर्जी निकल रहे, बट मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर एज ए व्हाट, एनर्जी। यूनिट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान से चेक कर लो जी। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या होता है बोलते, देखिए कभी कभी क्वेश्चंस में द टाइम में गिव इन द सेकंड्स, नहीं तो मिली सेकंड्स, नहीं तो माइक्रो सेकंड्स, नहीं तो नैनो सेकंड्स, थोड़ा यूनिट्स के ऊपर बहुत ध्यान रखो जी। देखिए इफ़ यू ऑब्जर्व योर सीनियर्स एक्सपीरियंस ऑल्सो, many of them do simple calculation mistakes, क्यों बोलते, because of hurry, because of tension and all these things. That's why especially numerical problem solve करते समय पहले given units के ऊपर अच्छा फोकस करो जी। यूनिट्स क्या है इधर, सेकेंड्स है, नहीं तो माइक्रो सेकेंड्स है, मिली सेकेंड्स है, क्या है इधर। नो सेम थिंग फॉर दिस ऑल्सो, पावर, हाउ द पावर वॉज गिवन इन द मिली वाट्स और इन द मेगा वाट्स और इन द वाट्स, हाउ इट वॉज गिवन, फोकस द यूनिट्स केयरफुली। ओके, चलिए, many student get reply, very good, appreciate, very good, Jyoti, Rajat, very good, Badan, Bhaskar, very good, but oh, many student get reply, very good, I appreciate. Okay, let us see one more question. हाँ, एक क्वेश्चन पढ़ो जी, पहले क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट लेके आप जस्ट अप्लाई योर आइडियाज, इमीडिएटली आई विल एक्सप्लेन, जस्ट 10 seconds आप सोचिए, आई विल एक्सप्लेन। ओके डियर स्टूडेंट्स, चेक करेंगे, लेट अस सिंप्लीफाई दिस वन, क्या करेंगे, लेट अस सिंप्लीफाई दिस वन। देखो जी, गिवन फिगर हो, पहले फर्स्ट स्टेप में ऐसे दिखा सकते ना, देखिए इधर दिस 3 and 12 सीरीज कितना है जी, 15। देखिए इधर 13 and 30 and 15 both are in series, what is the equivalent resistance is the 45, and 24 and 6 both are in series, what is the equivalent resistance is the 30, what about this part is the 10. For understanding easy way, देखिए इधर आई एम गिविंग द नेम्स लाइक दिस, सी डी ई एफ, देखो जी, होना बोल तो सेम फिगर, आई गिव द नेम्स एज सी डी ई एफ, चेक कर लो जी, सेम फिगर होना बोल तो, टू अंडरस्टैंड इजी वे कैन आई ड्रा लाइक दिस, कैन आई ड्रा द फिगर लाइक दिस, इन द प्रीवियस फिगर आई गिव द नेम्स सी डी ई एफ, होना बोल तो चेक कर लो, देखिए इधर क्या चाहिए आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अभी कंक्लूड किया था, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना है, 2 जॉइंट्स। देखिए 1545, देखिए वन जॉइंट इज कनेक्टेड हेयर, नो सेकंड जॉइंट इज कनेक्टेड हेयर, वन जॉइंट कनेक्टेड हेयर, दैट मीन्स 1545 दोनों कैसे इधर पैरेलल, हाउ बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। देखिए 45-30 one joint is connected here, second joint connected here, that means here also 2 joints are there, that means 45-30 both are in the parallel. Can I give statement like this here, this 15, 45 and 30, how all these are connected in the parallel। देखिए इधर क्यों बोलते हो 15-45 in the parallel, 45-30 also in the parallel, that means we can give statement these 3 branches are in the parallel, ऐसे बोल सकते ना, ये तीनों ब्रांचेस है ना, दिस एंटायर सेट इज कनेक्टेड सीरीज टू 5 ohms, ये भी देखिए दिस एंटायर सेट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू 10 ohms,
देखिए आर इक्वलेंट इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं ना। नो आप इधर से स्टार्ट किए तो बट रेजिस्टेंस वैल्यू हाउ मच है 5, रेजिस्टेंस वैल्यू इज 5। आप इधर देखें तो जो 15 कनेक्टेड पैरेलल टू 45 कनेक्टेड पैरेलल टू 30। ओके, नो आई एम यूजिंग द सिंबल फॉर पैरेलल के लिए 15 45 पैरेलल 45 30 पैरेलल, ये तीनों पैरेलल के लिए वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 10 ohms। अब बोलिए आई गिव ऑल द हिंट्स, पूरा सिंप्लीफाई करके आर इक्वल निकाल सकते हैं ना। देखिए दिस एंटायर पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्टेड सीरीज टू 5 ohms, कनेक्टेड सीरीज टू 10 ohms, पूरा सिंप्लीफाई करो। आई गिव ऑल द हिंट्स, आई गिव ऑल द हिंट्स। बोलिए जी, अर्षा गॉट द 30 ohms, मेघा अग्रवाल गॉट द 23.18। चेक कर लो जी एक बार, और एक बार चेक कर लो। ओ रितु गंगाधर गॉट 240। रीना इतना आंसर क्यों आ रहा है जी, इतना आंसर क्यों आ रहे? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, होना बोलते पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सेपरेटली आई एम राइटिंग। देखो जी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई नेम इट एज आर डैश। देखो सर आर डैश निकालने के लिए होना बोलते ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई कितना है जी 15, ये कितना है जी 45, ये कितना है जी 30, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 15 45 30 सब पैरेलल में ऐसे लिख सकते हैं ना। 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या लिख सकते हैं इधर आर इक्वलेंट इक्वल टू फाइनली क्या चाहिए आपको, कैसे लिख सकते हैं इधर 5 प्लस आर डैश प्लस 10। चेक करो, आई गिव हिंट्स आल्सो। क्यों बोल तो मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग इनकरेक्ट आंसर, उसलिए I wrote remaining steps also. Now many students are getting correct answers. Very good, very good. Jyoti, Tina and Shali, very good. Arsan, Arsha, Shopal Singh, concept clear, concept clear. आपका नाम लखो जी, concept clear क्या है? आपका नाम concept clear है क्या? दिनेश कुमार, very good, very good, very good. गोमती प्रसाद, very good, very good. Many students gave reply, very good. I appreciate. Very good, very good. 23.18, very good. 23.18. Okay, that's why here problem solve करते समय main important point क्या है बोल तो identify the connections. That is very important. Okay, चलिए let us see one more example. रीड दिस क्वेश्चन, एक स्क्रीनशॉट ले लो जी, हो ना बोले तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो पहले। देखिए इधर भी क्या चाहिए आपको, वी नीड द आई वैल्यू टू फाइंड आउट आई वैल्यू, टू फाइंड आउट द आई वैल्यू इन दिस एग्जांपल। लेट अस फोकस ऑन कनेक्शंस, पहले कनेक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे। लेट अस फोकस ऑन कनेक्शंस। देखो जी इन दिस एग्जांपल सपोज इफ आई गिव पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज ए, पोटेंशियल एट दिस वन बोथ आर एट सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल एट दिस वन बोथ आर एट सेम पोटेंशियल। ये भी देखिए पोटेंशियल एट दिस वन बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल, क्यों बोलते हो नो एलिमेंट इज कनेक्टेड। ये भी देखिए पोटेंशियल एट दिस वन बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल एट दिस वन सेम पोटेंशियल, क्यों बोलते हो नो एलिमेंट इज कनेक्टेड। इधर देखिए कॉल दिस पॉइंट इज बी, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बोथ आर द सेम, अब कनेक्शन चेक करेंगे।
देखिए 6 and 7 वन जॉइंट इज कनेक्टेड, सेकंड जॉइंट कनेक्टेड, कितना जॉइंट से? 2 जॉइंट्स, कौन सा कनेक्शन? पैरेलल। इधर भी देखिए करंट सोर्स 12 ohms, वन जॉइंट कनेक्टेड, सेकंड जॉइंट कनेक्टेड, 2 जॉइंट्स, इधर भी पैरेलल। 12 and 4 देखो जी वन जॉइंट कनेक्टेड, सेकंड जॉइंट कनेक्टेड, कितना जॉइंट से? 2 जॉइंट्स, पैरेलल। ये भी देखिए 4 and 8 वन जॉइंट कनेक्टेड, सेकंड जॉइंट कनेक्टेड, पैरेलल। कंक्लूजन क्या है? ऑल एलिमेंट्स आर इन द पैरेलल। कंक्लूजन क्या है? ऑल एलिमेंट्स आर इन पैरेलल। देन इफ यू redraw this figure, if you redraw this figure, कितना है इधर? 6 ohms, 7 amperes, now come to the direction। अब डायरेक्शन चेक करेंगे। देखो जी करस्पॉन्ड दिस एग्जांपल हियर, दिस करंट इज गोइंग फ्रॉम A to B। इफ आई गिव लोअर पॉइंट इज A, अपर वन इज B। देखो जी करंट कैसे चल रहा है? A to B, डायरेक्शन द अपवर्ड्स। ये भी देखिए 8 एम्पियर्स का भी करंट कैसे चल रहा है? इट इज गोइंग फ्रॉम A to B, इट इज आल्सो गोइंग फ्रॉम A to B। देखिए जो I है ना, I इज आल्सो गोइंग फ्रॉम द करंट कैसे चल रहा है? इट इज गोइंग फ्रॉम द B to A। corresponds example, carefully observe here, it is going from the B to A। that means sir for this particular example आप इधर थोड़ा ध्यान से देखें तो it is going from B to A। now can I indicate like this sir? now let us focus on directions, let us focus on the directions sir। now for this particular example आप थोड़ा ध्यान से देखें तो how this 15 and 8 both are in the parallel, 15 and 8 both are in the parallel and both are in the same direction। current कैसे जा रहा है जी? A to B, it is also going from A to B। that means if both currents are in same direction बोले तो what will happen here? what is the total current? how much here? 15 amperes, 15 amperes। and come to 6 and the 12, 6 and 12 दोनों कैसे इधर? parallel। 6 and 12 both are in the parallel। फॉर्मूला क्या है जी? R1 R2 by R1 plus R2। if you use that formula, what are the equivalent resistance will be? 4 ohms। here भी देखिए what is the resistance of this one is 4 ohms। देखिए come to the I, देखिए in this example 15 amperes coming like this sir, 15 amperes current is coming like this। now both resistors are equal, the current will be equally distributed, कितना है इधर? 7.5 is also 7.5, current is equally distributed। very good, many students give the reply। Ritu, Gomit, Tina, Vishal, Mega Agarwal, Arsh, Sunny Kumar, Puru, many students give reply। very good, because so many students are giving reply, I am able to read only few names। Lakshman, very good। Sandeep Kumar, Sunil Kumar, KCL, Sunil Kumar KCL only this one। देखिए सुनील कुमार है 15 है ना, डिस्ट्रीब्यूट द 2 ब्रांचेस, करंट डिवीजन हो रहा है, करंट डिवीजन मतलब कैसे लिए है सुनील कुमार। विशाल ककर 9 ohms क्या है जी? 9 ohms क्या है इधर? 9 ohms बोल रहे हैं आप? ओके हाँ यस गौतम। देखिए इन द लास्ट डेज डोंट रीड एनी न्यू टॉपिक्स। अभी तक क्लास नोट्स में जो आप पढ़े ना, ट्राई टू डू मोर नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन। उसमें भी क्या करना है बोलते हो, रिवीजन करते समय आप नोटिस करे होंगे, देखिए डिफरेंट स्टूडेंट हैव द डिफरेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स। सम स्टूडेंट में फाइंड डिफिकल्टी इन द थ्योरम, सम में भी 2 port नेटवर्क, सम में भी बेसिक्स। जो पॉइंट्स ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहे हैं ना, ये लास्ट 10 days में क्या करो, वो पॉइंट्स को ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करो, देन विल गेट मोर कॉन्फिडेंस। ओके अब कुछ भी नया टॉपिक्स मत पढ़ो जी, जो मैं डिस्कस करना सब एवरीथिंग ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास इटसेल्फ, जस्ट आई एम रिवाइजिंग द ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ओके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, आई एम रिवाइजिंग दैट वन। ओके एंड वन मोर थिंग, दीज आर द वन ऑफ द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। देखिए करस्पॉन्ड क्यूब, ट्राई टू रिमेंबर द 3 आंसर्स। नाउ देखिए इन दिस वन मीनिंग क्या है बोलते हो, ईच ब्रांच है रेजिस्टेंस इज R ohms, हैव इंडिकेटेड द R वैल्यू हियर, ईच ब्रांच है रेजिस्टेंस इज R ohms, करस्पॉन्ड क्यूब, ट्राई टू रिमेंबर 3 आंसर्स।
Try to remember respect to AB points corresponding equivalent resistance. AB points and corresponding equivalent resistances. इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी. क्यों मतलब these are the standard questions with respect to competitive exams. आशीष you got the 12.2 कैसा आ गया जी? Okay. Tomorrow our G2Q video will be also come. All of you go through your G2Q questions also. Okay. चलिए, come to next one. Now, next let us see some basic points about the KCL. If you come to KCL here, simply we can use statement as a algebraic sum of the currents meeting at a point equal to 0. Meeting at a point 0. जो common point है ना, this common point we can name this as a node. जो common point है ना, this common point we can name this as a node. Again, इधर problem solve करते समय there are two types of nodes are there. देखिए, if you observe this example, now node means there are two nodes are there. One is a simple node, other one is a principal node. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बोलते देखिए, when two elements are connected together then the common point, देखिए जब दो elements connected together है तो this common point is known as a simple node. When the two elements are connected together then the common point is known as a simple node. When two elements are connected together then the common point is known as a simple node. When two elements are connected together then the common point is known as a simple node. When more than two elements are connected together then the common point is known as a principal node. Is a principal node 1. It is a principal node 2. Now it is a simple node 1, simple node 2, simple node 3. We can write the KCL at the simple node as well as the principal node. But generally in the many questions, we mainly focus on the principal node only. देखिए मान लो ये फिगर में मान लो सोर्स करंट इज कमिंग लाइक दिस. जो सोर्स करंट है ना डिस्ट्रीब्यूटेड विद द ब्रांच 1 ब्रांच 2. इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स. इधर भी कैलकुलेशन करते समय थोड़ा टाइम सेव करने के लिए वी यूज़ अ करंट डिवीजन टेक्निक. देखो जी करंट डिवीजन टेक्निक के अंतमटे वी ट्राई टू राइट द ब्रांच करंट इंटू द टोटल करंट. देखिए इन दिस एग्जांपल I1 इक्वल टू टोटल करंट कितना इधर I ऑपोजिट रेजिस्टर R1 के लिए ऑपोजिट रेजिस्टर क्या इधर R2 बाय टोटल रेजिस्टेंस. Now I2 इक्वल टोटल करंट ऑपोजिट रेजिस्टर इसके लिए ऑपोजिट क्या है इधर R1 बाय टोटल रेजिस्टेंस. हमेशा एक जनरल स्टेटमेंट याद रख लो, जो करंट डिवीजन टेक्निक फार्मूलास लगा रहे ना रेजिस्टर के लिए सेम फार्मूलास आर वैलिड फॉर द इंडक्टर, इंपोर्टेंस एंड रिएक्टेंसेस. हमेशा रेजिस्टर के लिए, इंडक्टर्स के लिए, इंपोर्टेंस के लिए, रिएक्टेंस के लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस ने तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए आल्सो वी यूज द सेम प्रोसीजर. मगर कैपेसिटर के लिए फार्मूला अलग है. क्यों बोल देखिए जब रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिख सकते हैं? R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. मगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो क्या बोल सकते हैं इधर C इक्विवेलेंट इक्वल टू वी कैन रेड्यूस इट C1 प्लस C2. That's why the procedure for the resistors and capacitors is the opposite. कैपेसिटर कैसे लिख सकते हैं इधर ब्रांच करंट I1 करंट इक्वल टोटल करंट टू सिमिलर कैपेसिटेंस बाय टोटल कैपेसिटेंस. देखिए सिमिलर कैपेसिटेंस बाय टोटल कैपेसिटेंस. एंड नेटवर्क में हैव द मोर देन टू ब्रांचेस आल्सो. देखिए दो ब्रांचेस है तो आसानी से बोल सकते हैं टोटल करंट टू ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस. मगर इट में हैव द मोर ब्रांचेस आल्सो. जब मोर ब्रांचेस है तो गो फॉर दिस फॉर्मूला. देखिए टोटल करंट टू रेसिप्रोकल ऑफ द सिमिलर रेजिस्टेंस. देखिए रेसिप्रोकल ऑफ द सिमिलर रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज. देखो इधर भी सेम जो फॉर्मूला इधर अप्लाई करें ना सेम फॉर्मूला इज वैलिड हियर आल्सो. I1 इक्वल टू टोटल करंट टू रेसिप्रोकल ऑफ सिमिलर रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज. पूरा सिंप्लीफाई करें तो यू गेट दिस इक्वेशन ओनली. ओके. एंड some of the questions what they do here they may give data in terms of conductance. देखिए the reciprocal of resistance क्या बोल सकते हैं conductance G1 plus G2 plus G3. they may give data in terms of the conductance also. Okay, चलिए next let us go to the KVL. Again if you come to the KVL
देखिए इफ यू कम टू KVL here, the KVL works from the principle of law of conservation of energy. It works from the principle of law of conservation of energy. देखिए KCL में we go for the current division technique, मगर KVL में we go for the voltage division technique. इधर KVL स्टेटमेंट क्या है, इधर algebraic sum of the voltages in a closed loop equal to 0, in a closed loop equal to 0. इधर वोल्टेज डिवीजन टेक्निक इफ यू अप्लाई, देखो जी ऐसा बोल सकते हो V1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है जी Vs इंटू सिमिलर रेसिस्टेंस कितना है इधर R1 बाई टोटल रेजिस्टेंस. इधर भी सेम लॉजिक, जो प्रोसीजर रेजिस्टर के लिए अप्लाई करें ना, सेम थिंग वैलिड फॉर द इंडक्टर इंपोर्टेंस एंड द रिएक्टेंस, मगर कैपेसिटर के लिए डिफरेंट. कैपेसिटर कैसे लिखना है, इधर V1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज इनटू अपोजिट कैपेसिटेंस. देखो जी C1 के लिए अपोजिट क्या है, इधर C2 बाई टोटल कैपेसिटेंस. एक क्वेश्चन पढ़ो जी, आई विल एक्सप्लेन. पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल एक्सप्लेन. जस्ट आप सोचिए, आई विल एक्सप्लेन. Rajaram, I will try to revise the maximum all the important concepts in the given time. I will try to revise the mainly important concepts. देखिए नाउ लेट अस चेक इट आउट. देखिए हमेशा अपना नेटवर्क एनालिसिस में एक फ्लेक्सिबिलिटी है. ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है बोले तो, सेम प्रॉब्लम होना बोले तो वी कैन गो फॉर KVL, नहीं तो KCL, नहीं तो नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, नहीं तो रिडक्शन टेक्निक, नहीं तो थीरम्स. वी कैन अप्लाई so many techniques, मगर फाइनली इन द ऑल द मेथड्स आंसर्स आर द सेम. दैट्स वाई कोई तो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय पहले चेक कर लो कौन सा मेथड से आंसर आसानी से आ सकते. ट्राई टू गो फॉर दैट प्रोसीजर. ओके, जनरली यू गेट डाउट फिर आइडिया कैसे आते, दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिविजन. दैट्स वाई इन द रेगुलर क्लास ऑल्सो एवरी टाइम आई गिव वन जनरल स्टेटमेंट. रिविजन करते समय हर एक क्वेश्चन के लिए ट्राई टू अप्लाई योर ओन आइडियाज़. उससे क्या होता है, यू कैन डेवलप योर ओन थॉट प्रोसेस. एक बार आपका ओन थिंकिंग डेवलप हो गया ना, प्रॉब्लम देखते हैं आपको पता चलता है ये मेथड लगाने से वी कैन इजीली कंक्लूड द आंसर. दैट्स वाई कैसे सॉल्व करेंगे, वी कैन गो फॉर सो मेनी मेथड्स. लेट अस सी वन ऑफ द अप्रोच फॉर दिस वन. सिंपली आई एम गोइंग फॉर द बोथ KCL एज वेल KVL हियर. देखो जी ए पॉइंट के ऊपर आप KCL अप्लाई किया तो, देखो जी ध्यान से देखिए, Ix इज द आउटगोइंग करंट. जो 2 एम्पियर से ना, इट इज ऑल्सो आउटगोइंग करंट. जो 5 एम्पियर से ना, इट इज ऑल्सो आउटगोइंग करंट. नो ऑल दीज आर द आउटगोइंग करंट्स. देन व्हाट अबाउट दिस वन, वी कैन गिव नेम फॉर दिस वन एज इनकमिंग करंट. सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इक्वल सम ऑफ इनकमिंग करंट्स. देखिए आउटगोइंग करंट टोटल कितना है, इधर 7, इधर कितना है जी Ix. इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स. नो हमेशा पोलैरिटीज इंडिकेट करने के लिए वेयर एवर द करंट इज एंटरिंग दैट इज पॉजिटिव, अदर वन इज नेगेटिव. ये भी देखिए, वेयर एवर द करंट इज एंटरिंग दैट इज पॉजिटिव, अदर वन इज नेगेटिव. देन इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल देखो जी, फॉर दिस पार्ट ये ब्लू कलर है ना, फॉर दिस ब्लू कलर चेक कर लो जी. कैन राइट द KVL इक्वेशन फॉर दिस वन. ये KVL इक्वेशन लिख सकते हैं ना. If you write the KVL equation for this one, देखिए इधर हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, रेजिस्टेंस कितना है जी 3, रेजिस्टेंस 3, 7 प्लस Ix. देखिए इधर हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल 2 इंटू करंट कितना जा रहा है इधर Ix. इधर देखिए अगेन हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल Ix by 2. कैन आई इक्वेट दिस एंटायर इक्वेशन टू 0? हाँ चेक करो जी, आई गिव ऑल द हिंट्स.
अब बोलिए आंसर्स बोलिए. आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड. आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड. बोलिए आंसर्स. Okay. कौन है नो बबान. बबान got the minus 3.82. Other students. Now Vishal also got the minus 3.81. Roshan also got same answer. Pandey also got same answer. Check करो जी. Many students are saying minus 3.81. check करो. Can I confirm this answer? जो आप बोल रहे हैं ना वही लिख रहा हूँ मैं इधर. check करो. Shall I confirm this answer? check करो. Many students are saying this one. लक्ष्मण, प्रवन, तीना, आशुतोष, अजय, अजय पनवार, पांडे. अजय पनवार का 3.3. ओ अजय जी एक बार चेक कर लो. अजय पनवार, हरी, मनोज कुमार. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ऑल इन वन. ओ नाम अच्छा है जी, आपका नाम अच्छा है. ऑल इन वन नाम. ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. come to the next one. अगेन देखिए अभी तक कौन सा डिस्कस किया. सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन. व्हेन एलिमेंट्स आर कनेक्टेड नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल होना बोल दो. लेट अस सी वन सिंपल एग्जांपल. आपको थोड़ा समझाने के लिए आई टेक वन सिंपल कॉन्सेप्ट. देखिए एग्जाम्पल में आप देखें तो R1 R2 कनेक्शन बोलो जी. कौन सा कनेक्शन बोलिए. R1 R2 दोनों कैसे हैं. इज इट सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन. R1 R2 का कनेक्शन नाम क्या है. इज इट सीरीज और पैरेलल. चलिए चेक करेंगे. देखो जी R1 R2 के लिए ओनली वन जॉइंट इज अ प्रेजेंट. ओनली वन जॉइंट इज अ प्रेजेंट. एक जॉइंट है. तुरंत आपको डाउट आते एक जॉइंट तो सीरीज होना बोल के चेक करेंगे. जो आई करंट है ना, आई करंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ब्रांच 1 ब्रांच 2. देखो जी एक ही जॉइंट्स है मगर करंट डिवीजन प्रेजेंट. करंट डिवीजन बोल दो नॉट इन द सीरीज. अब पैरेलल चेक करेंगे. पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है जी. कितना जॉइंट चाहिए. 2 जॉइंट्स. मगर कितना जॉइंट्स है जी. ओनली वन जॉइंट. दैट मीन्स इट इज नॉट कनेक्टेड इन द सीरीज एज इन द पैरेलल. R1 R2 आर कनेक्टेड नाइदर सीरीज नॉर इन द पैरेलल. ईयर भी चेक करें तो R1 R4 चेक करें तो अगेन हेयर we can say these two are connected neither series nor parallel. When elements are connected neither series nor parallel, for that cases we use application the star delta transformation. By using star delta transformation we can simplify the network. By using star delta transformation we can simplify the network. देखिए इधर भी फिगर डेवलप करते समय एक स्टेटमेंट रख लो. देखिए RA के लिए एग्जैक्टली अपोजिट साइड इंडिकेट द R1. क्यों बोलते हो. इन वन ऑफ द प्रीवियस पेपर्स में आंसर कंक्लूड करने के लिए इसका पोजीशन आल्सो मैटर्स. अब पोजीशन चेंज किया तो इन दैट पर्टिकुलर ईयर क्वेश्चन ऑप्शन भी है. दैट्स वाई इधर थोड़ा सीक्वेंस भी थोड़ा अच्छा ध्यान से याद रख लो जी. जो RA है ना, RA के लिए अपोजिट रजिस्टर R1 दिखा दो. RB के लिए अपोजिट रजिस्टर R2. RC के लिए एग्जैक्टली R3. ट्राई टू गो फॉर दिस सीक्वेंस ओनली. इन सम ऑफ द टेक्स्ट बुक दे मॉडिफाइड दिस वन ऑल्सो, बट गो फॉर दिस स्टैंडर्ड प्रोसीजर. in one of the previous papers already given this one. okay. देखिए इधर प्रोविजर क्या है बोल तो पहले क्या करेंगे. लेट अस ट्रांसफॉर्म डेल्टा टू स्टार.
इधर प्रोसीजर क्या है बोलते तो R1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एडसेंट साइड्स क्या है जी RB RC बाई टोटल रेजिस्टेंस. नो कम टू स्टार टू डेल्टा. इधर स्टार टू डेल्टा बोल तो सम ऑफ द पॉजिटिव प्रोडक्ट्स बाई ऑपोजिट रेजिस्टर. देखो जी RA के लिए ऑपोजिट रेजिस्टर क्या है जी R1. इधर भी एक स्टेटमेंट आगे रख लो. जो प्रोसीजर होना बोलते आप स्क्रीनशॉट ले लो. जो प्रोसीजर आप रेसिस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं सेम प्रोसीजर इज वैलिड फॉर द इंडक्टर्स एंड इंपोडेंसेस. जो प्रोसीजर रेसिस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं सेम थिंग वैलिड फॉर द इंडक्टर इंपोडेंसेस एंड एज वेल एज फॉर द रिएक्टेंस आल्सो. मगर कैपेसिटर के लिए एवरी टाइम यू गो फॉर रेसिप्रोकल. देखो जी इधर मान लो आपको कैपेसिटर में आपको मान लो हाँ देखिए इफ यू वांट द 1/C1 इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एडसेंट साइड्स ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज. देखो जी C1 के लिए व्हाट आर द एडसेंट साइड्स CB एंड CC 1/CB 1/CC सम ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज. कम टू CA 1/CA इक्वल टू सम ऑफ द पॉजिटिव प्रोडक्ट्स बाई रेसिप्रोकल ऑफ ऑपोजिट कैपेसिटेंस. ऑपोजिट कितना है जी 1/C1. ओके. कैपेसिटर के लिए थोड़ा प्रोसीजर अलग है मगर रेसिस्टर के लिए इंडक्टर के लिए इंपेडेंस सबके लिए सेम. ओके. पांडे जी पांडे जी आपको टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहा बोल तो पहले चेक करो जो पांडे जी उसके लिए रीजन क्या है मार्क्स क्यों कम आ रहे क्यों बोल. देखिए डिफरेंट रीजन्स आर देयर फॉर गेटिंग लेस मार्क्स. वन रीजन इज द कैलकुलेशन मिस्टेक. वन रीजन इज द टाइम तो कम लग रहा है. वन रीजन इज द कॉन्सेप्ट यूर मिस्टेक. वन रीजन इज द लैंग्वेज प्रॉब्लम. आपका प्रॉब्लम क्या है पहले वो आइडेंटिफाई करो जी. उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करो. ओके. हाँ एक क्वेश्चन पढ़ो जी पहले. आई विल एक्सप्लेन. रीड दिस क्वेश्चन. होना बोल तो आप स्क्रीनशॉट ले लो. ओके चलिए लेट अस चेक इट आउट. देखो जी एग्जांपल में फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हियर 5 हाउ दे आर कनेक्टेड द डेल्टा. कैन यू ट्रांसफॉर्म दिस इनटू इक्विवेलेंट स्टार. when resistors of equal values transformed from delta to star, what will happen? Resistance value decreased by 3 times. Resistance of equal values transformed from delta to star decreased by 3 times. If it is decreased by 3 times, we can indicate like this. Voltage is 3 volts. देखिए इधर वी कन्वर्टेड डेल्टा टू इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करने से इट इज डिक्रीज बाय 3 टाइम्स. अब सिंप्लीफाई करेंगे. 3 and 5/3 बोथ आर इन सीरीज. देखो जी 2 and 5/3 बोथ आर इन सीरीज. नाउ दैट सीरीज कॉम्बिनेशन जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना दैट सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए दिस सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट इन द पैरेलल. जो सीरीज कॉम्बिनेशन connect the parallel. This entire combination connected series to 5/3. Can you find out the equivalent for this one? Can you find out the equivalent for this one? Can you find out the equivalent for this one? The series combination are in the parallel. This parallel combination connected series to 5/3. कैसे लिख सकते हैं जी 5/3 प्लस देखिए ये दोनों ऐड किया तो व्हाट यू गेट इसमें से 14/3. ये दोनों ऐड किया तो व्हाट यू गेट आंसर एज ए 11/3.
Can I relate this here? I am using formula R1 R2 by R1 plus R2. Getting up? हाँ, ये पूरा सिंप्लीफाई करके R इक्वल निकालो. R इक्वल निकालने के बाद क्या चाहिए आपको? करंट. I इक्वल सोर्स वोल्टेज है 3 by R equivalent. 3 by R equivalent. चेक करो जी. I give all the answers also. I give all the steps. बोलिए आंसर्स बोलिए. .80. Oh, many students give the answers. Very good, very good. Pandeji and Lakshman, Gautam Das, very good. 0.80. Right, 0.808. I am writing your answers only. 0.806, 0.8035 approx. Check कर लो. Okay. Come to this one. देखिए इधर इन दिस एग्जाम्पल हेयर वन इंडिपेंडेंट सोर्स मगर डिपेंडेंट सोर्स है. इधर भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होना बोल तो आप नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस कोई भी लगा सकते हैं. मगर इधर मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम ट्राइंग टू गो फॉर अवर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो जी. पहले क्वेश्चन होना बोल तो स्क्रीनशॉट ले लो. आई होप इट इज़ विजिबल ना. आई होप नाउ इट इज़ वेरी विजिबल क्लियरली. होना बोल तो एक स्क्रीनशॉट ले लो. I will explain. Yes, Gautam Das. चलिए, now let us simplify this one. देखो जी इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोलो तो देखिए इट इज़ वन इंडिपेंडेंट सोर्स डिपेंडेंट सोर्स. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कैन बी अप्लाइड फॉर इंडिपेंडेंट एज वेल एज फॉर द डिपेंडेंट सोर्सेस. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कैन बी अप्लाइड फॉर इंडिपेंडेंट एज वेल एज फॉर डिपेंडेंट सोर्सेस. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द whenever you are applying source transfer for dependent source, wherever the dependent source magnitude depends. In this example, its magnitude depends on the voltage across the 3 ohm resistance. Wherever the dependent source magnitude depends, without disturbing that one, without disturbing also 3 ohms को disturb नहीं करना है. Without disturbing that one, for remaining sources we can apply the transformation. Reason क्या है बोले तो, if you apply source transformation, we get the current source in parallel with the 3 ohms. If you are changing from series to parallel connection, Vx changes, dependent source value also changes. That's why wherever the dependent source magnitude depends, without disturbing that one, for remaining sources we can apply the transformation. Then in this example देखो जी, I am converting this current source into equivalent voltage source. Now here also I am converting this current source into equivalent voltage source. If you convert this current source into equivalent voltage sources here, now can I draw the figure like this? Check कर लो, can I draw the figure like this? इधर कन्वर्शन करते समय वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो एरो मार्क. देखिए एरो मार्क के लिए गिव द पॉजिटिव साइन. एरो मार्क के लिए पॉजिटिव साइन कितना है जी? 2 into 4 बोले तो 8. 2 into 4 बोले 8. एरो मार्क के लिए पॉजिटिव साइन. देखिए 6 into Vx by 3, what is the voltage? How much here? 2 Vx. एरो मार्क के लिए गिव द पॉजिटिव साइन. ओके, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? क्या चाहिए आपको? V0. व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? इज V0. To get the V0 value, simply can you apply the KVL for this one? Can you go for the KVL for this one? If you go for the KVL for this one, lower potential to higher potential minus 90. In this entire loop, let us assume the current of this is I. This entire loop, let us assume current of this is I. For this example, 3 plus resistance how much? 2. What about this one? 6 and 4. I am adding all the resistance values. In all the resistances, how much current circuiting is the I current. What about this one? Higher potential to lower potential voltage drop. What about this one? Lower potential to higher potential. Now this entire equation equated to 0. Now we got the KVL equation. But in this one, two unknowns are there. One unknown is Vx. What about other one is I? The other one is I.
देखो जी एग्जाम्पल में देखिए एग्जाम्पल में टू अननोन्स आर देयर, वन अननोन इज द Vx, व्हाट अबाउट अदर वन इज द I. Now to eliminate this one unknown here, let us come to Vx. Vx is the voltage of 3 ohm resistance. In the 3 ohms में current कितना जा रहा है इधर? I current. We can add the Vx equal to 3I. Vx equal to, we can add this with 3I. Can you substitute this Vx value? Can you substitute Vx value in this equation? Check करो जी. Substitute this Vx value. Substitute Vx value in this equation. Substitute करके पहले I निकाल सकते ना? Try to find out I value first. Substitute the Vx value in this one. Find out the I value. I value find out करने के बाद फाइनली क्या चाहिए आपको? V naught. देखो जी V naught equal to, we can write this in 4I. This V naught equal to, in the 4 ohm resistor, how much current flowing is the I? 4I. I give all the hints. I want answer from your side. Any answers? Any answers? Pankaj, Roshan, all in one. Many students are giving answer as a 36.44. V naught is a 36.44. Check कर लो जी. 36.44. Is it correct? 36.44. ओ चट्टोपाध्याय, you got the 27.33. कौन सा है? 27 कौन सा है? आप फाइनली V naught लिखो इधर. V naught के लिए आंसर 36.44. Lakshman also got 36.44. Okay, very good. Come to next one. Again the next point is when the network is drawn on plane without any crossover. When the network is drawn on plane without any crossover, this symbol is known as a crossover. Crossover means no connection is present. No connection is present. When the network is drawn on plane without any crossover, we can name as a planar network. In this example, the first one is a planar network. We can name this as a planar network. We can name this as a planar network. Now come to second one. Come to this second example. देखो जी सेकंड एग्जांपल में इधर क्रॉसओवर है, मगर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल तो इवन दो क्रॉसओवर इज देयर, देखिए होना बोल तो सेम फिगर को आई कैन इंडिकेट कनेक्शन लाइक दिस. जो कनेक्शन है ना, जो कनेक्शन है, द कनेक्शन आई एम इंडिकेटिंग आउट. दिस कनेक्शन, जो कनेक्शन है ना, दैट कनेक्शन आई एम इंडिकेटिंग आउटसाइड. बोथ फिगर्स आर द सेम. That means even though crossover is there, if it is possible to redraw the network without crossover, again it is also planar network. It is also known as a planar network. It is also known as a planar network. Come to one more example. मगर इधर देखिए, here the crossover is exist. We cannot redraw the network without any crossover. इधर हमेशा crossover is exist. Always crossover is exist. If always crossover is exist here, now it is named as a non-planar network. We can name this one as a non-planar network. We can name this one as a non-planar network. Non-planar network. Non-planar network. Our mesh analysis is valid only for planar networks, but nodal analysis can be applied for both planar as well as non-planar networks. Nodal analysis can be applied for both planar as well as the non-planar networks. Okay, these two are the example for planar. Now it is example for the non-planar.
Now let us see one question correspond to this mesh analysis. In this example, what is our requirement is the I1 and I2. To find out I1 I2 we can go for any approach. होना बोल तो go for nodal analysis. मगर आप थोड़ा idea आने के लिए I am going for the mesh analysis. होना बोल तो nodal analysis भी लगाया जा सकता है इधर. देखिए इधर in this example if you want to apply the mesh analysis correspond loop 1 देखिए voltage कितना है इधर 30 volts. Now for this example होना बोल तो पहले एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो जी. I'll explain. yes all in one yes. देखो जी इन दिस एग्जांपल I1 I2 फाइंड आउट करने के लिए सपोज इफ आई प्रिफर द मेश एनालिसिस. देखिए इधर 30 वोल्ट्स इज देयर. द रेजिस्टेंस कितना है जी 2 into I1 मगर वी डोंट नो व्हाट इज द वोल्टेज एज करंट सोर्स. दैट मीन्स ओनली लूप 1 के लिए वी कैन नॉट राइट द केवीएल इक्वेशन. क्यों बोलते हो वी डोंट नो व्हाट इज द वोल्टेज एज करंट सोर्स. इधर भी देखिए आपको 10 वोल्ट्स 1 ओम इधर भी वोल्टेज नहीं पता है. ओनली लूप 2 के लिए भी केवीएल इक्वेशन नहीं लिख सकते. That's what we do here. If I want to apply the mesh analysis, we prefer the super mesh technique. We go for the super mesh technique. देखो जी as per super mesh technique, we write the equation combinedly for the mesh 1 and mesh 2. As per super mesh technique, we write the equation combinedly for mesh 1, mesh 2, excluding current source. Excluding current source. चलिए इधर combine equation लिखेंगे. If you start from here, lower potential to higher potential voltage rise. 2 ohms में करंट कितना जा रहा है जी I1 करंट. I1 करंट देखिए 1 ओम में करंट कितना जा रहा है इधर ओनली I2 करंट. नाउ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप एंटायर इक्वेशन इक्वेटेड टू 0. देखिए दिस इक्वेशन कंबाइनली डेवलप्ड फॉर मेश 1 मेश 2 एक्सक्लूडिंग करंट सोर्स. इधर इक्वेशन डेवलप करने के लिए व्हाट वी अप्लाइड हियर केवीएल. आप क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेट ऑन द करंट सोर्स. देखिए करंट सोर्स के ऊपर फोकस करिए. I1 इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, I2 इज अपवर्ड्स. But the result of this one is the upwards. What do you write this way? I2 minus I1 equal to we write this way 2Vx. देखिए करंट रिलेशन बोल दो KCL. जो रिजल्ट है ना इन द सेम डायरेक्शन ऑफ I2, क्या लिख सकते हैं I2 माइनस इक्वल टू Vx. मगर थोड़ा ध्यान से देखें तो कितना अननोन्स है जी. वी आर हैविंग 3 अननोन्स. एक तो I1 I2 अदर क्या है जी Vx. अब Vx चेक करेंगे. Vx किधर से निकाल सकते हैं. देखो जी Vx इज द वोल्टेज कितना 2 ओम रेजिस्टर. Vx इज द वोल्टेज 2 ओम रेजिस्टर. देखिए 2 ओम्स में करंट कितना जा रहा है इधर I1 करंट. Vx इक्वल टू I1. देखो जी Vx ले जाके इधर पुट कर सकते ना. देखिए Vx कैन यू सब्स्टिट्यूट हियर. इफ यू पुट द Vx हियर 2 अननोन्स आर देयर I1 एंड I2. चेक कर लो जी. आई गिव ऑल द हिंट्स. आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड. बोलिए आंसर्स बोलिए. Now many students are saying 2.85. Check is it correct? 2.85 and some students are saying this is a 14 point कितना है जी 14.28. check is it correct? जो answers आप बोल रहे हैं ना that is only I am writing. check is it correct? Shall I confirm these answers? Ganesh and Saurabh, Lakshman. Shall I confirm this one?
Okay, very good, very good. Tina, Mukesh, same answers. Very good, very good, very good, dear students. Very good, very good. Keep it up, keep it up. Come to one more question. Question screenshot ले लो जी. I'll explain. Very good, very good. Now for this particular example, important point क्या है बोल तो units के ऊपर focus करो जी. Generally by looking the symbol you get doubt ये क्या है बोल के. Generally get one doubt. इसका meaning क्या है जी? Indirectly here conductance is given. That is important point. देखिए क्वेश्चन में सिंपली दे गिव लाइक दिस. इन सम ऑफ द प्रीवियस पेपर्स इट वाज डायरेक्टली गिवन लाइक दिस. नाउ आइडेंटिफाई यूनिट्स केयरफुली. इन दिस वन व्हिच वन गिवन हियर? कंडक्टेंस वाज गिवन. ओके, चलिए चेक करेंगे. नाउ करस्पॉन्ड्स एग्जांपल देखो जी. नोड वोल्टेज फॉर इज V1. देखिए नोड वोल्टेज V2, नोड वोल्टेज V3. नाउ इट इज अ ग्राउंड पोटेंशियल. For this example, potential difference between V3 and ground. Potential difference V3 and ground equal to 12 volts. V3 and ground equal to 12 volts. देखिए इधर potential difference V1 and V2. देखिए तो दोनों के बीच में कौन सा सोर्स है इधर? Ideal voltage source. If I want to write the KCL here, 4 is the incoming current of this one. We write the V1 2. We can calculate current of this one also. But we don't know what is the current of this branch. If you want to apply KCL, we can define the current of this one. We can define current of this one. We can define current of this branch also. But we cannot define current of this branch. If any resistance is given, then we can define the current. If any resistance value, conductance is given, then we can define the current. But in this example, between V1, V2, which one is connected? Ideal voltage source is connected. When ideal voltage source connected between the two non-reference nodes, we go for the supernode technique. With respect to supernode technique, equation is combinedly developed for the V1 and V2 excluding voltage source. We read the equation combinedly for the node 1, node 2 excluding voltage source. That means for this particular example, we are taking the help of the which one? Supernode technique. We are taking the help of the which one here? Supernode technique. Now with respect to supernode technique, with respect to ground potential, polarity either plus, it is also plus. We are using application of supernode technique. From the supernode technique, carefully observe here 4 is the incoming current, V1 2. Whatever this one is the, we can with respect to ground potential, it is also plus subtraction V1 minus 12. Because V3 value already concluded. Conductance value how much? 1. Conductance value is 1. Come to this one. Now V2. What about this one? V2 minus 12. V2 minus 12. What the conductance is 5. Equation is combinedly developed for node 1 and the node 2 excluding voltage source. All the branches completed ना? चेक कर लो एक बार, कुछ भी मिस नहीं हो गया ना? Okay. Now first equation is completed. In this one, how many unknowns are there? V1 and the V2. देखिए और एक रिलेशन क्या है बोल तो now potential difference V2 and V1 equal 3V0. That means we can add the V2 minus V1 equal, we can add the 3V0. Potential difference V2 and V1 equal 3V0. देखिए in this example, voltage across this entire branch is a V0. With respect to ground potential, voltage कितना है V1. That means we can use statement as a indirectly V0 is equal V0 and V1 both are the same. Voltage of this entire branch is a V0. आप ground से देखें तो voltage कितना है V1 V0 both are the same.
That means in this example here we can write like this v2 minus v1 equal to, we can write the 3v1, we can write 3v1. From this equation आप इधर rearrange किया तो we can write this way, v2 is equal to 4v1. Give the name for this with the equation 2, give the name as the equation 1, give the name as equation 1. एग्जाम्पल में जो v0 है ना, v0 प्लेस में यू कैन सब्स्टिट्यूट द v1. देखो जी v2 इक्वल टू कैन 4v1. हाँ देखो जी, कैन यू सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 2 इन दिस इक्वेशन 1. चेक कर लो जी, डू द सब्स्टिट्यूशन एंड सिंप्लीफाई इट. सिंप्लीफाई करके v1 निकाल सकते हैं ना. दैट v1 ओनली और रिक्वायर्ड आंसर. क्यों बोलते v1 एंड v0 बोथ आर द सेम. v1 v0 बोथ आर द सेम. बोलो जी, बोलिए आंसर्स, बोलिए आंसर्स, बोलिए. Yes, Norm, very good. Pankaj Sharma, very good, very good. Aman Srivatsava, बोलिए जी आंसर्स बोलिए. I gave all the steps. Risu gave answer 1.617. Gautam also got, Gautam Das also got answer 1.617. Very good, very good. 1.617. देखो जी, here v1 v0 both are the same. We already concluded जो v1 v0 both are the same. .617, very good, very good. Badan Lakshman, clashing. कौन है? चट्टोपाध्याय, आर्य मोहन चट्टोपाध्याय जी. ओके, चट्टोपाध्याय आल्सो गॉट आंसर. आर्यमन चट्टोपाध्याय, आपका नाम बहुत बड़ा है जी. That's why simply I am using word Chattopadhyaya. Very good Chattopadhyaya, you are getting good answers, very good. Soumya Singh also got answer. Risu Kumar also got answer. Very good, very good, very good dear students. करना है जी, कैलकुलेशन करने से धीरे धीरे अंदर से क्या होता है, फायर आते हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है. Ritu, very good, very good. Okay dear students, now let us see some questions correspond to our AC circuits. देखिए, देखिए इन केस ऑफ द AC circuits पहले क्या करेंगे, लेट अस सी जनरल फॉर्मूलास फॉर RMS वैल्यूज. देखो जी, इन द AC what will happen, alternating waveform in order to indicate the rating of AC source. मान लो एग्जांपल AC जनरेटर है तो उसके ऊपर नेम प्लेट डिटेल्स लिखते हैं ना, वोल्टेज वैल्यू, करंट वैल्यू एंड रेस्पेक्ट टू पावर, एवरीथिंग राइट ना. वोल्टेज हाउ द रेट एज ए कांस्टेंट वैल्यू, मगर आउटपुट क्या आ रहा है जी, अल्टरनेटिंग. दैट मीन्स वी हैव टू एक्सप्रेस दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एज वन कांस्टेंट वैल्यू. दैट मीन्स टू इंडिकेट दिस मच इफेक्टिव वैल्यू, दिस RMS कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड. देखिए इधर जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट RMS वैल्यू. देखिए मान लो इफ यू टेक एग्जांपल दिस वन, व्हाट द एंगल ऑफ कंप्लीट साइकिल कितना है इधर, 2 पाई, 1/2 पाई v स्क्वायर. इधर v का मीनिंग क्या है बोल तो, एज पर द शेप ऑफ द वेव फॉर्म इंडिकेशन फॉर v इज ए चेंजेस. देखिए मान लो आप इधर साइन शेप का है जी, साइन वेव, v प्लेस में क्या लिख सकते हैं, vm sin ओमेगा t, एज पर द शेप ऑफ द वेव फॉर्म इंडिकेशन फॉर v इज ए चेंजेस. कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते बोले तो, देखिए इन प्लेस ऑफ एंगल दे मे गिव टाइम भी दे सकता है. टाइम दिया तो टाइम टेकन टू कंप्लीट फुल साइकिल इज t seconds. टाइम टेकन कंप्लीट फुल साइकिल इज t seconds. 1/t 0 to t, इधर भी सेम थिंग, एज पर द रिप्रेजेंटेशन v इज द चेंजेस, v square dt. ओके, द जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट द RMS वैल्यू. नेक्स्ट लेट अस सी द एवरेज वैल्यू.
इधर एवरेज वैल्यू में भी इधर क्या करना है बोलते हो, स्पेशली वेन आवर यू आर डूइंग मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म. सिमेट्रिकल भी स्पेशली आइदर वोल्टेज और करंट, नॉट फॉर ऑल द केसेस. आइदर वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म के लिए, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए, मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए we try to consider only the half cycle. We include the only half cycle. इधर हाफ साइकिल इंक्लूड किया तो हाफ साइकिल का एंगल कितना है जी, पाई. कैसे लिख सकते हैं इधर, 1/π 0 to π v d omega t. ओके, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर आइदर वोल्टेज वेवफॉर्म नहीं तो करंट वेवफॉर्म, हाफ साइकिल कॉन्सेप्ट. मगर सेकंड एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, नॉट आइडेंटिकल, अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म. मगर अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए एनालिसिस करने के लिए वी गो फॉर कंप्लीट साइकिल. देयर कंप्लीट साइकिल के लिए एंगल कितना है इधर, 2π, 1/2π. वी ट्राई टू डिवाइड दिस इन 2 इंटरवल्स. फर्स्ट इंटरवल क्या है इधर, 0 to π, π to 2π. इधर v का मीनिंग क्या है बोलते हो, एज पर द शेप ऑफ द वेवफॉर्म, इंडिकेशन फॉर v इज चेंजेस. जनरल फॉर्मूला फॉर सिमेट्रिकल, जनरल फॉर्मूला फॉर द अनसिमेट्रिकल. ओके, चलिए. हाँ देखिए, जनरली ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में कैसा दे रहा बोले तो, सिंपली देखिए द शेप ऑफ द वेवफॉर्म. दे में एज द क्वेश्चन एज ए व्हाट इज द पावर डिसिपेशन इन द नेटवर्क. सिंपली देखिए द शेप ऑफ द वेवफॉर्म. इफ दिस इनपुट इज गिवन टू नेटवर्क, व्हाट इज द पावर डिसिपेशन द रेसिस्टर. पावर डिसिपेशन के लिए क्या चाहिए आपको, यू नीड द RMS वैल्यू. दैट्स व्हाई विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राई टू रिमेंबर RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू रिलेशंस and average value maximum relations for standard waveforms. इधर स्टैंडर्ड वेवफॉर्म बोलते देखिए, आई हैव टेकन सिंपल एग्जांपल्स. देखिए होना बोलते आप स्क्रीनशॉट ले लो. सम एग्जांपल्स आर दी साइन वेव, नहीं तो फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट. आई एम राइटिंग इन टर्म्स रिलेशन विद द RMS एंड द मैक्सिमम, एवरेज एंड द मैक्सिमम. साइन वेव के लिए सेकंड वन कौन सा है जी, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट. थर्ड वन क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट. फोर्थ वन क्या है, स्क्वायर वेवफॉर्म एंड हाफ स्क्वायर वेवफॉर्म. देखिए इधर सॉटूथ वेवफॉर्म, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म एंड हाफ सॉटूथ वेवफॉर्म. Now for all these standard waveforms, try to remember relation between this RMS value and corresponding maximum values. We can save the time. Okay. चलिए, now let us see this question, simple question. See the simple question. देखिए एग्जाम्पल में थोड़ा ध्यान से देखिए तो क्या चाहिए आपको, RMS वैल्यू. क्या चाहिए जी, RMS वैल्यू. देखिए इधर कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है तो कौन सा कंपोनेंट है, DC कंपोनेंट. DC कंपोनेंट के लिए ओमेगा वैल्यू कितना है जी, 1. देखिए एग्जाम्पल में और ओमेगा इक्वल हाउ मच, 1. ओमेगा वैल्यू कितना है जी, 1. ये एग्जाम्पल में ओमेगा वैल्यू कितना है जी, 3. अब देखो जी, फ्रीक्वेंसी आर इक्वल और अनइक्वल. देखिए फ्रीक्वेंसी 0, 1, 3 फ्रीक्वेंसी आर इक्वल अनइक्वल, अनइक्वल फ्रीक्वेंसीज. जब अनइक्वल फ्रीक्वेंसी है तो जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट RMS वैल्यू. जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट RMS वैल्यू इज वी कैन राइट दिस एज V RMS 1 square we can repeat for the n number of terms. You can use this formula. This formula valued whenever the frequencies are the unequal, whenever these frequencies are the unequal. देखिए correspond this example, this V RMS equal to, but the RMS value constant remains same. RMS value constant remains same. Sine wave के लिए what the RMS value is, जनरल फॉर्मूला क्या है, Vm/√2. पीक वैल्यू कितना है इधर, 3 होल स्क्वायर. कम टू दिस वन, इधर पीक वैल्यू कितना है इधर, 2. वी राइट दिस में 2/√2 होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करो, यू गेट आंसर. बोलो जी, मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग आंसर 10.31. कोनैनो, गोमती, लक्ष्मी, बदान, रोशन, गणेश, चट्टोपाध्याय और सिंह, कोनैनो, अनुभव सिंह, सुनील कुमार, रीतु. वेरी गुड 10.28. चेक कर लो जी. शैल आई कंफर्म दिस वन? मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग दिस आंसर 10.28. शैल आई प्रोसीड दिस वन? वेरी गुड.
10.28 or 10.31? Oh, some students are getting some different. Okay. But calculation करते समय try to consider at least 2 decimal points. 2 decimal points consider करो जी. Okay, Shivam Singh, Sunil Srivatsa, very good. Okay, very good. Okay, चलिए अब देखिए इन द एसी सर्किट में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोल तो रेसिस्टर के लिए, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए, तीनों के लिए क्या चाहिए बोल तो वोल्टेज एंड करंट एंगल चाहिए. दो वोल्टेज एंड करंट दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज रिक्वायर्ड. रेसिस्टर के लिए, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट चेक करेंगे. देखो जी, रेसिस्टर के लिए हमेशा रिमेंबर एज ए ऑलवेज करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज. मगर इफ यू कम टू द इंडक्टर here always with respect to voltage current is lagging. with respect to voltage current is lagging. होना बोलते ऐसा भी दिखा सकते हैं आप, with respect to current voltage is leading. होना बोलते सेम फिगर ऐसा भी दिखा सकते हैं आप, with respect to current what the voltage will be the leading. And generally what they do here, whenever developing phasor diagrams for parallel circuits के लिए they go for voltage reference. क्यों बोलते पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस आर द सेम. जनरली सीरीज सर्किट के लिए व्हाट दे डू हियर, दे टेक द करंट रेफरेंस. क्यों बोलते सीरीज सर्किट में करंट द ऑल एलिमेंट्स आर द सेम. नो कैपेसिटर में आप एनालिसिस किया तो वी गेट दिस एज ए विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज करंट इज लीडिंग बाय एंगल 90. इधर कितना आ गया जी, लैगिंग बाय 90 मगर लीडिंग बाय 90. मगर आप करंट से देखें तो, इधर से देखें तो क्या है, वी क्या है, पीछे बोल तो लैगिंग, पीछे बोल तो क्या लैगिंग. क्या बोल सकते हैं इधर विथ रेस्पेक्ट टू करंट व्हाट द वोल्टेज इज लैगिंग. ओके, एसी सर्किट्स में दिस इज द मेन प्राइमरी थिंग. क्यों बोल तो विथ हेल्प ऑफ दिस ओनली वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द आरएल सीरीज, आरएल पैरेलल, आरसी सीरीज, आरएल पैरेलल. वो सॉल्व करना बोलते पहले बेसिक चाहिए आपको, वोल्टेज एंड करंट रिलेशंस क्या है. ओके, चलिए let us see the combination of elements. देखो जी, previously discussed only resistor, inductor, capacitor. मान लो if I go for RL series circuit, देखिए अभी कंक्लूड किया था हमेशा फेजर डायग्राम डेवलप करते समय सीरीज सर्किट के लिए दे गो फॉर करंट एज ए रेफरेंस. देखिए विथ रेस्पेक्ट टू करंट रेसिस्टर का वोल्टेज VR इज इन फेज. विथ रेस्पेक्ट टू करंट VL पोजिशन क्या है, लीडिंग बाय एंगल 90. कंफ्यूजन मत हो, जो करंट रेफरेंस ले इधर, ये दोनों को ऐड किया तो नेट वोल्टेज कितना होता है इधर V. नो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस वन, रेक्टेंगल. देखो जी सेम थिंग आई इंडिकेटेड हियर, वोल्टेज ट्रायंगल. क्वेश्चन में कभी कभी दे मेक यू VR वैल्यू, VL वैल्यू, दे आस्क यू टू फाइंड आउट V. देखो जी V निकालने के लिए कैन आई यूज दैट रेक्टेंगल फार्मूला. एंगल निकालने के लिए कैन आई गो फॉर दिस वन, थीटा इक्वल tan इनवर्स ऑफ VL बाय VR. देखिए इधर V इक्वल टू ऐसे लिख सकते होना बोल तो वी कैन राइट द I इंटू जेड. इधर VL इक्वल टू होना बोल तो ऐसे लिख सकते वी कैन राइट द I इंटू XL. V इक्वल ऐसे लिख सकते I इंटू R. बट कॉमन टर्म द ऑल साइड्स द करंट, सिंप्लीफाई करें तो वी गेट इंपेडेंस ट्रायंगल. देखो जी इंपेडेंस निकालने के लिए इज जनरल फार्मूला फॉर RL सर्किट. सिमिलरली फॉर पावर, इफ यू मल्टीप्लाई ऑल द साइड्स विद I स्क्वायर, now we get the power triangle. From power triangle we got like this. Okay, इधर P का मीनिंग क्या है बोल तो देखिए, in this particular example this is a P का मीनिंग क्या है बोल तो we name this as active power. देखो जी एक्टिव पावर निकालने के लिए as per the given data होना बोल तो go for I square R, नहीं तो VI cos theta. अदर वन इज द रिएक्टिव पावर. कौन सा रिएक्टिव पावर, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर. इंडक्टिव रिएक्टिव पावर निकालने के लिए होना बोल तो वी कैन गो फॉर I स्क्वायर XL, नहीं तो वी कैन गो फॉर द VI sin थीटा. ओके, I स्क्वायर जेड बोल तो वी कैन नेम एज एपरेंट पावर. जो एपरेंट पावर है ना, सपोज इफ इंडिकेट लाइक दिस सर, वी कैन नेम एज ए कॉम्प्लेक्स पावर. इससे फायदा क्या है बोल तो इफ आई गो फॉर दिस फॉर्मूला वी गेट द बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल.
देखिए फ्रॉम पावर ट्राइंगल ऐसे दिखा सकते हैं आप एस सी इक्वल टू वी कैन राइट प्ले पी प्लस जे क्यू एल। देखिए इधर रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट है, दैट्स व्हाई एस वी कैन आल्सो नाउन एज ए कॉम्प्लेक्स पावर बोले तो रिजल्ट में वी गेट द बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल। ओके, चलिए सेम थिंग यू कैन रिवाइज फॉर सीरीज सर्क्यूट। देखो जी इधर भी सेम थिंग, विथ रेस्पेक्ट करंट देखे तो वी आर पोजिशन कैसे इधर इन फेस, विथ रेस्पेक्ट करंट वी सी पोजिशन क्या इधर लैगिंग एंगल 90, दोनों जोड़ दिया तो वी गेट शेप लाइक दिस। अगेन इधर भी वोल्टेज ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, वी कैन डिफाइन द पावर, वी कैन डिफाइन द करस्पॉन्डिंग पावर ट्रायंगल आल्सो। एंड वन मोर थिंग इधर और भी डिफाइन किया इधर क्या इधर और क्या इधर पावर फैक्टर। जब पावर फैक्टर डिफाइन करते समय फॉर एनी नेटवर्क, आप सीरीज ले लो, पैरेलल ले लो, कोई भी ले लो, डिफाइन करते समय हमेशा रेफरेंस क्या है बोले तो वोल्टेज। पावर फैक्टर नेचर मीनिंग इज द पोजीशन ऑफ करंट फेजर विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज फेजर। आप इधर वोल्टेज से देखें तो करंट का पोजीशन क्या इधर लैगिंग, आप इधर वोल्टेज से देखें तो करंट पोजीशन क्या इधर लैगिंग। दैट्स व्हाई इंडक्टर के लिए हमेशा आप सीरीज ले लो, पैरेलल ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, इंडक्टर है ना लैगिंग पावर फैक्टर। उसका मीनिंग क्या है, पोजीशन ऑफ करंट फेजर विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज फेजर। मगर इधर देखिए इन दिस एग्जांपल आप इधर वोल्टेज से देखें तो करंट पोजीशन लीडिंग। क्वेश्चन में कैपेसिटर है ना, इट में सीरीज और पैरेलल कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा बोले तो नेचर ऑफ पावर फैक्टर इज लीडिंग। ओके, चलिए नाउ कम टू द आरएलसी। हियर भी देखिए आरएलसी में 3 पॉसिबिलिटीज आर प्रेजेंट विथ रेस्पेक्ट करंट। देखिए वी आर इज इन फेस, मगर वी एल कैसे है जी लीडिंग, वी सी इज अ लैगिंग। नाउ इधर 3 पॉसिबल हो सकता है, क्या है 3 पॉसिबिलिटीज, वी एल में भी ग्रेटर, नहीं तो वी सी ग्रेटर, दोनों भी इक्वल भी हो सकता है। देखिए जब वी एल ग्रेटर हुआ तो नेचर ऑफ पावर फैक्टर लैगिंग, जब वी सी ग्रेटर हुआ तो नेचर ऑफ पावर फैक्टर इज लीडिंग, जब दोनों एग्जैक्टली इक्वल हुआ तो नेचर ऑफ पावर फैक्टर इज यूनिटी। आरएलसी में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, क्यों बोल तो एज पर द एलिमेंट वैल्यूज फ्रीक्वेंसी 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, वी एल भी ग्रेटर हो सकता है, नहीं तो वी सी ग्रेटर, नहीं तो दोनों एग्जैक्टली इक्वल। इधर फिगर कंप्लीट करने के लिए आई हैव टेकन एग्जांपल। देखो जी आई हैव टेकन एग्जांपल एज वी एल ग्रेटर व्हेन कंपेयर टू वी सी। ये फेजर डायग्राम में आई सिलेक्टेड वी एल ग्रेटर व्हेन कंपेयर टू वी सी। आप इधर वी एल ग्रेटर लिया तो वी गेट द शेप ऑफ द ट्रायंगल लाइक दिस। अगेन इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द respect to magnitude and corresponding impedance and corresponding this power triangle. From power triangle we get this expression. Okay, देखिए अभी कंक्लूड किया था whenever the VL is greater, देखो जी एग्जांपल में whenever this VL is greater, VL greater बोल तो इंडक्टिव नेचर, पावर फैक्टर क्या होता है इधर लैगिंग। RLC में 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। देखो जी जब VC ग्रेटर हुआ तो कैपेसिटिव नेचर बोल तो लीडिंग। जब VL इक्वल VC बोल तो क्या होता है इधर एंगल बिकम्स 0। जब एंगल 0 हो तो cos 0 इक्वल कितना होता है इधर 1 बोले तो यूपीएफ का मीनिंग क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर। यूपीएफ का मीनिंग क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, चलिए ए फिगर कॉपी करो जी, आई विल एक्सप्लेन, स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल एक्सप्लेन। Priya Tiwari, we discuss Laplace also, don't worry. I will discuss Laplace also. I will discuss some questions in the transients also. I will discuss some questions in the theorems, some questions in transients, some questions in two-port network. Don't worry. देखेंगे इधर देखो जी, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या चाहिए जी आपको, एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय, इन दिस वन व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय 8 ohm resistor, एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय 8 ohm resistor। देखो जी इन दिस एग्जांपल व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम शिफ्टिंग दिस एंटायर पार्ट टू द प्राइमरी साइड फॉर मेकिंग कैलकुलेशन सिंपल। आई एम शिफ्टिंग दिस एंटायर पार्ट टू द प्राइमरी साइड।
ये शिफ्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, लेट अस फाइंड आउट कैपेसिटी रिएक्टेंस फॉर दिस वन, माइनस जे एक्सी. एक्सी का फॉर्मूला क्या है, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी. इन द क्वेश्चन इटसेल्फ गिवन, देखिए एग्जांपल में ओमेगा वैल्यू कितना है इधर 30, देखिए ओमेगा वैल्यू 30, कैपेसिटेंस वैल्यू कितना है इधर 1/20, 1/20. आप इधर सिंप्लीफाई किया तो वी कैन गेट -J4, -J4. दैट मीन्स सर एक्सी आ गया, रेजिस्टेंस वैल्यू पता है. देखिए क्वेश्चन में आपको टर्न्स रेशियो दे दिया, इन द क्वेश्चन इटसेल्फ टर्न्स रेशियो इज गिवन, और द टर्न्स रेशियो इज वी कैन राइट दिस एज n1:n2, और टर्न्स रेशियो इज 3:1. कैन यू शिफ्ट द पैरामीटर्स फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी साइड? What is the voltage? What is the requirement is the power. Now what is the RMS voltage for this means? RMS voltage we can get the 4/√2. What is the RMS voltage of 4/√2? What about this means the 48. Capacitive reactance I shifted from secondary to primary side. Then how to rate -J4 multiply with what is the turns ratio the 3:1. Then how to rate, directly I am writing here, we rate the n1/n2 whole square. आप इधर सिंप्लीफाई किया तो वी कैन राइट दिस -J36, -J36. ये भी कितना है जी 8 मल्टीप्लाई n1/n2 होल स्क्वायर. व्हाट यू गेट, आंसर इज 72 ohms. नो वी शिफ्टेड द पैरामीटर्स फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी साइड, नाउ कैन यू फाइंड आउट द करंट इन दिस पार्ट. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे इधर, पावर डिसिपेशन 8 ohm रेजिस्टर. That means whenever I am shifting to the primary side, now what is the resistance value got here? 72 ohms. The power dissipation, what you are getting the 72 ohms? Same power present in this 8 ohm resistor. Because 8 ohms only we shifted from secondary to the primary side. For that one, can you find out respect to current of this one? देखो जो voltage value कितना है इधर 4/√2. इधर voltage value कितना है इधर 4/√2. देखिए एग्जाम्पल में कितना है इधर 48. नो 48 और एक रेजिस्टेंस क्या है इधर 72. देखिए 48 72 और क्या है इधर -J36. नो फॉर दिस वन कैन यू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए. दैट मीन्स वी राइट द 4/√2. व्हाट यू राइट इसमें रूट ऑफ कितना है जी, ये दोनों ऐड किया तो वी गेट द 120 होल स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर. ये निकाल के करंट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना. करंट निकालने के बाद क्या चाहिए आपको, पावर. इधर पावर के किधर निकाल रहे हो, इधर 72 ohms में निकाल रहे हो. इधर आई एम राइटिंग दिस विद I² इंटू R बोल तो R72. दैट मीन्स वी कैन राइट I² इंटू R प्लेस में आई एम पुटिंग 72 ohms. जितना पावर रहती है इधर 8 ohms में, सेम पावर प्रेजेंट हियर इन 72. क्यों बोलते, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी टू द प्राइमरी साइड. हाँ चेक करो जी, आई गिव ऑल हिंट्स. पहले क्या करो, करंट मैग्नीट्यूड निकालने के बाद I² R72 बोलते कितना है, रेजिस्टेंस है 72. चेक करो जी, आई गिव ऑल द स्टेप्स. बोलिए आंसर्स बोलिए. रोशन कुमार गॉट द सी ऑप्शन, वेरी गुड. सुनील साही कुमार आल्सो गॉट सी ऑप्शन, वेरी गुड. देखिए थोड़ा एसी सर्किट्स में कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है. वी हैव टू पे लिटिल मोर अटेंशन व्हेन कंपेयर टू बेसिक्स. क्यों तो हर एक बार मैग्नीट्यूड एंगल दोनों में रहते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा पेशेंस ही चाहिए. इधर पेशेंस ही चाहिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा चाहिए. चेक करो, मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग सी इज द करेक्ट ऑप्शन. शैल आई कंफर्म दिस वन? चेक करो, मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चेक कर लो जी एक बार. Okay, very good. C is the correct option. Very good.
Now similarly if you observe this parallel circuits, देखो जी RL parallel circuits में phasor diagram develop करते समय we take the voltage as a reference. क्यों बोलते हो? In the parallel circuits में voltage across all the branches are same, voltage same. With respect to voltage देखिए IR कैसे रहते हैं? In phase. With respect to voltage IL पोजिशन क्या है इधर? लैगिंग. ये दोनों जोड़ दिया तो IL दोनों जोड़ दिया तो नेट करंट इज I. देखो जी इधर भी जो करंट है ना, करंट को सेपरेटली इंडिकेट कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल. फॉर दिस वन कैन यू फाइंड रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, एंगल भी निकाल सकते हैं ना. अगेन इन द पैरेलल सर्किट्स में व्हाट दे डू, दे मेक यू डेटा इन टर्म्स ऑफ द कंडक्टेंस, ससेप्टेंस एंड एडमिटेंस. एक करंट ट्राइंगल सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द एडमिटेंस ट्राइंगल लाइक दिस. एडमिटेंस, फॉर एडमिटेंस वी कैन राइट द रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड. देखो जी इधर भी आपको पावर फैक्टर निकालना बोले तो if you want to find out the respect to power factor for this one, if you want to find the respect to power factor, this cos theta equal to, देखो जी from the current triangle कैसे लिख सकते हैं? we write this one IR by I. नहीं तो इधर from admittance triangle कैसे लिख सकते हैं? we write the G by Y. एलिमेंट कौन सा है? इंडक्टर. जब इंडक्टर है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज करंट इज लैगिंग. होना बोलते चेक कर लो. आप इधर वोल्टेज से देखे तो करंट पोजीशन क्या है? लैगिंग. करंट पोजीशन क्या है इधर? लैगिंग. सेम थिंग यू कैन ऑब्जर्व फॉर आरसी पैरेलल सर्किट आल्सो. देखिए करंट कैसे है जी? इन फेज. आईसी आप वोल्टेज से देखे तो आईसी क्या हो रहा है इधर? लीडिंग. दोनों जोड़ दिया तो नेट करंट इज आई. अगेन हेयर आल्सो वी कैन डेवलप करंट ट्राइंगल, नहीं तो एडमिटेंस ट्राइंगल, नहीं तो पावर ट्राइंगल. नेचर क्या है? ऑलरेडी कंक्लूडेड. कभी भी कैपेसिटर है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं आप नेचर क्या होता है इधर? लीडिंग. आप इधर वोल्टेज से देखे तो करंट का पोजीशन क्या है इधर? लीडिंग. करंट का पोजीशन क्या है इधर? लीडिंग. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट लेट अस गो टू दिस RLC पैनल. पर RLC पैनल में भी 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर. क्यों बोलते? देखिए फेजर डायग्राम डेवलप करने के बाद जो करंट है ना IR इज इन फेज. विथ रेस्पेक्ट वोल्टेज IC क्या है? लीडिंग. IL क्या है? लैगिंग. इधर भी 3 पॉसिबिलिटीज रहते हैं. IC में भी ग्रेटर, नहीं तो IL ग्रेटर और IL इक्वल IC. अगेन हेयर आल्सो 3 पॉसिबिलिटीज आर प्रेजेंट. IL में भी ग्रेटर और IC में भी ग्रेटर और IL इक्वल IC. इफ IC ग्रेटर लीडिंग पावर फैक्टर, इफ IL ग्रेटर लैगिंग पावर फैक्टर, इफ IL इक्वल IC यूनिटी पावर फैक्टर. ओके, अगेन फ्रॉम दिस ट्राइंगल हेयर वी कैन फाइंड द रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड. प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वी यूज ऑल द रेस्पेक्ट टू फॉर्मूलास, सीरीज सर्किट्स के लिए, पैरेलल सर्किट्स के लिए. ओके, देखिए नेक्स्ट लेट अस सी सम बेसिक डिफरेंसेस. सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस करस्पॉन्ड टू सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस. देखो जी सीरीज सर्किट में इफ आई टेक द करंट एज ए रेफरेंस विथ रेस्पेक्ट करंट, देखो जी विथ रेस्पेक्ट करंट वी आर कैसे रहते हैं? इन फेज. विथ रेस्पेक्ट करंट व्हाट अबाउट द VL? with respect current what the VL is a leading, with respect current what the VC is a lagging. देखिए the circuit is said to be resonance when the source current is in phase with source voltage. Under resonance condition this VL VC both are exactly equal, these two will cancel out. If these two cancel out, but remaining part is only which one? VR is nothing but indirectly source voltage. If these two are cancelled out, remaining part is only VR equal to V. That means circuit is said to be resonance when the source current is in phase with the source voltage. Come to parallel. Parallel में phasor diagram develop करने के लिए we go for voltage as a reference. आप voltage reference लिया तो IR कैसे रहते हैं? In phase. What about this with respect to voltage? What about this IL is a lagging. With respect to voltage, what about IC is a leading. इधर भी सेम लॉजिक. अंडर रेजोनेंस कंडीशन दीज टू विल कैंसल आउट ईच अदर. इधर भी डेफिनेशन सेम. सर्क्यूट इज सेट टू बी रेजोनेंस. इधर भी डेफिनेशन सेम. सर्क्यूट इज सेट टू बी रेजोनेंस व्हेन सोर्स करंट इन फेज विद द सोर्स वोल्टेज. ये देखो जी दोनों कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग फेजर डायग्राम वी गेट लाइक दिस. IR and I both are exactly equal.
IR and I both are exactly equal. Okay, now from this one only we can notice some differences. देखो जी, it may be series or parallel. सीरीज के लिए एंड आर एल सी पैरेलल सर्किट के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला इज द सेम 1/√LC. इधर भी आंसर कंक्लूड करते समय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए ऑप्शंस में थोड़ा यूनिट ध्यान से चेक कर लो जी. क्यों बोलते हो, ऑप्शंस में कभी कभी दे मे गिव यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी द हेड्स और दे मे गिव रेडियंस पर सेकेंड. थोड़ा ध्यान से चेक कर लो यूनिट्स. देखिए इन दिस एग्जांपल क्या लिख रहे हैं जी, ओमेगा. ओमेगा बोलते कैसे लिख रहे हैं, इधर यूनिट क्या है, इधर रेडियंस पर सेकेंड. आंसर सेलेक्ट करते समय थोड़ा यूनिट्स भी ध्यान से चेक कर लो. ओके, देखिए अंडर रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है जी, दिस वी गेट द XL इक्वल XC. क्यों बोलते हो, VL VC विल बी कैंसिल आउट. व्हेन नॉट द XL इक्वल XC, रिमेनिंग पार्ट इज ओनली क्या होती है इधर, रेसिस्टेंस ओनली. देखिए RLC सर्किट के लिए ऐसे दिखा सकते हैं ना, इंपेडेंस RLC सीरीज सर्किट के लिए वी कैन इंडिकेट लाइक दिस. मगर रेजोनेंस में क्या हो रहा है, इधर दिस इमेजिनरी पार्ट बिकम द जीरो. ये जीरो हो गए तो रिमेनिंग पार्ट क्या है जी, ओनली आर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. दैट्स व्हाई वी यूज वर्ड एज ए मिनिमम इंपेडेंस. मगर इधर देखिए, इधर क्या बोल रहे हैं, इधर XL इक्वल XC, मगर पैरेलल सर्किट्स में वी यूज वर्ड एज BL इक्वल BC. इधर क्या है जी, इधर एडवांटेज के लिए कैसे दिखा सकते हैं, पैरेलल सर्किट के लिए रेडियस में से BC माइनस BL. देखो जी एग्जांपल में पैरेलल सर्किट्स में दिस नेट ससेप्टेंस बिकम्स अ जीरो. जब ये जीरो हो गए ना, वी गेट दिस वन एज ए ओनली दिस पार्ट इज अ रियल वैल्यू इज अ कंडक्टेंस ओनली. ये पार्ट डिक्रीज हुआ तो व्हाट विल हैपन हियर, एडवांटेज इज अ डिक्रीजेस. वी नेम एज ए मिनिमम एडवांटेज. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड एडवांटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वी कैन राइट द I इक्वल टू V इंटू Y. नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं V/Z. ये इधर क्या हो गया जी, एडवांटेज इज अ मिनिमम. जब एडवांटेज मिनिमम हुआ तो व्हाट करंट वैल्यू आल्सो मिनिमम. मगर इधर देखिए, इधर इंपेडेंस इज मिनिमम. जब इंपेडेंस मिनिमम हुआ तो व्हाट विल हैपन, करंट इज अ मैक्सिमम. देखिए कम टू पावर फैक्टर. इधर क्या हो रहा है एग्जांपल में, करंट एंड वोल्टेज आर द इन फेज बोलते एंगल कितना होता है, एंगल जीरो बोलते पावर फैक्टर इज 1. इधर भी कैसा है, इन फेज बोलते हो पावर फैक्टर, पावर कितना होता है जी, 1. देखिए अभी कंक्लूड किया था अंडर रेजोनेंस कंडीशन VL VC मैग्नीट्यूड्स आर एग्जैक्टली इक्वल. जब VL VC मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल हुआ तो व्हाट वी गेट, V इक्वल टू VR. व्हाट वी गेट इसमें, V इक्वल टू VR. बट पैरेलल में कैसे लिखना है, इधर IL इक्वल IC. पैरेलल में अभी कंक्लूड किया ना, दिस IL इक्वल IC, देन व्हाट वी गेट रिजल्ट ऑफ दिस वन एज ए रिमेनिंग पार्ट इज I इक्वल IR. प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये सब फॉर्मूला से याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप टाइम भी सेव कर सकते हैं एग्जाम में. चलिए अगेन आई एम कंपेयरिंग द रिस्पेक्ट टू क्वालिटी फैक्ट्स. आई एम नॉट डूइंग एनी डेरिवेशन, जस्ट आई एम गिविंग कंक्लूजन्स ओनली. क्यों बोले सब कुछ रेगुलर क्लास में डिस्कस किया ना, जस्ट आई एम गिविंग द आउटलाइंस ओनली हियर. देखो जी क्वालिटी फैक्टर, सीरीज सर्किट क्वालिटी फैक्टर क्या होता है जी, XL/R. दैट्स व्हाई इधर रिवीजन करते समय भी क्या करना है, रेजोनेंस के लिए सीरीज पैरेलल दोनों के लिए फॉर्मूलास कंपेयर करें तो थोड़ा कंफ्यूजन से अवॉइड कर सकते हैं आप. देखिए और एक फॉर्मूला क्या है, बोलते तो XC/R, मगर पैरेलल के लिए इधर अपोजिट आते. देखिए R/XL. वी कैन राइट ओनली इन टर्म्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स होना, बोलते वी कैन राइट ओनली इन टर्म्स सर्किट एलिमेंट्स. पैरेलल के लिए फॉर्मूला डिफरेंट है. इधर जनरली कंफ्यूजन किधर आ रहा है बोले तो सीरीज पैरेलल का दोनों फॉर्मूलास में वेरी मच सिमिलरिटीज आर देयर. दैट्स व्हाई कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए क्या करो, रिवीजन करते समय दोनों को एक ही पेपर में लिख के दोनों कंपेयर करो. वन साइड सीरीज रेजोनेंस फॉर्मूलास, अदर साइड पैरेलल रेजोनेंस फॉर्मूलास. कंपेयर किया तो कंफ्यूजन कम कर सकते हैं. नो दिस आर सम अदर फॉर्मूलास फॉर क्वालिटी फैक्टर. सिमिलरली कम टू बैंडविड्थ. देखो सर बैंडविड्थ के लिए सीरीज सर्किट के लिए वी कैन यूज एज R/L. इधर भी यूनिट चेक कर लो. क्वेश्चन में कभी कभी बैंडविड्थ के ऑप्शंस में दे मे गिव यूनिट एज ए, देखो यूनिट ऐसा भी दे सकता है, ऐसा दे रहा बोल तो व्हाट वी आर कंक्लूडिंग हियर F2 माइनस F1. देखिए इधर एक्सपेंड किया तो F2 माइनस को कैसे लिख सकते हैं, R/2πL. यूनिट क्या है इधर, एंड दे मे गिव यूनिट एज ए रेडियंस पर सेकेंड. मगर पैरेलल सर्किट के लिए दिस बैंडविड्थ इज 1/RC रेडियंस पर सेकेंड. ओके, देखिए रेजोनेंस में स्पेशली इंपॉर्टेंट वन इज दिस टैंक सर्किट. आप पुराना पेपर्स देखें तो
आप गेट नहीं तो ईएससी और ईएससी मेंस में भी देखें तो मैक्सिमम रेजोनेंस बोले तो मेनी क्वेश्चंस सो फार हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम टैंक सर्क्यूट. पूरा रेजोनेंस में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द टैंक सर्क्यूट. क्यों बोलते मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम टैंक सर्क्यूट ओनली. इसके लिए रीजन क्या है बोल तो प्रैक्टिकल सिस्टम में इट इज हैविंग मोर एप्लीकेशंस. ओके देखिए टैंक सर्क्यूट के लिए पूरा डेरिवेशन किया तो सिंप्लीफाई करने से वी गेट द डायनेमिक इंपेडेंस. डायनेमिक इंपेडेंस इज L/RC. पूरा नेटवर्क का इंपेडेंस है ना डायनेमिक इंपेडेंस L/RC. नाउ यूनिट फॉर दिस वन इज द ओम्स. ये टैंक सर्क्यूट के लिए डेरिवेशन किया तो इट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फार्मूला. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फार्मूला. एंड इन दिस एग्जांपल इफ यू इंडिकेट रेसिस्टेंस वैल्यू, आप इधर रेसिस्टेंस वैल्यू इंडिकेट कर रहा बोल तो इट इज अ प्रैक्टिकल टैंक सर्क्यूट. इट इज अ प्रैक्टिकल टैंक सर्क्यूट. इफ रेजिस्टेंस इक्वल 0, देखो जी एग्जांपल में आई एम पुटिंग रेजिस्टेंस इक्वल 0. आप इधर रेजिस्टेंस इक्वल 0 बोल तो इट इज आइडियल टैंक सर्क्यूट. रेजिस्टेंस 0 बोल तो आइडियल टैंक सर्क्यूट. देखिए इधर आप इधर रेजिस्टेंस 0 पुट किया तो देखिए समथिंग बाय 0 बोल तो इंपेडेंस वैल्यू कितना होता है इधर इन्फिनिट. फॉर आइडियल टैंक सर्क्यूट के लिए डायनेमिक इंपेडेंस इज इन्फिनिट. आप इधर R इक्वल 0 पुट किया तो व्हाट रिमेनिंग पार्ट इज ओनली दिस पार्ट. दैट मीन्स इट इज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फार्मूला. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फार्मूला करस्पॉन्ड टू आइडियल टैंक सर्क्यूट. आइडियल टैंक सर्क्यूट. ओके चलिए now take the screenshot of this one question. कौन है नो Chetalwaji, try to do the conversation related to the topic. Okay, a discount code ये क्या है जी? Don't ask any irrelevant questions. Completely focus on the subject oriented doubts. Please, special request. Okay. Read the question. अब देखिए नो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल देखो जी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दिया, क्वालिटी फैक्ट दे दिया, सी वैल्यू ऑल्सो पता है. क्या चाहिए जी आपको? करंट वैल्यू एट रेजोनेंस कंडीशन. देखो जी अभी क्वालिटी फैक्ट के लिए फार्मूला डिस्कस किया था. ऐसे लिख सकते ना वन ऑफ द फार्मूला फॉर दिस 1/ω/RC. वन ऑफ द फार्मूला इज 1/ω/RC. अभी डिस्कस किया था. सीरीज सर्किट के लिए वन ऑफ द फार्मूला दिस वन. देखिए Q इक्वल टू ओमेगा एक्सपेंशन क्या लिख सकते हैं इधर 2πf RC. देखो जी क्वालिटी फैक्टर कितना दिया इधर क्वेश्चन में 50. क्वालिटी फैक्टर 50. देखो जी फ्रीक्वेंसी कितना दिया जी 175 किलोहर्ट्ज. आर वैल्यू नहीं पता है. कैपेसिटेंस कितना है जी? कैपेसिटेंस 320. चेक कर लो. ऐसे लिख सकते ना. सिंप्लीफाई करे तो व्हाट इज अननोन इज ओनली आर वैल्यू. बोलो जी आंसर्स बोलिए. आर वैल्यू बोलिए. व्हाट इज आंसर फॉर आर बोलिए. गिव रिप्लाई. Find the R value. चेक करो. मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग 56.84. चेक करो जी. इज इट करेक्ट? चेक करो जी. मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग 56.84 ओम्स. चेक करो जी एक बार. आर वैल्यू चेक कर लो. 56.84. ओके
नाउ आर वैल्यू आ गया, क्या चाहिए आज आपको? करंट वैल्यू एट रेजोनेंस कंडीशन, दैट मीन्स एट एफ इक्वल टू एफ नॉट। एट एफ इक्वल टू एफ नॉट क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू वी बाई आर। क्यों बोलते हो? अंडर रेजोनेंस कंडीशन व्हाट इज इंपेडेंस इक्वल टू आर। देखो जी वोल्टेज वैल्यू कितना है इधर 0.97, इधर आर वैल्यू कितना आ गया जी 56.84। चेक कर लो जी। 17.06 मिली एम्पियर्स। ओके चेक कर लो। मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग 17.06 मिली एम्पियर्स। कौन दिया जी फर्स्ट आंसर? रोशन कुमार गिव द फर्स्ट आंसर दैट करंट। लक्ष्मण, आलमंड, ओपी and resistance Chattopadhyay given, Lakshman also given. Oh, somebody requesting for the previous slide for taking screenshot. Okay, very no problem. I'll give. ले लो screenshot ले लो, होना बोले तो screenshot ले लो जी। somebody requesting the previous slide ले लो जी, होना बोल ले लो screenshot ले लो। Okay, AB screenshot ले लो। somebody requesting is quality factor formulas, somebody requesting quality factor formula screenshot के लिए। Okay, this answer same ना 17.06 milliamperes। very good। प्रिंस कुमार कौन है? नो गोमित प्रसाद, सौरव, तीना, चट्टोपाध्याय, आलमंड, लक्ष्मण। वेरी गुड। गणेश गुड। चलिए रीड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ो जी, क्वेश्चन पढ़ो जी। Take a screenshot of this question, I'll explain. Okay, चलिए। Now what is asking the question में क्या पूछ रहे जी? is asking the x value। क्या चाहिए जी? इज आस्किंग एक्स वैल्यू सच दैट, कंडीशन क्या है जी? रेजोनेंस। कंडीशन क्या है? रेजोनेंस। ओके देखिए हमेशा एक स्टेटमेंट याद रख लो, अंडर रेजोनेंस कंडीशन सर्क्यूट बिहेव्स एज ए रेसिस्टिव सर्क्यूट। सर्क्यूट रेसिस्टिव क्यों बोल रहे हैं? रेजोनेंस में क्या होता है? करंट इज इन फेज। इफ यू बिहेव रेसिस्टिव मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन कंक्लूड एज ए इमेजिनरी पार्ट द इक्विवेलेंट इंपेडेंस इक्वल 0। एट रेजोनेंस कंडीशन इमेजिनरी पार्ट द इक्विवेलेंट इंपेडेंस इक्वल 0। देखो जी एग्जाम्पल में फर्स्ट कैन फाइंड आउट कंप्लीट इक्विवेलेंट इंपेडेंस फॉर दिस वन। एग्जाम्पल में फर्स्ट कैन फाइंड आउट रेस्पेक्ट कंप्लीट इक्विवेलेंट इंपेडेंस फॉर दिस वन। आप इधर इक्विवेलेंट इंपेडेंस फाइंड आउट किया तो जनरल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? इधर जेड इक्विवेलेंट इक्वल देखो जी नाउ Z1 Z2 बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ऐसा लिख सकते हैं ना। क्यों बोलते हैं? एग्जाम्पल में Z1 Z2 दोनों कैसे है? पैरेलल। दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्टेड सीरीज टू Z3। आप इधर रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट किया तो देखो जी Z1 वैल्यू कितने इधर 20 प्लस J10। व्हाट अबाउट दिस Z2 इज 10 माइनस J30। प्लस Z3 वैल्यू, Z3 कितना है इधर 30 प्लस JX। क्लियर ना? अब इधर सिंप्लीफाई कर सकते ना आप, अब ये सिंप्लीफाई कर सकते ना। देखो जी ये Z इक्वलेंट नो रियल वैल्यू कितना होता है इधर 30। What is this imaginary value? Imaginary value how much here? 20.
इफ़ यू मल्टीप्लाई दीज टू कितना होता है इधर 200 जे इंटू जे जे स्क्वेयर, दोनों मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है जी 300 रियल वैल्यू, इमेजिन वैल्यू. नो व्हाट एवर दिस वन इज माइनस जे Hmm. 600. What about this one is like j 100. सर दिखा सकते ना 30 प्लस jx. चलो लो जी, आप इधर सिंप्लीफाई किया तो कैन रेड इसमें से 500 माइनस 500 चेक करो जी, ऐसा लिख सकते ना. चेक करो, अभी तक स्टेप चेक कर लो जी एक बार. कैन आई सिंप्लीफाई लाइक दिस जेड इक्वलेंट कैन आई सिंप्लीफाई लाइक दिस, चेक कर लो जी एक बार. Okay, very good. Okay, red color is not visible, don't worry, I will use only yellow color. आप टेंशन मत लो, I will use only yellow colors. Yellow color नहीं तो I will use the other green color, I will use, don't worry. हाँ देखो जी, सिंप्लीफाई करने से you get like this. Now in this one here can like this here 500 ये सिंप्लीफाई किया तो ऐसा लिख सकते ना. If I take the 10 is the common in the numerator denominator, we can write this as 50 minus j50. We can write the 3 minus j2. To separate the real and imaginary part in this one, can you multiply the conjugate of this one? 3 plus j2, 3 plus j2. देखो जी, I have taken as the 10 is the common in the numerator denominator. Simplify करने से ऐसा लिख सकते हैं. From this one to separate real and imaginary, I multiply the conjugate of this one. What is conjugate of this one? 3 plus j2 plus 30 plus jx. In this example, can you multiply these two? By multiply these two, can you simplify it? I gave all the steps also. Can you separate the real part and imaginary part? पूरा simplify करके बाद I gave all the steps. Can you simplify further? Separate real part and imaginary part. Separate करने के बाद what do you have to do? Imaginary of equivalent impedance should be equal to 0. पूरा मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करके पूरा इमेजिनरी पार्ट रियल वैल्यू सेपरेट करो. इक्वेट इमेजिनरी पार्ट इक्विवेलेंट इंपेडेंस 0. इक्वेट इमेजिनरी पार्ट इक्विवेलेंट इंपेडेंस 0. सिंप्लीफाई करो, यू गेट द रिएक्टेंस. चेक करो जी, एनी आंसर्स? ओके, साक्षी शर्मा गॉट आंसर, रितु गॉट आंसर, दीपक गॉट आंसर, रोशन कुमार आल्सो गॉट आंसर, भास्कर गोपी आल्सो गॉट आंसर. चट्टोपाध्याय आल्सो गॉट आंसर, सुनील कुमार आल्सो गॉट आंसर. वेरी गुड. 3.85. चेक कर लो जी, आई गिव ऑल द हिंट्स. इसमें क्या करो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो. करने के बाद क्या करना है, आप इक्वेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट इंपेडेंस. क्यों, मतलब रेजोनेंस में सर्किट कैसे बिहेव करते हैं, रेसिस्टिव. इक्वेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट इंपेडेंस टू 0. सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से वी गेट द नेट रिएक्टेंस. वेरी गुड. नाउ कृष्णा, गोमती, प्रसाद, साहू. स्पेशली थोड़ा ऐसे सर्किट्स में कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि मतलब हर एक स्टेप में रियल वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू दोनों रहते हैं. समटाइम्स दे मे गिव मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल्स आल्सो. थोड़ा कन्वर्शंस भी थोड़ा ध्यान से करना है जी. पोलर फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म टू पोलर फॉर्म. Very good. 3.85. Now let us see some questions from theorems.
इफ यू कम टू द सुपरपोजिशन थ्योरम, जो सुपरपोजिशन थ्योरम है ना, when the network is having the more than one source, response in any one of the branches is equal to algebraic sum of the responses caused by individual sources. That means sir, as per superposition theorem, every time only one source is operated. If you operate a current source, voltage source replaced by short circuit. If you activate the voltage source, current source replaced by open circuit. Total response equal to algebraic sum of the responses. मगर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है? नेटवर्क शुड कंसिस्ट ऑफ लीनियर बाइडायरेक्शनल एलिमेंट्स, लीनियर एंड बाइडायरेक्शनल एलिमेंट्स. नाउ सम ऑफ द लिमिटेशंस correspond to this superposition theorem is देखिए, if the network is having, if any two ideal voltage sources are in the parallel, superposition theorem cannot be applied. If two ideal voltage sources are current in the parallel, superposition theorem cannot be applied. If two ideal current sources are current in series, again the superposition theorem cannot be applied. Again here also superposition theorem cannot be applied. क्यों मतलब देखिए, मान लो if you connect any resistor, I'll give the hints also. मान लो you connect any resistor here RL, देखो जी, मान लो सपोज इफ यू वांट टू अप्लाई सुपरपोजिशन फॉर थ्योरम फॉर दिस वन, सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करना है? हर एक बार एक ही सोर्स को एक्टिवेट करना है. इफ यू एक्टिवेट द वोल्टेज सोर्स, अदर वन रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्क्यूट, देखिए इधर वोल्टेज सोर्स V1, इधर क्या है? शॉर्ट सर्क्यूट वोल्टेज कितना है? इधर 0, इधर तो वोल्टेज 0, इधर कितना है? इधर V1. इन द पैरेलल सर्क्यूट वोल्टेज अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस शुड बी इक्वल. मगर इधर कैसा है? वन इज 0, वन इज V1. दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड एज इट इज नॉट सैटिस्फाइंग KVL. विथ रेस्पेक्ट KVL, वोल्टेज अक्रॉस ऑल द पैरेलल ब्रांचेस शुड बी इक्वल, मगर इधर अनइक्वल है. दैट्स व्हाई जब दो आइडियल सोर्सेस आइडियल वोल्टेज से पैरेलल में है तो सुपरपोजिशन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड. इधर भी देखिए सेकंड केस, इफ यू एक्टिवेट द I1 सोर्स, I2 को क्या करना है? इधर ओपन सर्क्यूट, I2 क्या करना है? इधर ओपन सर्क्यूट. RL इधर क्या है? इधर ओपन सर्क्यूट, इधर क्या है? इधर I1 करंट. ओपन सर्क्यूट में करंट कितना रहता है? इधर 0. ओपन सर्क्यूट में करंट कितना रहता है? इधर 0. सीरीज सर्क्यूट में क्या होना है? करंट द ऑल एलिमेंट शुड बी सेम, मगर क्या है? इधर करंट 0, करंट I1. क्या हो रहा है इधर? KCL इज नॉट सेटिस्फाइंग. KCL इज नॉट सेटिस्फाइंग. जब दो करंट सोर्सेस सीरीज में है तो KCL कैनॉट बी अप्लाइड. That's why here for these two type of the cases our superposition theorem cannot be applied. Okay, come to some more points. देखिए, if you come to superposition theorem, our superposition theorem valid for the to find responses. देखो जी, our superposition theorem is valid to find responses of either current or the voltage. It cannot be applied for power. मगर in some of the special cases, superposition theorem can be applied for calculation power. In that one special case क्या है बोल तो, जब दो सोर्सेस हैं तो if frequencies are unequal, दोनों का frequency unequal है तो we can conclude that one as a total power equal to P1 plus P2. These are some special cases. जनरल स्टेटमेंट तो वी कैन नॉट अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, मगर वन स्पेशल केस क्या है बोल तो, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी अनइक्वल है तो वी कैन से टोटल पावर इक्वल P1 प्लस P2. ये भी देखिए नेक्स्ट, ये देखिए एग्जाम्पल में दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, एंगल भी ऑल्सो सेम. जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, एंगल सेम है तो टोटल पावर निकालने के लिए वी कैन यूज द जनरल फार्मूला रूट ऑफ, we can use the general formula this one. If both are in the current directions are same, we can give positive sign. If current directions are opposite, we can give the negative sign. Here we देखिए next one is now in this example देखो जी, one is a sin t, other one is a cos t. आप इधर cos को होना बोल तो sin में कन्वर्ट कर सकते हैं ना.
कांस को होनाबल साइन में कन्वर्ट कर सकते ना. वी कैन राइट इसमें से देखिए एग्जाम्पल में वी कैन राइट इसमें से साइन टी प्लस 90. कैसा लिख सकते हैं? साइन टी प्लस 90. देखिए इधर फर्स्ट सोर्स एंड सेकंड सोर्स दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्रीज. जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो एंड एंगल बिटवीन द टू सोर्सेज 90 डिग्रीज. एंगल बिटवीन द टू सोर्स 90 डिग्रीज. फॉर दैट केस अगेन वी कैन राइट इसमें से टोटल पावर इक्वल P1 plus P2. Again we can conclude total power equal P1 plus P2. These are some special cases. Okay. चलिए ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो जी. आई विल एक्सप्लेन. स्क्रीनशॉट ले लो. आई विल एक्सप्लेन. ओके चलिए. नाउ फॉर दिस एग्जांपल क्या बोल रहे हैं इधर? इन द डेटा इटसेल्फ V नॉट इज गिवन. क्वेश्चन में और एक स्टेटमेंट दे दिया इधर. द वैल्यू ड्यू टू करंट सोर्स. जब ओनली करंट सोर्स है तो इज आस्किंग व्हाट इज द V नॉट वैल्यू. जब दोनों सोर्सेस हैं तो V नॉट इज ऑलरेडी गिवन. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? ओनली करंट सोर्स है तो V नॉट कितना है? ओनली करंट सोर्स V नॉट कितना है? इधर करंट सोर्स वैल्यू भी नहीं पता है मगर वोल्टेज सोर्स पता है. देखिए जब दोनों सोर्सेस हैं तो टोटल रिस्पांस पता है आपको. ओनली वोल्टेज सोर्स इज देयर. कैन यू फाइंड आउट द रेस्पेक्ट टू V नॉट वैल्यू फर्स्ट? चलिए चेक करेंगे. फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इफ यू एक्टिवेट द वोल्टेज सोर्स क्या कितना है इधर? 10 वोल्ट्स 2 ohms. देखो जी जब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते समय इफ यू एक्टिवेट द वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स रिप्लेस बाय ओपन सर्क्यूट. हाँ मगर जो डिपेंडेंट सोर्स है ना, डिपेंडेंट सोर्स इज रिमेन सेम एज ओरिजिनल सर्क्यूट. उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. डिपेंडेंट सोर्स रिमेन सेम एज द ओरिजिनल सर्क्यूट. क्या बोलते हो? दैट ओपन सर्क्यूट शॉर्ट सर्क्यूट कॉन्सेप्ट्स वैलिड ओनली फॉर द इंडिपेंडेंट सोर्सेस. Dependent source remains same as the original circuit. 0.5 V naught. जो रेस्पॉन्स आ रहे ना आई नेम V नॉट डैश 4 ohms. क्या कर रहे हैं इधर? करंट सोर्स ओपन सर्क्यूटेड. मगर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते समय डिपेंडेंट सोर्स रिमेन सेम एज द ओरिजिनल नेटवर्क. इधर भी कैलकुलेशन थोड़ा आसानी से करने के लिए कैन आई यूज द एप्लीकेशन फॉर द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. जो करंट सोर्स है ना, कैन यू कन्वर्ट दिस वन इनटू इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स? फोर ओम्स. ये कितना है? रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है इधर? 1. व्हाट अबाउट दिस वन? देखो जी एरो मार्क के लिए गिव द पॉजिटिव साइन. 0.5 V नॉट डैश ऐसा लिख सकते ना. चलिए नो फॉर दिस वन कैन राइट द रेस्पेक्ट टू KVL इक्वेशन. लेट अज्यूम द करंट ऑफ दिस मींस I. इधर KVL इक्वेशन लिख सकते ना. देखो जी बाय KVL करस्पॉन्ड दिस एग्जांपल बाय KVL. बाई KVL वोल्टेज वैल्यू कितना है जी? 10. जो I है ना, I फ्लोस इन 214 बोले तो I वैल्यू व्हाट एवर दिस वन इज अ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल
कैसे लिख सकते हैं, -0.5 वी नॉट डैश, ऐसा लिख सकते हैं ना. दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दिस एज ए, कितना है अननोन्स इधर, थोड़ा ध्यान से देखे तो correspond this example, one unknown is a I, other one is a V naught dash. अब V naught dash चेक करेंगे. देखो जी V naught dash मीन्स वोल्टेज अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर. 4 ओम रेजिस्टर में करंट कितना जा रहा है, I. जो V naught dash है ना, V naught dash है ना वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर. 4 ओम रेजिस्टर में करंट कितना जा रहा है इधर, I करंट. इधर ले जाके इधर पुट कर सकते हैं ना. कैन लाइक दिस इज अ 7I. देखो जी V naught dash इक्वल कितना लिख सकते हैं, 4I. 4 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5 की क्या लिख सकते हैं इधर, वी गेट इसमें 2I. आप इधर सिंप्लीफाई करने से वर्ड I इक्वल हाउ मच, 2 एम्पियर्स. चेक कर लो, I इक्वल 2 एम्पियर्स. जब I इक्वल 2 एम्पियर्स है तो V naught dash कितना होता है इधर, 4 इंटू 2, 4 इंटू इज 8 वोल्ट्स. चेक करो जी, स्टेप्स चेक करो, एनी अदर आंसर्स अदरवाइज चेक करो जी. क्लियर, तो अभी करेक्शन है तो बोलिए. V naught dash कितना है जी, 8 वोल्ट है ना. कितना है जी, I इक्वल टू, आंसर करेक्ट ना, 8. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. देखिए V naught dash आ गया. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखो जी. इन द क्वेश्चन व्हाट इज आस्किंग एज ए, देखो जी क्वेश्चन में V naught वैल्यू दे दिया. इन द क्वेश्चन इटसेल्फ V naught इज गिवन. देखो जी एज पर सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसा लिख सकते हैं ना, V naught इक्वल V naught डैश प्लस V naught डबल डैश. सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, टोटल रेस्पॉन्स इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द रेस्पॉन्सेस. देखो जी V naught वैल्यू कितना है जी, 11.2. V naught डैश बोल तो रेस्पॉन्स ड्यू टू वोल्टेज सोर्स कितना आ गया इधर, 8. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, V naught डबल डैश क्या है, देन रेस्पॉन्स ड्यू टू करंट सोर्स. V naught डबल डैश क्या है, रेस्पॉन्स ड्यू टू करंट सोर्स. आप इधर सिंप्लीफाई किया तो देन व्हाट यू गेट, इसमें से V naught डबल डैश इक्वल टू व्हाट द आंसर फॉर दिस इज 3.2 वोल्ट्स. कितना है जी, 3.2 वोल्ट्स. वेरी गुड. हाँ डिपेंडेंट सोर्स कर सकते हैं जी, ऑलरेडी कंक्लूडेड ना. Stone's transformation can be applied for dependent source and independent source. Already taken one example also. I can give one note. I can give one statement also there. कर सकते जी, कर सकते. Okay dear students, shall we take the break for 10 minutes? 10 minutes है, but come. Is it sufficient? 10 minutes? Many students are requesting for break. टेन मिनट्स और 15 मिनट्स, कितना चाहिए आपको? ओके, कम फास्ट. ओके कम फास्ट, 10 मिनट्स. थोड़ा लाइव सेशन है ना. Okay, take the break. Take
Take the break for 15 minutes. Many students are requesting for 15 minutes. Okay. Take the break for 15 minutes. 1-5. Take the break for 15 minutes. 15 minutes. Okay. Come fast.
Okay, dear students, shall we start? स्टार्ट करेंगे. आ गए तो रिप्लाई दे दो एक बार. स्टार्ट करेंगे. ओके, आ गए तो एक बार वो लाइक बटन प्रेस करो, नहीं तो आई कैन आइडेंटिफाई. ओके, चलिए. Next, let us go to this Thevenin's theorem. If whenever any complex network is there, whichever is having the linear bidirectional elements, any complex network which is having the linear bidirectional elements, that entire complex network can be replaced by single equivalent circuit. That single equivalent circuit consists of the equivalent voltage source. देखिए, that equivalent voltage source we can name as a VThevenin. Other name for the VThevenin is the open circuit voltage in series with equivalent resistance. And this theorem can be applied for both AC as well as the DC circuits. Now DC means we focus on resistance, in the AC we focus on the impedance. By using the single equivalent circuit, now we can find out response in the load. But if you come to the load, we can go for any one. We can go for linear load or non-linear load. Any combination load can be selected. Let us take one simple example. A question padho ji. Let us solve one question. I hope now it is visible na clearly. Check kar lo. Oh, Chetan Kumar Sharma, welcome Chetan Kumar Sharma. Good evening, Amit Kumar, good evening. Okay, very good. देखिए इधर. Now correspond to this particular example. देखो जी, complex network can be replaced by a single equivalent circuit. Single equivalent circuit means I am going for Thevenin's theorem. Now R Thevenins and V Thevenins. Current in the load resistor is I. देखो जी, correspond to this particular example. Can you write the KVL equation for this one? Voltage across the load resistor is a V. This one is a V. For this one, if you write the KVL equation, we can conclude as this V Thevenin is equal to, what the voltage drop is I RTH. Plus, what the voltage across this element is a V. देखो जी, I developed a KVL equation for this one. Source voltage कितना है इधर V. Voltage drop कितना है I RTH. Voltage drop is a V. Now come to given data. देखो जी, फर्स्ट केस में V वैल्यू कितना है इधर 3.
देखो जी फर्स्ट केस में वी वैल्यू 3, करंट कितना है इधर 1.5 RTH प्लस वी वैल्यू कितना है जी 3। देखिए सेकंड केस क्या है जी, नो आई वैल्यू कितना है इधर 1 RTH प्लस और वी वैल्यू कितना है इधर 8। देखो जी वी गॉट द टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके देखिए इधर, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके वी थेवेनिन आर थेवेनिन निकाल सकते ना, चेक कर लो जी। सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, फाइंड आउट द वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन, गिव द आंसर्स। आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड, बोलो जी आंसर्स। वी थेवेनिन आर थेवेनिन बोलिए, आंसर्स बोलिए। देखिए क्वेश्चन में आपको दे दिया ही, देखो V बोले तो वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस, I बोले तो करंट इन द रेसिस्टेंस। इधर R का मीनिंग कंफ्यूजन मत हो जाओ। इधर RL बोल तो R, वोल्टेज अक्रॉस दिस R इज अ V, करंट कितना है I डेवलप्ड केवीएल इक्वेशन। देखो जी फर्स्ट केस में कितना है I वैल्यू 1.5, V वैल्यू कितना है जी 3। सेकेंड केस में I वैल्यू कितना है जी 1 एम्पियर, नो V वैल्यू कितना है 8। दोनों सॉल्व करके V थेवेनिन आर थेवेनिन निकाल सकते ना, चेक करो जी। निकालने के बाद क्या करना है, इधर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, व्हेन R इक्वल टू 6 ohms, I के लिए जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते ना, I के लिए जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते ना, वी कैन राइट दिस I इक्वल टू V थेवेनिन बाय R थेवेनिन प्लस R। Anybody answers that R Thevenin, V Thevenin, give a reply. Anybody? R Thevenin, V Thevenin, anybody give a reply? $18 and 10. Check kar lo. Many students are saying 18 volts and 10 ohms. Shall I confirm these answers? Check kar lo. Many students are saying 18 and 10. 18, 10. Okay. Now voltage is 18. What about the resistance is 10? इधर करंट रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, इधर 6। रेजिस्टेंस वैल्यू कितना दिया जी, न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, 6। दैट मीन्स 18/16। चेक करो, इज इट करेक्ट? 1.125। इज इट करेक्ट? 1.125 एम्पियर्स। चेक करो जी एक बार, 1.125 चेक करो जी एक बार, इज इट करेक्ट? ओके, वेरी स्टूडेंट गिव रिप्लाई, सौम्या सिंह, निखिल, गौतम दास, प्रवन, गोमती प्रसाद, गणेश, वरप्रसाद, रितु, सौम्या, वेरी गुड, वेरी गुड। Okay, Nikki Kumari, very good. Same now? Good. Now read this question. Read this question. देखिए क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन पढ़ो। ओके, अब ना बोलते आई विल एक्सपेंड दिस वन। Okay, very good, Soumya, Ramesh, Reshma. Reshma, you got 11.24, 11.24, कुछ गड़बड़ किया है जी, चेक कर लो। Okay, let's check it out. Now for this particular example, what is our requirement is a equivalent resistance, Thevenin's equivalent resistance with respect to A and B.
While finding Thevenin's equivalent resistance, what is the procedure? Deactivate all the independent sources. देखो इधर वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, जो वोल्टेज सोर्स है ना, वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट. मगर आर थेवेनिन फाइंड आउट करते समय जो डिपेंडेंट सोर्स है ना, इट इज रिप्लेस्ड बाय नाइदर ओपन सर्किट नॉट शॉर्ट सर्किट. इट इज रिप्लेस्ड बाय नाइदर ओपन सर्किट नॉट शॉर्ट सर्किट. फॉर दिस एग्जांपल इट इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट. अब देखिए इधर ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, and 2 ohms 20 ohms, again whatever this part is also short circuit. It is already short circuit, but the short circuit and 20 ohms both are in the parallel बोलते तो equivalent resistance कितना होता है इधर? 0. equivalent resistance is 0. If equivalent resistance is 0, can you develop the simplified figure for this one? Can you develop the simplified figure for this one? Now correspond to this example here, 20 ohm short circuit in the parallel, equivalent resistance is 0. Equivalent resistance 0. Then here whenever the dependent source is there, one approach is across the AB terminals. Now across this AB points, assume the any source. One of the approach is across the AB terminals, assume the any source. मान लो if I select the current source of the 1 ampere, जो AB है ना, AB points में assume the any source, voltage source, current source, कुछ भी ले सकते हैं आप. मान लो आप करंट लिया तो कैलकुलेशन करने से वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी. कैलकुलेशन करने से वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी. देखिए इधर बाय नोइंग द वोल्टेज एंड करंट, नाउ वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस. बाय नोइंग द वोल्टेज एंड करंट वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस. देखिए इन द पैरेलल सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस आर द सेम. इन द पैरेलल सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस आर सेम. देखो जी ऐसे लिख सकते हैं इधर Vx/9, Vx by 9 outgoing. What is the 5 Vx also outgoing? मगर what is 1 ampere is the incoming current. 1 ampere is the incoming current. 1 ampere is the incoming current. इधर simplify करें तो can I write this one as a चेक करो जी इधर simplify करके can you find out Vx value in this one? Can you find out Vx value? चेक करो जी, आप रीअरेंज किया तो कैन इट इसमें 9/46 चेक कर लो एक बार. आई थिंक आप इधर रीअरेंज किया तो वी गेट आई थिंक अप्रॉक्सिमेट 9/46. व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट इज आर थेवेनिन्स. व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर थेवेनिन्स इज अक्रॉस ए बी टर्मिनल्स वोल्टेज कितना है इधर Vx, इधर करंट कितना है इधर Is. नाउ व्हाट इज Vx इज 9/46. व्हाट करंट वैल्यू कितना लिया इधर 1 एम्पियर. आप इधर सिंप्लीफाई करने से वी गेट इसमें से 9/46. चेक करो जी, इज इट करेक्ट आंसर 9/46. चेक कर लो एक बार. चेक कर लो जी एक बार. Is it correct? Okay, very good. D is the correct option. Very good. Very good, Rahul Gupta. Very good, Madhavi, Chattopadhyaya, Prabhav, Ganesh, Soumya, Rahul. Very good. देखिए again if you come to this Norton's theorem here, any complex network which is having the linear bidirectional elements, it can be replaced by a single equivalent circuit. Single equivalent circuit consists of the current source in parallel with the equivalent resistance.
procedure of finding equivalent resistance in the Thevenin's theorem, Norton's theorem, both are the same. देखिए इधर in this Norton's theorem here we can call the Norton's current, we can also call the Norton's current as a short circuit current. Now procedure of finding equivalent resistance in the Thevenin's theorem and Norton's theorem both are the same. But if you come to the load, देखो जी load can be selected, we can go for linear or non-linear, कोई भी load ले सकते हैं आप. You can go for linear load, नहीं तो non-linear load, any load can be selected. Again this theorem also can be applied for both AC as well as the DC. Equivalent circuit correspond DC, equivalent circuit correspond to the AC. Equivalent circuit correspond to the AC. AC means we go for equivalent impedance. Let us take one example correspond to Norton's theorem. A question screenshot ले लो जी. I hope now it is visible ना. Some of the students saying it is not visible. अब check कर लो जी. Is it visible ना? I increase the size. माधवी द्विवेदी, देखो जी माधवी जी टेस्ट सीरीज पूरा लिखने के बाद हैव डन द रिव्यू वाई यू गॉट द लेस मार्क्स. रीज़न क्या है? देखिए सम ऑफ द कॉमन रीजन्स आर दी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक्स. सेकेंड वन taking much times for solving each question. Third one is a not understanding language. Fourth one is a not understanding concept. Fifth one getting tension. कुछ common reasons है. Do you have any reason in this one? कुछ तो भी reason है तो correction करने की कोशिश करो जी. Okay? Okay, Prince Kumari. Oh, visible, don't worry. Okay, now Prince Kumari visible. Okay. Question देख लो जी एक बार. कौन है नो चितिरवाई जी? थोड़ा देख लो जी, सबको विजिबल है, थोड़ा देख लो फ्रॉम योर साइड भी, थोड़ा सबको देख रहे जी, सबको दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा देख लो. देखो जी इन दिस वन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इज द शॉर्ट सर्क्यूट करंट. नॉर्थन्स करंट बोलते शॉर्ट सर्क्यूट करंट. देखो जी इफ आई टेक दिस वन एज ए ग्राउंड, मान लो नोड वोल्टेज फॉर दिस इज वी ए. देखो जी विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड पोटेंशियल व्हाट द पोलैरिटी फॉर दिस वन इज द प्लस. देखो जी ए ब्रांच करंट क्या है इधर? नॉर्थन्स करंट. ए ब्रांच करंट पता है 2 एम्पियर्स. नो लेट अस फाइंड आउट दिस ब्रांच करंट. दिस ब्रांच करंट गिव द नेम एज I1 करंट. अब थोड़ा ध्यान से देखो जी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड ग्राउंड, पोटेंशियल VA एंड ग्राउंड, पोटेंशियल डिफरेंस दीज 2 पॉइंट्स बोथ आर द सेम. आप ये ग्राउंड से देखे तो ये पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितना आता है जी? 4 वोल्ट्स. वोल्टेज है 4, मगर पोलैरिटी ध्यान से देखना है इधर, चेक कर रहा है इधर. विच वन इज कनेक्टेड हियर? नेगेटिव साइन इज कनेक्टेड, देन व्हाट इज VA इक्वल टू -4. समझ रहे ना? पोटेंशियल डिफरेंस बट दिस पॉइंट टू ग्राउंड वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट्स, मगर विच वन कनेक्टेड है? नेगेटिव, दैट्स VA इज -4. हाँ अब I1 निकालेंगे. इधर I1 निकालने के लिए देखो जी I1 के लिए ऐसे लिख सकते ना. नाउ देखिए प्लस प्लस सब्ट्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं? दिस VA माइनस 4V0. ये रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है जी? 1 + 2. रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है? 1 + 2. हाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? फॉर दिस एग्जांपल देखो जी इन प्लेस ऑफ V0 बोलते हो वोल्टेज इक्वल टू 2 ओम रेजिस्टेंस. V0 मींस वोल्टेज इक्वल 2 ओम रेजिस्टेंस. 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रही है इधर? I1 करंट. वी रेड इसमें देख 2I1. देखो जी एग्जांपल में VA वैल्यू पता है आपको. VA वैल्यू कितना है जी? -4. नो V0 वैल्यू कितना है जी? 2I1/3. हाँ देखो जी ये सिंप्लीफाई करके पहले I1 निकाल सकते ना. हाँ गिव द आंसर्स. आई वांट रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. समझ रहे ना? पहले I1 बोलो जी आंसर्स.
एनीबडी I value? नो I1 निकालने के बाद कैन यू अप्लाई KCL एट दिस पॉइंट? देखो जो 2 इज इनकमिंग करंट और द I1 is also incoming current. I1 also incoming current. Sorry, 2 is incoming current. I1 is outgoing current. Sorry, this one. देखो जी एग्जाम्पल में 2 is incoming current, मगर जो I1 है ना, I1 is outgoing current. What about this I Nortons? I Nortons also outgoing current. अब फाइनल आंसर बोलो जी. पहले क्या करो, I1 निकालो. पहले I1 निकालो. I1 निकालने के बाद ट्राई टू फाइंड आउट द नॉर्थन्स करंट. Check करो. Somebody is saying 2.36. Is it correct? Norton's current is 2.36. Check कर लो जी. Is it correct? $2.36. Very good. Very good. Very good. Okay. पहले क्या करो, पहले I1 निकालो. सिंप्लीफाई करके I1 निकालो. पहले क्या करो, I1 निकालो. I1 निकालने के बाद I1 इधर पुट करो जी. I1 पुट किया तो नॉर्थन्स करंट निकाल सकते. ओके. Next, let us see some points correspond to this maximum power transfer theorem. देखो जी, as per the maximum power transfer theorem, load resistance is a variable. If you change the load resistance value every time the current changes, if you change the load resistance value every time the current changes, whenever the current changes, power displayed, the load resistance also changes. At one particular value, the RL, power delivered from source load is a maximum. Source load is a maximum. Then here condition for this maximum power is a RL equal to RS. This RS means R Thevenins. That means if any complex network is given, if they are asking to find out the maximum power, first you have to simplify the complex network as a single equivalent circuit. Single equivalent circuit means I am using application of Thevenin's theorem, V Thevenin's and R Thevenin's. In that single equivalent circuit, that resistance only we name it the source resistance. That voltage only we name as a source voltage. देखिए आप पुराना पेपर्स देखें तो so far many questions have been asked especially from the Thevenin's theorem. Second one is the maximum power transfer theorem and third one is the Norton's theorem. आप पुराना पेपर देखें तो maximum questions have been asked especially from Thevenin's theorem. The Thevenin's theorem also, especially the dependent source problems, are very very important. In the maximum power transfer theorem also indirectly we use the application of Thevenin's theorem only. That's why आपके इधर तो भी कन्फ्यूजन है तो Thevenin's theorem में जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो Thevenin's theorem के लिए. क्यों बोलते मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आल्सो यूज एप्लीकेशन Thevenin's theorem ओनली. अगेन पूरा नेटवर्क सिंप्लीफाई करने के बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इज RL इक्वल RS. इधर और एक पॉइंट है, कुछ क्वेश्चन में क्या करते हैं उन्होंने लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट अदर रेजिस्टेंस वेरिएबल. देखिए जब लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट अदर रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करना बोले तो हमेशा लोड शुड बी वेरिएबल. इधर डेरिवेशन करने से मैक्सिमम पावर इन द लोड रेजिस्टेंस इज V square by 4RL. For that one, if you find out efficiency will be approximately equal to 50%. That efficiency will be approximately equal to 50%. देखिए in the maximum power transfer theorem, especially you have to pay more attention whenever you are solving AC maximum power transfer theorem. क्यों बोले तो देखिए AC में क्या होता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर. लोड इम्पिडेंस बोल तो कैसे भी कर सकते हैं. दिस वन लोड इम्पिडेंस मीन्स वी कैन राइट द RL प्लस JXL.
मगर एसी में क्या होता बोले तो एज पर सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, आप वेरिएबल चेंज किया तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर चेंजेस according to selection of these variables, condition for maximum power changes. Generally the possible conditions problem solve करते समय वन कंडीशन था, मान लो आर एल एक्सएल दोनों भी वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल है तो वी गो फॉर कंडीशन जेड एल इक्वल जेड थेवेनिन कॉन्जुगेट. इसके लिए सिंप्लीफाई करें तो अब मैक्सिमम पावर इज वी स्क्वायर में 4 आर एल, एफिशिएंसी विल बी 50%, एफिशिएंसी विल 50%. मगर सेकंड केस में ओनली आर एल इज वेरिएबल. देखो जी ओनली आर एल वेरिएबल बट एक्सेल है, एक्सेल इज अ कांस्टेंट. फॉर दैट वन इधर सिंप्लीफाई करने से वी गेट द कंडीशन लाइक दिस, वी गेट कंडीशन लाइक दिस. नो कभी कभी ऑप्शन में क्या करते बोले तो सेम थिंग वी कैन इंडिकेट लाइक दिस. इसको एक्सपेंड किया तो इसका एक्सपेंड किया तो मैग्नीट्यूड निकाले तो वी गेट दिस एक्सप्रेशन. ओके, एसी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आइडेंटिफाई द केसेस केयरफुली. कौन सा केस है क्वेश्चन में, दोनों वेरिएबल है, नहीं तो ओनली आर एल वेरिएबल है, नहीं तो और एक पॉसिबिलिटी क्या है बोल तो एक्सेल जीरो ओनली लोड रेशियोज रहते. जब ओनली लोड रेशियोज रहे तो नाउ वी कैन कंक्लूड दिस वन एज ए आर एल इक्वल मॉड ऑफ जेटीएच. अगेन हेयर ऑल्सो एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50%. और एक लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन क्या है बोलते इधर भी आर एल एक्सेल दोनों भी वेरिएबल, मगर और एक एडिशनल कंडीशन है इधर. एडिशनल कंडीशन क्या है बोलते जो लोड इंपोर्टेंस रहते ना, लोड इंपोर्टेंस एंगल इज अ कांस्टेंट. लोड इंपोर्टेंस बोलते tan इनवर्स ऑफ एक्सेल बाय आर एल. दैट मीन्स हर एक बार आर एल वैल्यू एक्सेल वैल्यू वेरिड बाई इक्वल परसेंटेजेस. नो फॉर दैट केस मॉड ऑफ जेड इक्वल मॉड ऑफ जेटीएच. हियर हाउ मेनी केसेस वी डिस्कस्ड? 4 केसेस. मान लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, केस 1 2 3 4 कुछ भी नहीं दिया, इज आस्किंग मैक्सिमम पावर, कुछ भी नहीं दिया तो हमेशा एक स्टेटमेंट याद रख लो, कंक्लूड ऑल आंसर्स एज पर केस 1. क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो always remember as a conclude all answers according to case 1, don't go for any other cases. okay, थोड़ा AC maximum power transfer theorem conditions थोड़ा ध्यान से चेक कर लो. okay, चलिए let us see one question. ready this question? क्वेश्चन पढ़ो जी, होना बोल स्क्रीनशॉट ले लो, I'll explain. कोनैनो सत्यनारायण जत, that is the RMS voltage. Satyanarayan, it is RMS voltage, it is RMS voltage only, RMS voltage. कोनैनो, if source impedance variable maximum power transfer theorem cannot be, कोनैनो अंशु, इफ सोर्स इंपेडेंस वेरिएबल लोड कांस्टेंट तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं लगा सकते. नहीं लगा सकते जी. जब सोर्स वेरिएबल है तो मैक्सिमम पावर कब आता है, प्रोवाइडेड सोर्स इंपेडेंस इज मिनिमम. ओके, चलिए चेक करेंगे. नो करस्पॉन्स एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिए तो पहले जेडल डेटा क्या दिया थोड़ा पढ़ो जी, एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो. अब फिर थोड़ा ध्यान से देखिए तो करस्पॉन्ड टू जेडल, करस्पॉन्ड जेडल व्हाट इज सेइंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर एंड कैपेसिटर. तब मीन्स आप इधर थोड़ा होना बोल तो फिगर डेवलप किया तो देखो जी लोड में क्या क्या है इधर, रेसिस्टर एंड एज वेल एज द कैपेसिटर. इट इज अवर जेडल रेसिस्टर. कैपेसिटर के लिए आई एम राइटिंग कैपेसिटर रिएक्टेंस एज एक्ससी एज पर गिवन डेटा, इट इज अवर लोड इंपेडेंस. देखो जी पहले लोड इंपेडेंस सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना आप, दोनों पैरेलल में है तो कैन आई लाइक दिस Z1 Z2 बाई Z1 प्लस Z2. देखो जी इसमें टू सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कैन मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन. कॉन्जुगेट क्या है इधर, इफ यू सिंप्लीफाई दिस वन, चेक कर लो व्हाट यू राइट इसमें एज ए
देखिए आर स्क्वायर, ओके। और क्या है, जे इंटू जे स्क्वायर माइनस, देखो जी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऐसे सेपरेट कर सकते हैं ना, चेक कर लो एक बार। ओके, कैन आई सेपरेट लाइक दिस? ओके, देखो जी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ये कौन सा केस है, 1 2 3 4 कौन सा केस, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया तो कंडीशन क्या है जी, वी हैव टू राइट दिस में जेड एल इक्वल टू जेड एस कॉन्जुगेट। जेड एस बोल तो सोर्स इंपेडेंस, सोर्स इंपेडेंस के लिए वी कैन आल्सो नेम एज जेड थेवेनिन्स, वी कैन आल्सो नेम एज जेड थेवेनिन्स, जेड एल इक्वल टू जेड थेवेनिन्स कॉन्जुगेट। उसका मीनिंग क्या है जी, जेड एस कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कितना होता है जी, 100 माइनस जे 200, समझ रहे ना, 100 माइनस जे 200। देखिए एग्जाम्पल में देखो जी रियल वैल्यू, जेड में रियल वैल्यू कितना है जी 100, एग्जाम्पल में रियल वैल्यू कितना है जी 100। नो कैन आई इक्वल दिस वन टू 100 और एक्सी स्क्वायर हंड्रेड, यू गॉट इक्वेशन 1। और देखिए इमेजिन वैल्यू, जो इमेजिन वैल्यू है ना, दिस एंटायर इमेजिन वैल्यू कितना है इधर 200, आर स्क्वायर एक्स सी ऐसा लिख सकते हैं ना। Now, in this example, can you solve these two equations? Can you solve these? Can you solve these two equations? देखो जी फ्रॉम दिस इक्वेशन टू से ऐसे लिख सकते हैं ना, from equation 2 can I separate like this? Just name this one the equation 3. देखो जी फ्रॉम इक्वेशन 2 सेपरेट लाइक दिस, इक्वेशन 3 ले जाके इक्वेशन 1 में पुट कर सकते ना, आर एक्सी स्क्वेयर, इक्वेशन 3 है ना, इक्वेशन 3 ले जाके आई एम पुटिंग द इक्वेशन 1, आर स्क्वेयर एक्सी बाई 200। चेक करो जी, इधर कैन आई कैंसिल दीज टू, स्क्वेयर एंड आर एक्सी स्क्वेयर। नाउ कैसे लिख सकते दिस वन, 200 एक्सी बाई आर इक्वल टू 100, देन वी कैन राइट इसमें से दिस एक्सी बाई आर इक्वल टू, चेक करो जी, वी कैन राइट द 1/2, दैट मीन्स व्हाट द आर इक्वल टू 2 एक्सी। चेक कर लो, कैन आई राइट दिस स्टेप, चेक कर लो जी, कैन आई राइट दिस, ओके। देखिए इधर आर एंड एक्सी रिलेशन आ गया आपको, आर एंड एक्सी रिलेशन आ गया, कैन यू पुट दिस आर इक्वल टू एक्सी, कैन यू पुट आर इक्वल टू एक्सी इन दिस इक्वेशन 1, कैन यू पुट आर इक्वल टू 2 एक्सी, कैन यू पुट आर इक्वल टू एक्सी इन दिस इक्वेशन 1। चेक करो जी, ए रिलेशन आर इक्वल टू एक्सी पुट करके सिंप्लीफाई करने से कैन यू फाइंड रेस्पेक्ट टू एक्सी वैल्यू, जो रिलेशन है ना, रिलेशन ले जाके इधर इक्वेशन में पुट करो, पहले एक्सी निकालो, एक्सी निकालने के बाद व्हाट है एक्सी एक्सपेंशन क्या है जी, देखिए इधर एक्सी निकालने के बाद क्या करना है, एक्सी इक्वल फॉर्मूला क्या है 1/ओमेगा सी। चेक करो जी, आई थिंक क्वेश्चन में ओमेगा वैल्यू गिवन, आई थिंक कितना दिया जी, ओमेगा वैल्यू 500 क्वेश्चन में दे दिया, देखो ओमेगा वैल्यू कितना है इधर 500, ओमेगा वैल्यू कितना है जी 500।
चेक कर लो जी, पहले एक्सी निकालो, ओमेगा वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में, कितना दिया जी, ओमेगा वैल्यू हाउ मच 500, क्वेश्चन में दे दिया, देख चेक कर लो एक बार, ओमेगा वैल्यू गिवन है 500, सिंप्लीफाई करके सी वैल्यू निकाल सकते ना, आई गिव ऑल द हिंट्स, ओके, जो रिलेशन है ना दिस आर इक्वल टू एक्स सी, आर इक्वल टू एक्स सी, इधर पुट करो, सिंप्लीफाई करो, पहले एक्स सी निकालो, ओमेगा वैल्यू 200 पता है, उससे सी निकालो, एक्स सी निकालने के बाद देखो जी कंडीशन क्या है, आर इक्वल टू एक्स सी, आर इक्वल टू एक्स सी, इससे आर भी निकाल सकते ना, गिव द आंसर्स, गिव द आंसर्स, एनीबॉडी आंसर, एनीबॉडी आंसर, Ritu Gangwar got the C is 8 microfarad. C is 8 microfarad. चेक कर लो जी, पहले XC निकालो, एनीबॉडी XC वैल्यू बोलो जी, XC वैल्यू, हाँ एस एस, RMS वैल्यू, सत्यनारायण जी, दैट इज RMS वैल्यू ओनली, RMS वैल्यू ओनली जी, पावर कैलकुलेट करते समय हमेशा वी यूज द रेस्पेक्ट टू RMS, चेक करो जी, XC इज 250, R वैल्यू इज 500, पावर कैलकुलेट करते समय एवरी टाइम यूज द रेस्पेक्ट टू RMS वैल्यूज, a problem में only values required only, R वैल्यू कितना है, X C वैल्यू कितना, that is only you are finding, okay, complete now, चलिए let us see some questions from transients. देखो जी ट्रांजिएंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोल, तो पहले टाइम इंटरवल थोड़ा ध्यान से चेक कर लो जी, टाइम इंटरवल हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वी गो फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, वी ट्राई टू डिवाइड माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट इनटू 3 इंटरवल्स, माइनस इन्फिनिट 0 इज अ स्टेडी स्टेट बिफोर ऑपरेटिंग स्विच, and 0 to up to 5t, 5t बोले तो 5 time constants, 5 time constants, 5 time constants we name that one as a transient period. Again from 5 time constant up to infinite we name as a steady state condition after operating switch. हमेशा mainly we divide into 3 intervals, steady state before operating, transient, steady state after operating. Okay, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, स्विच पोजीशन, एरो मार्क बहुत ध्यान से देखना है, आप एरो मार्क बदल दिया तो पूरा सोल्यूशन बदल जाएगा, एरो मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रांजिएंट क्वेश्चंस। देखो जी इन दिस एग्जांपल में एरो मार्क कैसे दिखा रहे, नीचे दिखा रहे, t इक्वल 0 सेकंड स्विच इज क्लोज्ड। जनरली एनालिसिस करते समय एवरी टाइम वी गो फॉर 3 इंस्टेंट्स, 0 माइनस 0 प्लस इन्फिनिट। 0 माइनस मीनिंग क्या है बोल तो इमीडिएटली बिफोर ऑपरेटिंग स्विच, इमीडिएटली बिफोर ऑपरेटिंग स्विच। देखो जी एग्जाम्पल में 0 माइनस में इमीडिएटली बिफोर ऑपरेटिंग बोल तो स्विच वाज ओपन, बिफोर ऑपरेटिंग बोल तो स्विच वाज ओपन। When the switch was open, no source is connected. If no source connected, current value कितना होता है इधर 0, current equal 0, current equal to 0, बाद में come to t equal 0 plus, 0 plus में बोले तो immediately after operating। देखिए 0 minus 0 plus दोनों के बीच में time interval is very very less, time interval is very very less। इंडक्टर नेचर क्या है बोल तो it does not allow sudden change of current, it does not allow sudden change of current। दैट्स वाई 0 माइनस में जो करंट आती है ना 0 प्लस में आल्सो सेम थिंग, 0 प्लस में स्विच क्लोज्ड मगर करंट शुड बी रिमेन सेम। मगर थोड़ा ध्यान से देखें तो देखिए 0 माइनस में नो सोर्स कनेक्टेड, इंडक्टर वोल्टेज कितना है इधर 0, 0 प्लस में देखें तो क्या हो रहा है जी इंडक्टर करंट 0 बोल तो यू कैन इंडिकेट एज ओपन सर्किट।
क्या हो रहा है इधर, इंडक्टर करंट जीरो, करंट जीरो मीन्स वी कैन इंडिकेट एज ए ओपन सर्क्यूट, वी कैन इंडिकेट एज ए ओपन सर्क्यूट। जब ओपन सर्क्यूट किया तो दिस एंटायर सोर्स वोल्टेज कम एक्रॉस द इंडक्टर, दैट मीन्स ये दोनों से वी कैन गिव स्टेटमेंट एज ए इंडक्टर डज नॉट एलो सडन चेंज ऑफ करंट बट इट एलो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, इट एलो सडन चेंज ऑफ द वोल्टेज। क्यों, मतलब जीरो माइनस जीरो प्लस में वैल्यूज आर दी डिफरेंट। इन्फिनिट, आप इन्फिनिट दिया तो क्या होता है जी, स्टेडी स्टेट में करंट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टाइम, इफ करंट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टाइम देन डीएबिलिटी जीरो, if dAbt equal 0 with respect to VL value, dAbt 0 respect to VL equal 0, VL equal to 0. Okay, जनरली सॉल्व करते समय बी तरह विद बेसिक पॉइंट्स। देखिए लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल में देखिए जीरो माइनस में इनिशियली इट वाज कनेक्टेड पोजीशन 1, पोजीशन 1 बोलते सोर्स वाज कनेक्टेड तो सम इनिशियल वैल्यूज एग्जिस्ट, आई नेम दिस मींस आई नॉट। जीरो प्लस बोलते हो इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेटिंग स्विच शिफ्टेड टू पोजीशन 2, जब पोजीशन 2 गए तो दोनों के बीच में टाइम इंटरवल इज वेरी लेस, इंडक्टर डज नॉट अलो सडन चेंज ऑफ करंट। जीरो प्लस में क्या कर रहे हैं, शिफ्टेड टू पोजीशन 2, पोजीशन 2 को शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट करने से भी इंडक्टर मेंटेन द सेम करंट, इंडक्टर सेम मेंटेन सेम करंट, दैट मीन्स इंडक्टर बिहेव्स एज अ करंट सोर्स। बाद में क्या होता है, when the switch is a current to position 2, gradually inductor discharges its energy in the resistor. When switch shifted to position 2, gradually inductor discharges energy in the resistor. Discharging means energy level goes on decreases, current becomes zero, देखिए सेम थिंग इफ यू गो फॉर कैपेसिटर। देखो जी फिगर में जीरो माइनस में एरो मार थोड़ा ध्यान से देख लो, स्विच वाज ओपन, जीरो माइनस मीनिंग क्या है, इमीडिएटली बिफोर ऑपरेटिंग बोलते नो सोर्स वाज कनेक्टेड, इफ नो सोर्स वाज कनेक्टेड VC 0, IC आल्सो 0। बाद में क्या कर रहे हैं, जीरो प्लस में स्विच इज क्लोज्ड, जीरो प्लस का मीनिंग क्या है, इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेटिंग। नाउ अगेन द VC 0, कैपेसिटर नेचर क्या है, इट डज नॉट एलो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। जीरो माइनस में जितना दिखा रहा है जीरो प्लस में भी आल्सो एग्जैक्टली सेम, मगर आप करंट देखे तो इधर वोल्टेज क्या आ रहा है, कैपेसिटर के लिए जीरो, कैपेसिटर वोल्टेज जीरो बोलते तो इट बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्क्यूट, दैट्स व्हाई जब स्विच क्लोज किया तो कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहे हैं, शॉर्ट सर्क्यूट। जब कैपेसिटर शॉर्ट सर्क्यूट हुआ तो करंट वैल्यू कितना होता है इधर V/R। कम टू T इक्वल इन्फिनिट में क्या होता है, जब स्विच क्लोज किया तो धीरे धीरे कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, एट वन इंस्टेंट कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल, ये दोनों इक्वल हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, देन व्हाट द करंट इक्वल टू जीरो। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। ये भी देखिए स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, जीरो माइनस में किधर है, इट कनेक्ट पोजीशन 1, जब पोजीशन 1 को कनेक्ट हुआ तो सोर्स वाज कनेक्टेड सम इनिशियल वैल्यूज एग्जिस्ट। जीरो प्लस में क्या कर रहे हैं, इट इज शिफ्टेड टू पोजीशन 2, जीरो प्लस मीनिंग क्या है, इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेटिंग। मगर कैपेसिटर नेचर क्या है, इन द शॉर्टेस्ट पीरियड इट डज नॉट अलो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। जितना वोल्टेज है जीरो माइनस में जीरो प्लस आल्सो सेम। बाद में क्या होता है, व्हेन द स्विच शिफ्टेड टू पोजीशन 2, ग्रेजुअली कैपेसिटर डिस्चार्जेस एनर्जी इन द रेसिस्टर, जो एनर्जी रहती है ना कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज इन द रेसिस्टर, देन व्हाट वी गेट VC इक्वल जीरो। दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस डिस्कशन ओनली now problem solve करते समय every time what we do here at 0 minus we try to find out initial values. जनरली आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें तो दे आस्क यू टू फाइंड आउट करंट, नहीं तो वोल्टेज, नहीं तो dA/dt, नहीं तो dV/dt, दे आस्क यू टू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स एट t इक्वल 0 प्लस इंस्टेंट। उसके लिए जनरली क्या करते हैं आप, पहले वी डेवलप द फिगर एट जीरो माइनस पर्पस क्या है, इंडक्टर है तो इनिशियल करंट निकालना है, कैपेसिटर है तो इनिशियल वोल्टेज निकालना है। देखिए मान लो गिवन फिगर में जीरो माइनस में फिगर डेवलप किया तो आई गॉट द इंडक्टर करंट इक्वल 0। बाद में क्या करते हैं आप, जीरो प्लस में वी डेवलप द इक्विवेलेंट सर्क्यूट, करंट जीरो प्लस आल्सो इंडक्टर मेंटेन द सेम करंट, देन हाउ दिस इंडक्टर इंडिकेट एज ए ओपन सर्क्यूट। देखिए इंडक्टर हैव सम इनिशियल करंट, मान लो इंडक्टर हैव इनिशियल करंट है तो जीरो प्लस में फिगर डेवलप करते समय वी इंडिकेट एज ए करंट सोर्स। कैपेसिटर के लिए मान लो इनिशियल वोल्टेज जीरो प्लस में कैसे दिखाते हैं, शॉर्ट सर्क्यूट।
क्यों बोलते मेनी क्वेश्चंस में यूज एप्लीकेशन दिस वन ओनली. आप पुराना पेपर्स देखे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ओनली. फर्स्ट ऑर्डर बोल दो आरएल नहीं तो आरसी, मैक्सिमम क्वेश्चंस. देखो जी मान लो कैपेसिटर के पास इनिशियल वोल्टेज है, इंडक्टर नेचर क्या है बोल तो डज नॉट अलो सडन चेंज ऑफ करंट एंड डज नॉट अलो सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन आल्सो. मगर कैपेसिटर देखिए डज नॉट अलो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, डज नॉट अलो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज एंड डज नॉट अलो सडन चेंज ऑफ द पोलैरिटीज. ओके चलिए देखिए इंडक्टर के लिए एवरी टाइम यूज वन स्टेटमेंट. देखिए इंडक्टर इक्वेशन क्या है 1/L इंटीग्रल ऑफ v dt. जनरल स्टेटमेंट क्या है इंडक्टर के लिए इट डज नॉट अलो सडन चेंज ऑफ करंट. मगर कुछ स्पेशल केसेस में इंडक्टर अलो सडन चेंज ऑफ करंट. इन दैट वन ऑफ द स्पेशल केस क्या है बोल तो इंपल्स. आप वोल्टेज इंपल्स दिया तो इंडक्टर हैज सम इनिशियल इंडक्टर अलो सडन अमाउंट द इंडक्टर हैव सम फाइनाइट वैल्यू द करंट. आप गिवन नेटवर्क को इंपल्स दिया तो इट अलो सडन चेंज ऑफ करंट. दिस इज वन ऑफ द स्पेशल केस. देखिए इंडक्टर अलो सडन चेंजेस इन द टू स्पेशल केसेस. वन इज द इंपल्स, other one in some of the ideal circuits we may get the time constant 0. Time constant 0 है तो in that special case also inductor allows sudden change of current. Okay. Now similarly capacitor. Capacitor के लिए general statement क्या है? Capacitor does not allow sudden change of voltage. It is valid for general statement. मगर in some special cases, one of the special cases is a current impulse. आप current impulse दिया तो capacitor के लिए it allows sudden change of voltage. Now one more special case is कैपेसिटर के लिए मान लो टाइम कांस्टेंट 0. देन अगेन टाइम कांस्टेंट 0 मीनिंग क्या है जी चार्जिंग टाइम इक्वल 0 सेकंड्स. देन अगेन इट अलो सडन चेंज ऑफ द वोल्टेज. These are only some special cases. Otherwise general statement is it does not allow sudden change of voltage. देखो जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम सेव करने के लिए क्या करो रिवीजन करते समय ट्राई टू रिमेंबर द जनरल इक्वेशंस. चार्जिंग इंडक्टर के लिए जनरल इक्वेशन क्या है, डिस्चार्जिंग इंडक्टर के लिए करंट इक्वेशन क्या है. इक्वेशन पता है तो फायदा क्या है बोल तो वी कैन सेव द टाइम इन द एग्जाम. फिर पूरा डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है. ट्राई टू रिमेंबर द जनरल इक्वेशंस. देखो जी एग्जांपल में क्या हो रहा, स्विच शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2. इफ स्विच शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 सोर्स डिस्कनेक्टेड. सोर्स डिस्कनेक्ट बोल तो डिस्चार्जिंग इंडक्टर. डिस्चार्जिंग इंडक्टर के लिए करंट रिस्पॉन्स में एक्सपोनेंशियल डिके. डिस्चार्जिंग इंडक्टर करंट रेस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल डिके. कम टू नेक्स्ट वन. देखो जी एग्जांपल में स्विच इज अ क्लोज्ड. जब स्विच क्लोज किया तो सोर्स कनेक्टेड. जब सोर्स कनेक्ट किया तो क्या होता है इंडक्टर एनर्जी इंडक्टर नेचर इज अ चार्जिंग. चार्जिंग इंडक्टर के लिए हमेशा करंट रेस्पॉन्स में एक्सपोनेंशियल राइज. डिस्चार्जिंग के लिए डिके, चार्जिंग के लिए राइज. इधर भी रिवीजन करते समय ट्राई टू रिमेंबर रेस्पेक्ट जनरल इक्वेशंस. आपको जनरल इक्वेशन पता हो गया ना तो टाइम सेव कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में. फिर कुछ भी डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी लैप्लास भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. क्लियर. चलिए अगेन फॉर चार्जिंग इंडक्टर के लिए देखो होना बोल तो वी कैन सी द वोल्टेज अगर रेजिस्टर रेस्पॉन्स वोल्टेज अगर इंडक्टर रेस्पॉन्स. इधर भी एक कंफ्यूजन मत हो जाओ. चार्जिंग इंडक्टर के लिए करंट रेस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल राइज मगर वोल्टेज रेस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल डिके. क्या होता है जी डीसी में अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन डीसी के लिए इंडक्टर बिहेव शॉर्ट सर्क्यूट. जब इंडक्टर शॉर्ट सर्क्यूट वजह से बिहेव कर रहा बोल तो द वोल्टेज बिकम जीरो. वोल्टेज बिकम द जीरो. दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल डिके. एक्सपोनेंशियल डिके. ओके. देखिए वो जनरल फॉर्मूला है ना f of t equal to f of 0 plus f of infinite. I am writing like this. This general formula valid for RL circuit as well as RC circuit. जो जनरल फॉर्मूला है ना इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू इट इज वैलिड फॉर बोथ RL सर्क्यूट RC सर्क्यूट. और एक पॉइंट क्या है बोलते जनरल फॉर्मूला है ना इट इज अप्लीकेबल फॉर वोल्टेज रेस्पॉन्स एज वेल द करंट रेस्पॉन्स. मगर एक कंडीशन क्या है बोलते इट इज वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. फर्स्ट ऑर्डर बोलते आइदर RL और RC. देखिए इधर टाइम कांस्टेंट RL सर्क्यूट क्या है L/R. RC के लिए क्या है जी RC. जो अपना जनरल फॉर्मूला है ना अप्लीकेबल फॉर एंटायर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. केयर भी अप्लाई कर सकते हैं आप मगर ओनली फर्स्ट ऑर्डर. ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर. इन द मेनी क्वेश्चंस आप जनरल इक्वेशन अप्लाई किया तो आप टाइम सेव कर सकते हैं. मगर थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखें तो मेनी क्वेश्चंस में इज आस्किंग द ओनली रेस्पॉन्स एट 0 प्लस इंस्टेंट. इन सम ऑफ द केस ओनली दे आर आस्किंग कंप्लीट रेस्पॉन्स. जिधर आप कंप्लीट रेस्पॉन्स चाहिए इफ यू गो फॉर दिस वन वी कैन सेव द टाइम इन द एग्जाम. एक ही स्टेटमेंट है देख लो.
गिवन क्वेश्चन में ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स है तो गो फॉर लैप्लास. मान लो मोर इंडक्टर्स, मोर कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, देन प्रिफर द लैप्लास. नहीं तो ओनली फर्स्ट ऑर्डर है तो टाइम सेव करने के लिए गो फॉर द क्लासिकल मेथड. ओके जी, चलिए कम टू कैपेसिटर. इधर कैपेसिटर में देखिए 0 सेकंड्स में इट इज शिफ्टेड पोजीशन 2. जब पोजीशन 2 को शिफ्ट किया तो कैपेसिटर एक्शन क्या है? डिस्चार्जिंग कैपेसिटर. डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के लिए वोल्टेज रिस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल डिके. डिस्चार्जिंग इंडक्टर के लिए करंट रिस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल डिके. वोल्टेज रिस्पॉन्स देख रहे इधर. इंडक्टर बोलते हो मेनली वी फोकस ऑन करंट, कैपेसिटर बोलते हो वी फोकस ऑन वोल्टेज. कम टू दिस वन. देखो जी, इन दिस एग्जांपल द स्विच इज अ क्लोज्ड. जब स्विच क्लोज किया तो कैपेसिटर एक्शन क्या होता है इधर? चार्जिंग. चार्जिंग कैपेसिटर के लिए हमेशा वोल्टेज रिस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल राइज. मगर थोड़ा ध्यान से देखें तो करंट रिस्पॉन्स क्या होता है जी? एक्सपोनेंशियल डिके. अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है? कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल. पोटेंशियल डिफरेंस 0. If potential difference 0 means current equal to 0. That means the current becomes a 0, exponential decay. Okay. Try to remember all these general formulas. एक क्वेश्चन पढ़ो जी एक बार. I'll explain. क्वेश्चन पढ़ो जी एक बार. ओके जूम इन. ओके लिख लो जी, लिख लो जी, लिख लो जी, लिख लो जी. ओके जी, लिख लो 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 जी. ओके हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए चलो कंप्लीट करेंगे. देखो जी, अब थोड़ा ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या है जी? ओनली रेसिस्टर इंडक्टर, बाहर से कुछ भी सोर्स नहीं है. देखिए बाहर से कुछ भी सोर्स नहीं है. दैट मीन्स कैन आई यूज द वर्ड एज अ डिस्चार्जिंग इंडक्टर. देखो जी, अभी आपको फॉर्मूला दिखवाया था डिस्चार्जिंग इंडक्टर के लिए. डिस्चार्जिंग इंडक्टर के लिए करंट रिस्पॉन्स क्या है जी? करंट रिस्पॉन्स क्या लिख सकते हैं इधर? करंट रिस्पॉन्स इक्वल टू वी कैन राइट दिस विद आई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ -RT. ऐसा लिख सकते हैं ना, डिस्चार्जिंग इंडक्टर. अब देखो जी, नो आई ऑफ टी इक्वल टू देखो जी क्वेश्चन में दे दिया इनिशियल करंट कितना दिया जी? इनिशियल करंट हाउ मच? 4 एम्पियर्स. नो 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है जी? 100. रेजिस्टेंस वैल्यू 100. देखो जी इंडक्टेंस वैल्यू कितना है इधर? 0.2. आप इधर सिंप्लीफाई करने से वी गेट द 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना होता है जी इधर? -580. देखो जी, दिस इज द करंट रिस्पॉन्स यू गॉट. और क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया, थोड़ा ध्यान से देखो जी. क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दिया जी? इधर क्या बोल रहे इधर? जब t इक्वल 1 मिली सेकेंड्स है ना, 1 मिली सेकेंड्स में क्या कर रहे हैं? और एक नया रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं. नया रेजिस्टेंस कितना है जी? 100 ओम्स. क्या देखो जी, आप t ग्रेटर देन 1 मिली सेकेंड्स के लिए 1 मिली सेकेंड्स के लिए आप फिगर देखे तो फिगर ऐसा आते हैं आपके लिए. देखो जी, वी गेट फिगर लाइक दिस 100 ओम्स और एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं आप. और एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं. ओके, और एक रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. देखो जी, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम्स हाउ मच हियर? 50 ओम्स. फिर भी क्या हो रहा है जी? आप t ग्रेटर देन 1 मिली सेकेंड ऑल्सो, अगेन इट इज ऑल्सो डिस्चार्जिंग, मगर तो रेजिस्टेंस कम हो गया. देखो जी, इधर भी थोड़ा ध्यान से देखिए. हाँ, इधर भी क्या होता है जी? इट इज ऑल्सो स्टार्ट द डिस्चार्जिंग ओनली. डिस्चार्जिंग के लिए जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? जनरली आप क्या लिख सकते हैं? नो, जनरली वी राइट इसमें से ऐसा लिख सकते हैं ना, आई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ -RT. ये लिखते ना. देखो जी, प्रीवियसली हैव रिटन दैट ओनली आई नॉट एक्सपोनेंशियल -RT. इधर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है. मॉडिफिकेशन क्या करना है बोल तो, जो रेस्पॉन्स है ना, दिस रेस्पॉन्स करस्पॉन्ड t ग्रेटर देन 1 मिली सेकेंड. दैट्स व्हाई जो रेस्पॉन्स है ना, आई नेम सम
आई नॉट टी डैश। देखो जी इधर जो इनिशियल करंट निकले ना इट इज नथिंग बट आई नॉट ऑफ 1 मिली सेकेंड। रीजन क्या है बोल तो इसके लिए इनिशियल करंट क्या होता है 1 मिली सेकेंड से करंट होता है। इसके लिए करंट क्या होता है 1 मिली सेकेंड का करंट होता है। दैट मीन्स जो इधर करंट कैलकुलेट करता है इनिशियल वैल्यू दैट इनिशियल वैल्यू व्हाट यू आर यूजिंग हियर ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आई ने आई नॉट डैश। यार आई नॉट डैश मीनिंग क्या है बोल तो इनिशियल करंट एट टी इक्वल 1 मिली सेकेंड। क्या कर रहे हैं आप टी इक्वल 1 मिली सेकेंड में डिस्टर्ब कर रहे हैं और एक नया रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं इधर। देखो जी इधर नया रेजिस्टेंस ऐड करने से न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू आई नेम आर डैश। न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू आई नेम आर डैश। देखो जी आप इधर टी दिखा रहा बोले तो टी का मीनिंग क्या है बोले तो देखिए इधर आर डैश। इधर आप टी दिखा रहा बोले तो टी का मीनिंग क्या है बोले तो रेस्पॉन्स वैलिड फ्रॉम 0 टू अप टू इन्फिनिट। मगर इधर क्या है जी कुछ डिले टाइम है। डिले टाइम क्या है जी 1 मिली सेकेंड। दैट मीन्स क्या लिखना है t माइनस 1 मिली सेकेंड t माइनस 1 मिली सेकेंड t माइनस 1 मिली सेकेंड। ओके चलिए इधर आई नॉट डैश बोले तो करंट t इक्वल 1 मिली सेकेंड। देखो जी टू फाइंड आउट द करंट वैल्यू t इक्वल 1 मिली सेकेंड वी हैव टू यूज द प्रीवियस जनरल इक्वेशन। देखिए प्रीवियस करंट रिस्पांस पता है आपको। ये प्रीवियस करंट रिस्पांस में 1 मिली सेकेंड्स के लिए करंट निकाल सकते हैं इधर 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ -500 1 मिली सेकेंड। एनीबडी गिव आंसर। ये आंसर बोलो जी थोड़ा समझ रहे ना। इधर क्या कर रहे हैं इनिशियल करंट किधर से निकाल रहे जी फ्रॉम प्रीवियस करंट रिस्पांस से निकाल रहे। जो करंट आते ना दैट करंट ओनली इज नेम्ड एज आई नॉट डैश। दैट करंट ओनली नेम्ड एज आई नॉट डैश। बोलो जी एनीबडी गिव आंसर फॉर दिस वन। आई वांट रिस्पांस फ्रॉम योर साइड। बोलो जी एनीबडी गिव आंसर फॉर दिस वन। ये 1 मिली सेकेंड्स का करंट निकालो जी पहले। एनीबडी आंसर। ओके वेरी गुड चट्टोपाध्याय जी वेरी गुड। बोलो जी 1 मिली सेकेंड्स के बोलो जी। एनीबडी आंसर check करो जी। somebody is saying 2.426 shall I confirm this one 2.426 shall I proceed with this one check करो जी 2.426 shall I confirm okay जो करंट है ना 1 मिली सेकेंड करंट है ना दैट इज ओनली आई नेम्ड एज आई नॉट डैश बोल तो जो करंट है ना 1 मिली सेकेंड से दैट इज ओनली करंट 2.426। अब देखिए नाउ आई नेम टी डैश ये क्या है जी 2.426 एक्सपोनेंशियल ऑफ आर। इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया जी जब 100 दोनों पैरेलल है तो इक्विवेलेंस कितना हो गया 50। इक्विवेलेंस कितना है जी 50। इंडक्टेंस वैल्यू कितना है जी 0.2। देखो जी t माइनस 1 मिली सेकेंड। अब देखिए करंट रिस्पांस आ गया आपको। अब देखो जी करंट रिस्पांस आ गया। करंट रिस्पांस आने के बाद अब देखो जी अब देखो जी करंट रिस्पांस आने के बाद इधर आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं इज आस्किंग द करंट वैल्यू एट t इक्वल 2 मिली सेकेंड्स। इज आस्किंग द करंट वैल्यू एट t इक्वल 2 मिली सेकेंड्स। अब बोलो जी आंसर फाइनल आंसर बोलिए। इज आस्किंग द आंसर पुट द t इक्वल 2 मिली सेकेंड्स। पुट द t इक्वल 2 मिली सेकेंड। सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने से कैन यू फाइंड आउट आई वैल्यू चेक करो जी डू इट। चेक करो मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग 1.88 इज इट करेक्ट चेक कर लो जी 1.88।
क्लियर ना? ओ वेरी गुड बापन, प्रवन, आर्श, आशीष कुमार, वेरी गुड, निखी कुमारी, वेरी गुड, रितु गौरव, वेरी गुड, 1.8, गंगाधर 1.88, वेरी गुड, गणेश वेरी गुड, 1.88, वेरी गुड. ओके, थोड़ा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय कुछ तो भी कंफ्यूज लग रहा बोल तो डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस एट द स्टार्टिंग इटसेल्फ. क्यों बोल तो देखिए, इन द कंफ्यूजन ओनली इफ यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, कुछ तो भी गड़बड़ हो गया ना, अगेन अननेसेसरली लूज द कॉन्फिडेंस. कंफ्यूजन आ रहा है ना, ट्राई टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन द सेकंड राउंड नहीं तो थर्ड राउंड. ओके, देखिए कम टू दिस इनिशियल वैल्यू थ्योरम. इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्वेश्चन में दे मे गिव फंक्शन इन द एस डोमेन नहीं तो इन द टाइम डोमेन. टाइम डोमेन तो t टेंस टू 0, इधर एस डोमेन बोल तो s टेंस टू इन्फिनिट. हाँ, अब बोलो जी गिव द आंसर फॉर दिस वन. इसका इनिशियल वैल्यू क्या होता है बोलिए? व्हाट इज इनिशियल वैल्यू फॉर दिस वन? फाइंड इनिशियल वैल्यू. बोलिए आंसर क्या है इसके लिए? इनिशियल वैल्यू क्या है जी, बोलिए. ओके, चलो चेक करेंगे. व्हाट यू राइट इसमें से एफ ऑफ टी. आप इधर लैप्लास में कन्वर्ट किया तो, आप इधर लैप्लास में कन्वर्ट किया तो कैसा दिखा सकते हैं? दिस वन वी राइट इसमें से 20/s और लैप्लास ऑफ इंपल्स, और लैप्लास ऑफ इंपल्स इज 1. देखो जी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए वन नेसेसरी कंडीशन है, डिनोमिनेटर पावर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर पावर. आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना बोल तो वन एक नेसेसरी कंडीशन क्या है बोल तो डिनोमिनेटर पावर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर पावर. आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इस सेकंड टर्म में दैट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइंग. कंडीशन क्या है जी? डिनोमिनेटर पावर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर पावर. दैट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइंग. दैट्स व्हाई इधर कंक्लूजन क्या है बोल तो गिवन फंक्शन के लिए इनिशियल वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड. अपना गिवन फंक्शन है ना, गिवन फंक्शन के लिए इनिशियल वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड. ओके, चलिए कम टू नेक्स्ट वन. अब देखिए फाइनल वैल्यू. फाइनल वैल्यू बोलते इधर भी क्वेश्चन में दे मे गिव फंक्शन इन द टाइम डोमेन नहीं तो एस डोमेन. देखो जी टाइम डोमेन दिया तो t टेंस टू इन्फिनिट. देखो जी एस डोमेन बोल तो s टेंस टू 0. हाँ, इधर भी बोलो जी आंसर बोलिए आप. फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस वन. बोलो जी आंसर बोलिए इसके लिए. व्हाट इज आंसर फॉर फाइनल वैल्यू? मेगा अग्रवाल क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ो जी. क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 1 मिली सेकेंड्स में और एक 100 ओम्स लगा रहे, और एक 100 ओम्स लगा रहे जी. और एक 100 ओम्स लगाने से अगेन द न्यू ट्रांजिस्टर डेवलप्ड. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो जी अग्रवाल जी. ओके, चट्टोपाध्याय ये क्या है बोल तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से ज़्यादा होना है. डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से ज़्यादा होना है, देन ओनली इनिशियल वैल्यू थ्योरम कैन बी अप्लाइड. देखिए डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिखा रहे इधर. पावर बोलते देखिए इससे समझो आप. मान लो एफ ऑफ एस फंक्शन, मान लो इफ आई एम राइटिंग एस क्यूब एस ऐसा लिखे तो देन यू कैन अप्लाई. इसका पावर कितना है जी? ज़्यादा है देन कंपेयर टू द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर पावर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर पावर, देन वी कैन अप्लाई. मगर इधर तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना. पावर पावर बोलते इसका ये देखना है आप, समझ रहे ना. नाउ कैन यू फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू? देखो जी व्हाट इज द लैप्लास ऑफ दिस वन. लैप्लास ऑफ दिस वन कैसा दिखा सकते हैं? दिस वन 9/s. व्हाट डू राइट इसमें दे 1/s - 6. 1/s - 6. आप थोड़ा ध्यान से देखो जी, थोड़ा ध्यान से देखिए. आप कंट्रोल सिस्टम में सुने होंगे.
देखो जी एग्जाम्पल में पोल किधर है, राइट ऑफ और लेफ्ट ऑफ। देखो जी एग्जाम्पल में पोल किधर, राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ, राइट ऑफ। व्हेन द पोल पेन राइट ऑफ, सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल। ये किधर है जी, पोल किधर है जी, राइट ऑफ में है, सिस्टम इज अनस्टेबल। अनस्टेबल सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। अनस्टेबल सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, वी कैनॉट अप्लाई द फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके, समझ रहे ना, अनस्टेबल सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। गुड गुड, चलिए कम टू, देखो जी whenever you are applying the Laplace, what we do, we convert the each element from time domain to S domain। देखिए आप रेसिस्टेंस को ट्रांसमिट किया तो टाइम डोमेन टू एस डोमेन, नो वेरिएशन प्रेजेंट इन द रिप्रेजेंटेशन रेजिस्टेंस, कुछ भी वेरिएशन नहीं रहते इधर। क्यों बोलते हो, रेसिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन द टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी। जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस, इधर आल्सो एग्जैक्टली सेम, इधर वी ऑफ टी वी ऑफ एस, कुछ भी वेरिएशन नहीं रहते रेजिस्टेंस के लिए। मगर इफ यू कम टू इंडक्टर, इंडक्टर के लिए थोड़ा ध्यान से देखना है इधर। देखो जी इंडक्टर के लिए इक्वेशन क्या होता है, दिस V इक्वल टू एल डी ए बाई डी टी। इंडक्टर के लिए इक्वेशन क्या है जी, वी राइट दिस V इक्वल टू एल डी ए बाई डी टी। आप इधर लैप्लास अप्लाई किया तो वी राइट दिस एल, देखो जी आप इधर लैप्लास अप्लाई किया तो वी राइट दिस V इक्वल टू we write V of S equal to L Can I write like this here? देखो जी I am expanding this one। आप इधर एक्सपेंड किया तो वी कैन राइट दिस वी ऑफ एस इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं ना, एल एस आई ऑफ एस। कैसे लिख सकते हैं, दिस इज एल आई जीरो प्लस। देखो जी आई एम अप्लाइंग द लैप्लास फॉर दिस वन, लैप्लास अप्लाई किया तो वी कैन राइट लाइक दिस। देखिए इधर एस का मीनिंग क्या है, बोलते हो एस का मीनिंग क्या है जी, जे ओमेगा। इसका मीनिंग क्या है, जे ओमेगा। देखो जी ओमेगा एल बोलते हो एक्सेल, एक्सेल इंटू करंट, एक्सेल इंटू करंट मीन्स क्या दिखाते इधर, वोल्टेज। दैट मीन्स वी गॉट द वोल्टेज इक्वेशन क्या बोल सकते हैं इधर, केवीएल। जो केवीएल है ना, इसके लिए वी कैन डेवलप द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट। केवीएल के लिए वी कैन डेवलप द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए इधर वेयर एवर द करंट इज एंटरिंग दैट इज पॉजिटिव, अदर वन इज अ नेगेटिव। इधर माइनस में सब्ट्रैक्शन, देखो जी सब्ट्रैक्शन। ये इक्वेशन के लिए आई डेवलप्ड द इक्विवेलेंट सर्किट। ये पूरा रीअरेंज करके वी कैन सेपरेट द करंट वैल्यू। आप करंट वैल्यू सेपरेट किया तो वी गेट इक्विवेलेंट सर्किट लाइक दिस। नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हैं, आप इधर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो वी गेट दिस इक्विवेलेंट सर्किट। कभी भी एस डोमेन में शिफ्ट करते समय थोड़ा पोलैरिटीज एंड करंट डायरेक्शन के ऊपर ध्यान रखो। क्यों बोलते आप डायरेक्शन बदल लिया तो पूरा सॉल्यूशन बदल जाएगा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन करते समय थोड़ा डायरेक्शन थोड़ा ध्यान से चेक कर लो। नाउ सेम थिंग यू कैन ऑब्जर्व फॉर कैपेसिटर। देखो जी सेम थिंग इन ऑब्जर्व फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए अगेन इफ यू ऑब्जर्व द करंट इक्वेशन, करस्पॉन्ड कैपेसिटर इफ यू ऑब्जर्व द करंट इक्वेशन क्या है जी, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। इक्वेशन क्या है जी, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। If you I equal to C,
देखो जी सर, इफ यू अप्लाई लैप्लास गेट स्टेप लाइक दिस. देखो जी सी एस सी वी जीरो प्लस, जो सी एस है ना शिफ्टेड डिनोमिनेटर, इसका मीनिंग क्या है, जे ओमेगा 1/ओमेगा सी बोल दो एक्स सी. V/XC का मीनिंग क्या है, करंट. V/XC मीनिंग क्या है, करंट. दैट मीन्स वी गॉट द करंट इक्वेशन. देखो जी वी गॉट द करंट इक्वेशन. नाउ करंट इक्वेशन मीन्स विच वन है, KCL. करंट इक्वेशन बोल दो कौन सा है इधर, KCL. नाउ KCL मीन्स विच इक्विवेलेंट सर्किट वी कैन डेवलप. KCL बोल दो करंट डिवीजन. करंट डिवीजन मीन्स वी कैन डेवलप द पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट. इधर क्या कर रहे हैं, KCL इक्वेशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. सब्ट्रैक्शन कर रहे बोल तो बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. देखिए इधर वोल्टेज अक्रॉस दिस पार्ट बोथ आर द सेम. करंट डायरेक्शन कैसा आ रहे, नीचे आ रहे. इधर क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, वी हैव टू इंडिकेट अपवर्ड्स. इधर भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो वी गेट दिस इक्विवेलेंट सर्किट. लैप्लास में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोल तो, इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप करते समय थोड़ा पोलैरिटीज डायरेक्शन के ऊपर ध्यान रखिए. ओके. लैप्लास में और एक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है बोले तो, होना बोल तो इंडक्टर इनिशियल वैल्यू आप वोल्टेज सोर्स वी कैन इंडिकेट वोल्टेज सोर्स, नहीं तो वी कैन इंडिकेट एज ए करंट सोर्स. ये भी देखिए कैपेसिटर इनिशियल वैल्यू को वी कैन इंडिकेट एदर एज ए वोल्टेज सोर्स और एज ए करंट सोर्स. दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रेजेंट. ये क्वेश्चन लिख लो जी, क्वेश्चन लिखो जी. Rajat Pawan, I have taken an example like this only. What you asked, inductor, capacitor. लिख लो जी, क्वेश्चन लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट ले लो. ओके. हाँ अब चेक करेंगे, अब चेक करेंगे जी. देखो जी क्वेश्चन में कौन से एलिमेंट्स है इधर. देखिए आई एम ट्रांसफॉर्म दिस वन टू एस डोमाइन, लैप्लास में कन्वर्ट करो मैं. देखिए just remember one general statement as a, if network have the more number of energy storage elements, we can easily conclude the answers with help of the Laplace. Okay. चलिए in this example here one is the inductor. Inductor क्या है, is the LS. Capacitor, capacitor I am writing as 1/CS. ये क्या है जी, V0 plus by S. पोलैरिटीज देखेंगे. पोलैरिटीज के लिए थोड़ा गिवन फिगर को ध्यान से देखो. क्वेश्चन में ये देख लो पोलैरिटीज क्या है जी, पोलैरिटीज माइनस एंड द प्लस, माइनस एंड द प्लस. ओके. आप रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट किया तो एल वैल्यू कितना है जी, एल वैल्यू सम 1 मिली हेनरी, व्हाट इज सी वैल्यू सम 1 माइक्रोफैरेड. हाँ क्या चाहिए आपको, इज आस्किंग द करंट रिस्पॉन्स. चलिए लेट अस फाइंड आउट द रेस्पेक्टिव करंट रिस्पॉन्स. देखो जी इनिशियल वोल्टेज भी दे दिया क्वेश्चन में. इनिशियल वोल्टेज कितना है जी, वी कैन राइट दिस विद 100. इनिशियल वोल्टेज कितना दिया, 100/S. देखो इधर सिंप्लीफाई करने से ऐसा लिख सकते हैं ना, 100/S आई ऑफ एस इक्वल टू LS 1/CS, ऐसा लिख सकते हैं ना जी. देखिए इधर देखिए ऐसा लिख सकते हैं ना, 100/S and inductor and capacitor both are connected series. Inductor capacitor both are connected series. देखो जी आप इधर सिंप्लीफाई किया तो, आप इधर सिंप्लीफाई किया तो कैन आई राइट दिस 100/S. चेक कर लो एक बार. कैन आई कैंसिल दिस टू.
चेक करो जी, ऐसे लिख सकते ना स्टेप्स, चेक करो जी, ऐसे लिख सकते ना स्टेप्स। देखो इधर एस एस विल बी कैंसिल, एस एस विल बी कैंसिल आउट। आप ये पूरा सिंप्लीफाई किया तो कैन राइट द एक्सप्रेशन लाइक दिस। कम टू नेक्स्ट वन। इफ यू सिंप्लीफाई फर्दर, देखो जी सी विल बी कैंसिल। चेक करो जी, कैन आई कन्वर्ट दिस वन जनरल फार्मूला 1/√LC होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते ना। और इधर भी चेक कर लो, कैन आई दिस √C/L, कैन आई रीअरेंज लाइक दिस। क्यों मतलब फाइनल इनवर्स लैप्लास लगाए ना। चेक करो जी, ये रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते ना, 1/LC है ना, आई एम राइटिंग 1/√LC होल स्क्वायर। थोड़ा चेक कर लो जी, ध्यान से चेक कर लो। For this one, if you apply inverse Laplace, for this one finally if you apply inverse Laplace, can you find out I of t? Apply the inverse Laplace, आप inverse Laplace लगाने से I of t निकाल सकते हैं। चेक कर लो, I give all the hints। चेक करो जी, I give all the hints। Finally apply the inverse Laplace। चेक करो जी एक बार। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग रेस्पॉन्स। सिंप्लीफाई करो जी, सिंप्लीफाई करो तो कैसे लिख सकते हैं इस वन, 100√C/L, यू कैन राइट इसमें साइन ऑफ t/√LC। ओके, इनवर्स लैप्लास अप्लाई करो, विल गेट लाइक दिस। देखो क्वेश्चन में आपको L वैल्यू दे दिया, C वैल्यू दे दिया, क्वेश्चन में L वैल्यू दे दिया, C वैल्यू दे दिया, सब्स्टिट्यूट करो। सिंप्लीफाई करने से चेक करो, मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग C इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो जो क्वेश्चन में आपको L वैल्यू दे दिया, C वैल्यू भी दे दिया, सब्स्टिट्यूट करो जी, सिंप्लीफाई करने से वी गेट द करंट रिस्पांस। रीना, माधवी एंड निक्की कुमारी गॉट द C ऑप्शन। बबन, माधवी द्विवेदी, निक्की कुमारी, बशीर, रीना, क्वेश्चन में दे दिया, देख लो क्वेश्चन में आपको L वैल्यू दे दिया, C वैल्यू दे दिया। L वैल्यू कितना दिया जी, 1 मिली हेनरी, C वैल्यू कितना 10 माइक्रोफैरेड। वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करने से आप वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करने से विल गेट द आंसर। गणेश वेरी गुड, प्रणव, बदन, तक गया आंसर नहीं आ रहे, तक गया, नींद आ रहे हैं, आंसर दे दो। चलिए, वन मोर लास्ट क्वेश्चन इन द ट्रांजिएंट्स। देखो जी, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखो जी, क्वेश्चन में दे दिया आपको इनिशियल करंट दे दिया इंडक्टर के लिए। Now dependent source is there. Here also what I am doing, I am trying to solve by using Laplace. देखो जी, I am developing figure for t greater than 0 के लिए डेवलप कर रहा हूँ। क्या है 10 ohms इंडक्टर। देखो जी, अभी इक्विवेलेंट को डिस्कस किया था। इफ यू कन्वर्ट इनटू एस डोमेन, नो कैन आई राइट दिस सर, LS Li0 प्लस, आई एम इंडिकेटिंग एज ए वोल्टेज सोर्स। देखो जी, एरो मार्क इंडिकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन तो प्लस माइनस।
देखिए इधर क्या है, कौन सा सोर्स है, इधर करंट सोर्स. अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके कैन यू कन्वर्ट दिस करंट सोर्स इनटू इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स. कैन यू कन्वर्ट द करंट सोर्स इन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स. ये समझ रहे ना, अभी डिस्कस किया था इक्विवेलेंट सर्किट्स फॉर इंडक्टर. लैप्लास में फ्लेक्सिबिलिटी रहते, इनिशियल वैल्यू होना बोल तो वी कैन इंडिकेट ए करंट सोर्स, नहीं तो वी कैन इंडिकेट एज ए वोल्टेज सोर्स. इधर प्रोडक्ट कैसे दिखा रहे, इधर एरो मार्क फॉरवर्ड डायरेक्शन, एरो मार्क के लिए आई एम गिविंग द पॉजिटिव साइन, अदर वन इज द नेगेटिव साइन, अदर वन इज नेगेटिव साइन. समझ रहे ना. देखो जी इधर भी क्या करूं मैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसानी से करने के लिए आई एम कन्वर्टिंग करंट सोर्स इनटू इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं. इधर रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है जी, 40. रेजिस्टेंस वैल्यू हाउ मच, 40. देखिए एरो मार्क के लिए आई गिव द पॉजिटिव साइन एंड अदर वन इज द नेगेटिव साइन. In this example, arrow mark के लिए I give the positive sign. What about other one is a negative sign. 40 into 0.5. 40 into 0.5 क्या लिख सकते हैं? 20 I of S. 20 I of S. Okay. अब इंडक्टेंस वाले कितना है जी? 6. We can write it 6S. What about इसमें L I 0 plus. I 0 plus कितना है जी? 30. 6 and 6. 6 बोले तो what you write इसमें 36. Okay, now can you write the current response for this one? अब देखो जी, can you write the current response equation? Can you write the current response? If you write the current response equation for this one, if you write the current response equation for this one, देखिए in this example here plus minus बोल तो addition, 36 plus ये क्या है जी, 20 I of S. 20 I of S. इधर क्या लिख सकते हैं इधर, हाउ द 10 and 40 आर इन द सीरीज. 10 40 और क्या है जी, व्हाट इज इट, 6S. चेक करो जी, आई गिव ऑल द स्टेप्स. इसमें क्या है, अननोन क्या है, इसमें अननोन क्या है जी, I of S. इसमें से I of S सेपरेट कर सकते ना. चेक करो जी, पहले I of S सेपरेट करो, इसमें से रीअरेंज करो, रेंज करने से आई ऑफ एस सेपरेट कर सकते हैं ना आप. एनीबडी आंसर. आई ऑफ एस बोलो जी, एनीबडी आंसर, सिंप्लीफाई करो. ओके वेरी गुड. मैं सम स्टूडेंट्स आर सेइंग 6 by S plus 5. इसको रीअरेंज करो जी, पूरा रीअरेंज करके आई ऑफ एस सेपरेट करो. इसमें क्या करना है, आई ऑफ एस सेपरेट करो, आई ऑफ एस सेपरेट करो. करने के बाद एट द एंड कैन यू अप्लाई इनवर्स लैप्लास. कैन वी अप्लाई इनवर्स लैप्लास फॉर दिस वन. अप्लाई द इनवर्स लैप्लास. Apply the inverse Laplace. If you apply inverse Laplace, check out which one is the correct answer. Check करो, B is the correct option. B is the correct option. Very good, Reena. You can deal time domain also, but take the more time. क्यों, वो तो डिपेंडेंट सोर्स है ना. डिपेंडेंट सोर्स के लिए टाइम कॉन्श अलग से कैलकुलेट करना है. इट टेक अ लिटिल मोर टाइम, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर लैप्लास. फिर आर थेवेनिन्स निकालना है टाइम कॉन्श के लिए, इट टेक द मोर टाइम. निकी, come to the last topic, two-port network. Let us see some of the concepts in the two-port network. देखो जी, इन द टू पोर्ट नेटवर्क में फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो, ट्राई टू रिमेंबर द इक्वेशंस फॉर ईच पैरामीटर. करस्पॉन्ड टू जेड पैरामीटर्स, करस्पॉन्ड टू वाई पैरामीटर्स, दैट हाइब्रिड पैरामीटर्स, जी पैरामीटर्स, ABCD पैरामीटर्स, एंड ट्राई टू रिमेंबर द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट्स. ओके, देखिए इधर जेड पैरामीटर्स में देखो जी, now V1 V2 values expressed in terms of I1 and I2.
और फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी, वोल्टेज इक्वेशन. वोल्टेज इक्वेशन बोलते KVL. KVL, where the KVL happens for the series circuit. Voltage division बोलते series circuit. That's why correspond first equation we can develop the equivalent circuit. We can develop the corresponding equivalent circuit. Input के लिए we got voltage equation KVL बोलते series. Similarly, second one also voltage equation बोलते KVL. Now for this voltage equation we can develop the corresponding equivalent circuit. ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस में भी सॉल्व करते समय आपको कभी कभी क्या होता है बोलते क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट सर्किट देते दे आस्क यू टू फाइंड रेस्पेक्ट टू पैरामीटर्स. दैट्स व्हाई इक्वेशन भी जरूरत है, इक्विवेलेंट सर्किट भी जरूरत है, दोनों भी याद रख लेना इधर. हाँ देखो जी, करस्पॉन्ड जेड पैरामीटर्स के लिए कोई तो भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया तो मान लो कोई तो भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया इज आस्किंग जेड पैरामीटर्स. उधर फर्स्ट स्टेप क्या करना है बोलते पहले कनेक्शन आइडेंटिफाई करो. सीरीज कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल कनेक्शन कौन सा है, नहीं तो स्टार डेल्टा है. तो पूरा सिंप्लीफाई करके क्या करो, ट्राई टू कन्वर्ट दैट वन एज इक्विवेलेंट टी नेटवर्क. कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को कन्वर्ट दैट इक्विवेलेंट टी नेटवर्क. टी नेटवर्क डेवलप करने के बाद राइट द केवीएल इक्वेशन फॉर द इनपुट एंड द आउटपुट. केवीएल इक्वेशन लिख के वी कैन कंक्लूड द जेड पैरामीटर्स. देखो जी, मान लो टी नेटवर्क में इफ यू इंडिकेट द ZA, ZB, ZC लाइक दिस, पूरा सिंप्लीफाई करें तो वी गेट लाइक दिस Z11, Z22, Z12 वी गेट लाइक दिस. इधर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टाइम सेव करने के लिए ये सब रिलेशन थोड़ा याद रख लो. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी दे में आस्क रिवर्स वे. क्वेश्चन में आपको जेड पैरामीटर्स दे देते, दे में आस्क द सर्किट कॉन्सेप्ट टी नेटवर्क. Try to remember these relations. With help of these relations also we can find out the circuit constants. Okay, देखिए in the entire network analysis for the resonance topic and two port network we have to remember more number of relations. Relations आ गई तो थोड़ा फायदा क्या है बोलते we can save the time in the exam. देखिए come to next one. Next one is the lattice network. देखो जी, when ZA equal ZD, ZB equal ZC, whenever this condition satisfying, we can name this as a symmetrical lattice network. Is the S बोलते symmetrical lattice network. जब symmetrical lattice network के लिए देखिए these are the standard the Z parameter equations. इधर भी कभी कभी क्वेश्चन में they may ask रिवर्स वे. रिवर्स बोले तो क्वेश्चन में itself they give the Z parameters. They may ask the circuit constants for the circuit constant correspond to the lattice network. देखिए ये Z11, Z12 दोनों ऐड किया तो we get this as ZB. That means होना बोल तो by knowing the Z parameters also you can find out circuit constants. Okay, जो formulas है ना, this formula is valid only for symmetrical lattice network. ये एक डाउट आते हैं आपको, मान लो क्वेश्चन में अनसिमेट्रिकल दे दिया तो क्या करो, जो नेटवर्क है ना, लैटिस नेटवर्क है ना, try to redraw the network as a bridge network. We can redraw like this. We can redraw this one as a bridge network. Give the name as some 1, 1 dash, 2 and the 2 dash. Now इधर simplify करके क्या करो, try to redraw this given network. देखो जी 1, 1 dash and corresponding 2 and 2 dash indicated corresponding ZA, ZB, ZD here. Okay, try to convert the given lattice network like this. From that one we can find out respect to Z parameters. मगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखें तो many cases they are focusing on the symmetrical networks. Unsymmetrical दिया तो then go for the convert that one as a bridge network. From that one you can simplify. हाँ देखिए, some cases they may give figure like this. अब देखिए एक एग्जांपल में V1 वोल्टेज, जो V1 वोल्टेज है ना, डिस्ट्रीब्यूट एज V1 डैश V1 डबल डैश, वोल्टेज डिवीजन प्रेजेंट. देखो जी, आप इनपुट पे देखें तो आप इनपुट में देखें तो जो V1 है ना, V1 डिस्ट्रीब्यूट एज ए
कैसे दिखा सकते हैं, V1 इक्वल V1 डैश प्लस V1 डबल डैश। जो करंट्स है ना, करंट्स I1 इक्वल टू I1 डैश दैट इज इक्वल टू I1 डबल डैश। इनपुट में कैसे है, वोल्टेज डिवीजन पर करंट्स आर द इक्वल, क्या बोल सकते हैं, नो दे आर करेंट द सीरीज। देखिए आउटपुट में जो V2 है ना, जो V2 है ना, V2 वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट एज ए V2 डैश एंड V2 डबल डैश। इधर भी कैसे है जी, वोल्टेज डिवीजन। मगर करंट कैसे है, I2 इक्वल टू I2 डैश दैट इज इक्वल टू I2 डबल डैश। करंट्स आर द सेम। वोल्टेज डिवीजन बोलते दे आर करंट सीरीज। That means two two-port networks are in series. If two two-port networks are in series, equivalent Z parameters is equal to sum of the two impedance matrices. Sum of the two impedance matrices. Okay. Now next let us go to the this Y parameters. देखो जी Y parameters में we indicate I1, I2 in terms of V1 and the V2. इधर कौन सा इक्वेशन आ रहा है, करंट इक्वेशन। करंट इक्वेशन बोले तो KCL, करंट इक्वेशन बोले तो KCL। Now correspond input we got a current equation KCL. KCL means current division. That's why first equation के लिए we can derive the corresponding parallel circuit. देखिए second equation also current equation KCL. Now current division again we can derive the corresponding equivalent circuit. Try to remember the equations as well as the equivalent circuit. देखिए इधर भी क्वेश्चन में कोई तो भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया तो क्वेश्चन में इज आस्किंग द वाई पैरामीटर्स, देन सिंप्लीफाई दैट वन एज ए इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क। जेड पैरामीटर्स बोल तो रिमेंबर द टी नेटवर्क, वाई पैरामीटर्स के लिए रिमेंबर द पाई नेटवर्क। पूरा कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस को सिंप्लीफाई दैट वन एज इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क डेवलप करने के बाद राइट द केसीएल इक्वेशन एट द इनपुट एंड द आउटपुट। केसीएल इक्वेशन लिख के सिंप्लीफाई करने से वी कैन फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग वाई पैरामीटर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम सेव करने के लिए ट्राई टू रिमेंबर द ऑल द रिलेशंस। इधर भी क्वेश्चन में रिवर्स पूछ सकते हैं आपको। इन द क्वेश्चन इटसेल्फ दे गिव द डेटा अबाउट वाई पैरामीटर्स, दे मे आस्क यू टू फाइंड आउट सर्किट कांस्टेंट्स। विथ हेल्प ऑफ वाई पैरामीटर्स आल्सो वी कैन फाइंड आउट सर्किट कांस्टेंट्स। हाँ देखो जी इधर भी लैटिस नेटवर्क के लिए जेड पैरामीटर्स के लिए जो प्रोसीजर अप्लाई किया ना, वाई पैरामीटर्स का आल्सो एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर। इधर एक ही डिफरेंस, नेम ऑफ द सर्किट कॉन्सेप्ट आर डिफरेंट। देखो जी जेड पैरामीटर्स में कैसे दिखाया था, जेड ए, जेड डी, जेड बी, जेड सी, मगर वाई पैरामीटर्स में क्या दिखा रहा है, इधर एडमिनेंस। आप थोड़ा फार्मूलाज देखे तो वी रोड द सिमिलर फार्मूलाज फॉर जेड पैरामीटर्स, मगर डिफरेंस एक ही है। जेड वन कंक्लूड करने के क्या लिखवाया था, जेड बी प्लस जेड ए बाई टू, मगर इधर क्या कर रहे हैं, वाई वन के लिए वाई बी प्लस वाई ए बाई टू। ओनली नेम ऑफ द सर्किट कॉन्सेप्ट डिफरेंट, बट दोनों में प्रोसीजर इज द सेम। ओके, रिविजन करते समय क्या करो, कंपेयर कर लो वाई पैरामीटर्स के लिए, जेड पैरामीटर्स के लिए, लैटिस नेटवर्क डिफरेंस के आ रहे हैं। कंपेयर किया तो फायदा क्या है बोलते, वी कैन अवॉइड द कन्फ्यूजन्स, वी कैन रिकॉल ईजी वे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ओके, ये भी देखिए, ये एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इधर इनपुट में I1 डिस्ट्रीब्यूट एज I1 डैश एंड I1 डबल डैश। करंट डिवीजन इज द प्रेजेंट। I1 डिस्ट्रीब्यूट एज I1 डैश एंड I1 डबल डैश, करंट डिवीजन। इधर करंट डिवीजन बोलते वी कैन कंक्लूड एज दे आर कनेक्टेड द पैरेलल। वोल्टेज देखे तो V1 V1 डैश, देखो जी V1 V1 डैश एंड V1 डबल डैश आर द इक्वल। करंट डिवीजन प्रेजेंट मगर वोल्टेज आर द इक्वल। आप इधर आउटपुट देखे तो आउटपुट में क्या आ रहा है जी, I2 करंट, I2 करंट डिस्ट्रीब्यूट एज I2 डैश एंड I2 डबल डैश, करंट डिवीजन हो रहा है। मगर आप वोल्टेज देखे तो V2 को क्या लिख सकते हैं, इधर V2 डैश एंड V2 डबल डैश। करंट डिवीजन है मगर वोल्टेज आर द सेम। करंट डिवीजन बोलते कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। देखिए इनपुट पैरेलल, आउटपुट पैरेलल, इनपुट पैरेलल, आउटपुट पैरेलल। If two two-port networks are parallel, equivalent Y parameter is equal to sum of the two admittance matrices. Sum of the two admittance matrices. Okay? एक क्वेश्चन लिखो जी। All of you just take the snap this one or explain. एक क्वेश्चन लिखो जी। क्वेश्चन लिखो जी।
देखो जी चट्टोपाध्याय, whenever you are applying the Laplace, main important part is the conversions, converting time domain to S domain for the resistor, inductor, capacitor. अभी equivalence को डिस्कस किया ना जी. इंडक्टर को लैप्लास में वी आर हैव द फ्लेक्सिबिलिटी होना बोलते वी कैन इंडिकेट इनिशियल वैल्यू आइदर एज ए वोल्टेज सोर्स नहीं एज ए करंट सोर्स. कैपेसिटर आल्सो हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी एज ए वोल्टेज सोर्स नहीं तो करंट सोर्स. दैट इक्विवेलेंट सर्किट्स आर इंपॉर्टेंट. क्यों बोलते हो, देखिए मेनली लैप्लास में क्या क्या चाहिए बोले तो मेनली फर्स्ट वन इज द पार्शियल फ्रैक्शंस. पूरा इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है. दैट इज द मेन थिंग. क्यों बोलते हो, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद एट द एंड वी गो फॉर इनवर्स लैप्लास. फर्स्ट थिंग इज रिमेंबर इक्विवेलेंट सर्किट. सेकंड थिंग इज ट्राई टू गेट द प्रोसीजर फॉर द पार्शियल फ्रैक्शंस. ओके चट्टोपाध्याय, देखिए चेक करेंगे इसमें व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट. पहले कनेक्शन चेक करेंगे जी, कनेक्शन चेक करेंगे. देखो जी एग्जाम्पल में जो I1 करंट है ना, I1 करंट डिस्ट्रीब्यूट एज ए corresponds example I1 current distributed as a I1 dash, whatever this current is a I1 double dash. इनपुट कैसे है जी, करंट डिवीजन बोलते हो पैरेलल. ये भी देखिए जो I2 करंट है ना, I2 करंट डिस्ट्रीब्यूट एज ए I2 dash, व्हाट इज I2 डबल डैश. ये भी कैसा है जी, करंट डिवीजन पैरेलल. इनपुट पैरेलल आउटपुट पैरेलल. क्या बोल सकते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क्स आर कनेक्ट इन द पैरेलल. ओके चलिए कम टू फर्स्ट वन. यार फर्स्ट नेटवर्क क्या है इधर, फर्स्ट नेटवर्क इज द फर्स्ट नेटवर्क एलिमेंट वाले क्या है 2 2 2. अभी डिस्कस किया था. पाई नेटवर्क में क्या चाहिए आपको, हर एक सर्किट एलिमेंट इन द एडवांस फॉर्म, हर एक सर्किट एलिमेंट इन द एडवांस फॉर्म. देखो जी आप इधर ऐसा लिख सकते हैं ना, वाई ए इक्वल टू 1/2, वाई बी इक्वल टू 1/2. देखो जी वाई सी इक्वल टू 1/2. जो मतलब क्वेश्चन में क्या दिया जी, रेजिस्टेंस वैल्यू इज 2 ohms, रेजिस्टेंस वैल्यू इज 2 ohms. ठीक ना. हाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे जी, Y21. पहले फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क के लिए, फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क के लिए आई नेम इज Y21 डैश. फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क के लिए आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द Y21. देखो जी अभी फार्मूला डिस्कस किया ना, देखो जी अभी फार्मूला डिस्कस किया था. देखो जी अभी फार्मूला डिस्कस किया था. फार्मूला क्या है जी, दिस Y21 इज इक्वल टू माइनस YB, Y21 इक्वल टू माइनस YB. फॉर्मूला क्या है जी, Y21 इज इक्वल टू माइनस YB. दिस Y21 इक्वल टू माइनस YB कितना है जी, -1/2, -1/2. फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क इज कंप्लीटेड. कम टू सेकंड टू पोर्ट नेटवर्क. देखो जी थोड़ा ध्यान से देखें तो सेकंड टू पोर्ट नेटवर्क, सेकंड टू पोर्ट नेटवर्क कौन सा दिया है जी, T नेटवर्क इज गिवन. मगर Y पैरामीटर्स थोड़ा आसानी से कंक्लूड करने के लिए क्या चाहिए, पाई नेटवर्क. Can I use the application star delta transformation? Can I use the application star delta transformation? If you use the application star delta transformation, देखो जी ऐसा दिखा सकते हैं ना, 3 ohms, 3 ohms and 3 ohms. Resistance of equal values converted from star to delta, that resistance value increased by 3 times, increased by 3 times. देखो जी for this one again can you write the respect to pi network? देखो जी एग्जाम्पल में वाई ए वैल्यू कितना है जी, 1/3. बट द वाई बी ऑल्सो 1/3, बट द वाई सी ऑल्सो 1/3. गेटिंग ना, आई एम कन्वर्टिंग दिस स्टार टू इक्विवेलेंट डेल्टा. मगर क्या चाहिए आपको, यू शुड इंडिकेट एवरी एलिमेंट एडवांस फॉर्म. देखो जी अभी कंक्लूड किया था सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क के लिए. देखो जी एग्जाम्पल में सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क के लिए Y21 डबल डैश, Y21 डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, -YB. देखो जी -YB कितना है इधर, -1/3. देखो जी इधर फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क के लिए Y21 पता है, फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क Y21 पता है, सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क के लिए Y21 पता है. फाइनली कैन यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट Y21 वैल्यू. इक्विवेलेंट Y21 इक्वल कैसे लिख सकते हैं, ऑलरेडी कंक्लूडेड. वी कैन राइट द Y21 डैश एंड Y21 डबल डैश, Y21 डैश एंड Y21 डबल डैश. देखो जी Y21 डैश कितना है जी, -1/2. ये कितना है इधर, -1/3. सिंप्लीफाई करने से यू गेट द आंसर, सिंप्लीफाई यू गेट द आंसर. ओके -5/6, -5/6. ओके
somebody asking it is better to live two port network. एक काम करो श्रीवास्तव, मान लो आप अभी तक टू पोर्ट नेटवर्क नहीं पढ़े तो एक काम करो, एटलीस्ट रिमेंबर द जनरल फार्मूलास टी नेटवर्क के लिए, पाई नेटवर्क जनरल फार्मूला याद रख लो. क्यों बोल, देखिए मान लो एग्जाम में इजी क्वेश्चन दे दिया टू पोर्ट नेटवर्क में मगर आप छोड़ दिया, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड. समझ रहे ना? दैट्स वाई आप कुछ भी नहीं पता, एटलीस्ट रिमेंबर द फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स. इफ ड्यू टू एनी रीजन मान लो कोई ईजी क्वेश्चन दिया तो वो फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं. ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना. ओके चिन्मयी, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. हाँ देखो जी, अगेन कम टू हाइब्रिड पैरामीटर्स. देखो जी, इन द हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या चाहिए आपको? वोल्टेज वैल्यू V1 एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ I1 एंड द V2, I1 एंड द V2. व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, कौन सा है जी? फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है इधर? वोल्टेज इक्वेशन KVL. KVL बोलते वोल्टेज डिवीजन. दिस वोल्टेज डिवीजन हैपेंस करस्पॉन्ड द सीरीज सर्क्यूट, करस्पॉन्ड सीरीज सर्क्यूट. देखिए सेकंड वन इज द करंट इक्वेशन. करंट इक्वेशन बोलते KCL. KCL बोलते करंट डिवीजन. करंट डिवीजन हैपेंस करस्पॉन्ड पैरेलल सर्क्यूट. ओके, नो हर एक पैरामीटर के लिए रिमेंबर द रेस्पेक्ट टू दैट इक्वेशंस एज वेल एज द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट सर्क्यूट्स. हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ो जी एक बार, आई विल एक्सप्लेन. क्वेश्चन पढ़ो जी. चट्टोपाध्याय, आप पुराना पेपर्स देखे तो भी so far maximum questions from two port network have been asked from the Z and Y parameters only. ऐसा नहीं है कि वो रिमेनिंग पैरामीटर छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मैक्सिमम परसेंटेज आप होना बोलते एक बार पुराना पेपर्स पूरा चेक कर लो. मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड स्पेशली फ्रॉम Z पैरामीटर्स एंड Y पैरामीटर्स. Z पैरामीटर्स Y पैरामीटर्स में OT नेटवर्क, पाई नेटवर्क, लैटिस नेटवर्क फार्मूलास थोड़ा याद रख लो. 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो. प्रैक्टिस करें तो आसानी से धीरे धीरे ब्रेन में स्टोर हो जाएगा. जो फार्मूलास ब्रेन में नहीं बैठ रहे, क्या करो, सुबह उठने के बाद फ्रेश माइंड से पढ़ो. सुबह पढ़ो, मॉर्निंग थोड़ा एनर्जी ज़्यादा रहते, ब्रेन का थोड़ा एक्सेप्टिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा रहते. ओके, हाँ देखो जी क्या चाहिए आपको? H12. देखो जी अभी एक स्टेटमेंट कंक्लूड किया था. V1 रिलेशन क्या है जी? वी कैन रेडिस में H11 I1. देखो जी H12 व्हाट डू रेडिस में V2, ये ना अभी डिस्कस किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन. देखो जी क्या चाहिए आपको? H12. ऐसा बोल सकते ना, H12 निकालने के लिए, H12 निकालने के लिए प्री डिफाइंड कंडीशन क्या है जी? I1 0. जब I1 0 हो तो ऐसे लिख सकते ना V1/V2, V1/V2. कंडीशन क्या है जी? I1 0. कंडीशन है I1 0. देखो जी I1 0 में इट इज़ ओपन सर्किटेड, इट इज़ ओपन सर्किटेड. जब ये ओपन सर्किट किया तो ऐसा बोल सकते ना 1 ओम रेजिस्टेंस में कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं रहते. वोल्टेज अक्रॉस दिस वन, वोल्टेज अक्रॉस दिस पार्ट बोथ आर द सेम V1. इधर क्या है जी? V2. देखो जी इधर सोर्स लगा रहे, कौन सा सोर्स लगा रहे? इधर V2 सोर्स लगा रहे. इधर ऐसा बोल सकते ना जितना वोल्टेज इधर है सेम वोल्टेज पैरेलल फॉर दिस वन V2. अब थोड़ा ध्यान से देखो जी, कैन आई गिव स्टेटमेंट लाइक दिस? जो V2 वोल्टेज है ना, इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 3 ओम रेजिस्टर, इन द 2 ओम रेजिस्टर. क्यों बोलते? देखिए ए 1 ओम डज नॉट इन्फ्लुएंस. ये क्यों बोलते? इधर करंट 0, नो वोल्टेज ड्रॉप इज प्रेजेंट. जब ये ओपन सर्किट किया तो 3 and 2 बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. जो V2 है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट. आपको क्या चाहिए जी? V1 V2 रिलेशन चाहिए. रिलेशन के लिए कैन आई यूज एप्लीकेशन वोल्टेज डिवीजन टेक्निक. इफ यू अप्लाई वोल्टेज डिवीजन टेक्निक V1, देखो जी ये दोनों एलिमेंट के लिए टोटल वोल्टेज कितना है? इधर V2. सिमिलर रेसिस्टर कितना है जी? 2 बाई टोटल रेजिस्टेंस. व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट? इज V1/V2. कितना है जी आंसर? 2/5. V1/V2 कितना है जी आंसर? 2/5. चेक कर लो, आर यू गेटिंग सेम और डिफरेंट?
2/5, वेरी गुड वेरी गुड. देखो जी, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेइंग एज ए सर आई हैव फॉरगेटन ऑल द फार्मूलाज, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहे. देखो जी, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दैट इज़ अ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. देखिए, वी आर हैंड द टू ब्रेन्स, सबकॉन्शियस माइंड रहते. अभी तक जो जो पढ़े ना 1 साल से, सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड में है जी. ओनली थिंग इज व्हेन एवर यू आर सॉल्व द प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट कमिंग आउटसाइड. वो बाहर आना बोल तो 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट आप स्टेबल हो जाओ, टेंशन कंप्लीट निकाल दो. ज़्यादा टेंशन है तो क्या होता है, ब्रेन अच्छा काम नहीं करते, इट विल बिकम द कम्प्लीटली अनस्टेबल. पहले आपने आपके ऊपर विश्वास रखो. जस्ट गिव स्टेटमेंट्स टू योर ब्रेन एज ए आई रेड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, आई कैन रिकॉल, आई हैव द कैपेसिटी टू रिकॉल. ऐसा करके क्या करो, सुबह उठने के बाद जस्ट क्विक रिविजन करो. जो जो फार्मूलाज भूल गए ना, जस्ट फास्ट रिविजन करो. ऐसा 1-2 डेज करो, जस्ट सब कुछ बाहर आ जाता है. मेनली क्या होता बोलते, वी डोंट बिलीव आवर एबिलिटीज. इन दैट वे ओनली वी लूज द कॉन्फिडेंस. कभी भी अपने आप को डोंट डिग्रेड दैट योर सेल्फ. एवरीवन हैज द पोटेंशियल. बिलीव योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी थिंग. ओके, हाँ यस अप्लाई कर सकते हैं जी. चलिए, हाँ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा स्नैप ले लो जी, स्नैप ले लो. सत्यनारायण, इधर स्टार्ट डेल्टा जरूरत नहीं है जी. स्टार्ट डेल्टा कब जाना है सत्यनारायण? इफ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल, देन वी गो फॉर द स्टार्ट डेल्टा. इधर जरूरत नहीं है जी. क्यों बोलते, I1 ओपन हो गया ना. ओके, ये स्टार डेल्टा का जरूरत नहीं है जी. समझ रहे ना, इधर स्टार डेल्टा का जरूरत नहीं है. देखो जी, ये ओपन शुरू कर दिया तो दोनों सीरीज में है ना. सीरीज पैरेलल कनेक्शन में स्टार डेल्टा जरूरत नहीं है. ओके, चलिए. देखो जी, एग्जाम्पल में क्या दिया जी, स्टेटमेंट 4 ओम रजिस्टर का कुछ ड्रॉप दे दिया. और क्या पूछ रहे जी, क्वेश्चन में हाइब्रिड पैरामीटर्स दे दिया. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, क्या व्हाट इज योर रिक्वायर्ड सोर्स वोल्टेज. चलो जी चेक करेंगे. पहले इधर आउटपुट के ऊपर फोकस करेंगे. पावर डिसिपेशन कितना दिया जी, 25. देखो जी, ऐसा लिख सकते ना, पावर डिसिपेशन इक्वल टू कैन वी स्क्वेयर बाई करस्पॉन्डिंग लोड रेसिस्टर. कितना जी, पावर कितना है इधर 25. देखो जी, V2 वैल्यू तो नहीं पता है, लोड रेसिस्टर पता है आपको. लोड रेसिस्टर कितना है जी 4. देखो जी, ऐसा लिख सकते ना, V2 इक्वल टू सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करके कितना दे 10 वोल्ट्स. स्टेप 1 हो गया. अब क्या करेंगे, V2 रिलेशन लिखेंगे. देखो जी, V2 के लिए ऐसे लिख सकते ना, करंट इज एंटरिंग नेगेटिव टर्मिनल. करंट एंटर्स नेगेटिव टर्मिनल. व्हेन करंट एंटर्स नेगेटिव टर्मिनल, साइन फॉर द करंट इज टेकन एज ए नेगेटिव. क्या लिख सकते जी, -I2 × 4. देखो जी, V2 इक्वल कितना है इधर 10 -I2/4. आप इधर सिंप्लीफाई किया तो I2 वैल्यू कितना दे जी, -2.5. चेक करो, ऐसा लिख सकते ना. When current enters negative terminal, sign for the current is taken as a negative. समझ रहे ना. होना बोलते इधर पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे आपको कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए. I2 इंटू करस्पॉन्डिंग लोड रेसिस्टर, जो 4 ओम से ना, दैट इज ओनली लोड रेसिस्टर. व्हेन करंट एंटर्स नेगेटिव टर्मिनल, साइन फॉर द करंट इज टेकन एज ए नेगेटिव. लोड रेजिस्टेंस कितना है जी 4. ओके, अब क्या करेंगे. नो, आउटपुट साइड आपको I2 इक्वेशन पता है. हाइब्रिड इक्वेशन पैरामीटर फॉर्मूला क्या है जी, I21 ऐसे लिख सकते ना, दिस हाइब्रिड पैरामीटर्स इक्वेशन ऐसे लिख सकते ना.
हाँ अब देखो जी, अब देखिए इसमें आपको I2 वैल्यू पता है, I2 वैल्यू कितना है जी -2.5, I2 वैल्यू कितना है जी -2.5, H21 देखो जी क्वेश्चन में दे दिया कितना है जी -5I1 प्लस, देखो जी H22 क्वेश्चन में दे दिया 2, देखो जी V2 वैल्यू भी कैलकुलेट किया इधर 10, देखो जी सिंप्लीफाई करके I1 निकाल सकते ना पहले, हाँ गिव द आंसर्स, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। चेक करो जी, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। I1 कितना है जी, बोलिए आंसर। बोले आंसर कितना है जी I1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 4.5 एम्पियर्स। देखो जी I1 भी आ गया, I1 भी आ गया। अब इनपुट के ऊपर फोकस करेंगे, अभी तक किसके ऊपर फोकस किया आप, आउटपुट के ऊपर, अब इनपुट के ऊपर फोकस करेंगे। इनपुट में इक्वेशन क्या है जी, V1 इक्वेशन। देखो जी V1 के लिए ऐसे लिख सकते हैं ना, H11 I1, और क्या है जी H22 H22 V2, सॉरी एक मिनट जी, ओके ऐसे लिख सकते ना। देखिए V1 के लिए इधर फोकस करो जी, इधर फोकस करो, इधर करंट कितना जा रही है, जिस पर I1 करंट इज फ्लोइंग, I1 करंट इज फ्लोइंग। आप इधर थोड़ा ध्यान से देखे तो ऐसा लिख सकते ना, VS इक्वल टू, देखो जी जो VS है ना, सम वोल्टेज गोइंग एज ए V1। देखो जी इधर ड्रॉप क्या है, इधर ड्रॉप इज कैन 2I1, जो VS वोल्टेज है ना, सम वोल्टेज विल गोस एज ए ड्रॉप, रिमेनिंग वोल्टेज V1, इधर केवल इक्वेशन में लिखने से ऐसा लिख सकते ना। देखो जी एक्सप्रेशन में ऐसा लिख सकते ना, V1 इक्वल टू VS माइनस 2I1। देखो जी रिलेशन यूज कर सकते ना आप, रिलेशन यूज कर सकते ना, ओके इधर पुट करेंगे। देखो जी V1 प्लेस में क्या लिख सकते हैं, इधर VS माइनस 2I1, देखो जी H11 पता है आपको, H1 कितना है इधर 2, H1 इज 2, नो I1 वॉट एवर H12 पता है आपको, H12 कितना है इज 4, H12 इज 4 V2। अब देखो जी थोड़ा ध्यान से देखिए, ये लास्ट इक्वेशन में आपको I1 वैल्यू पता है, कितना है I1 वैल्यू, हाउ मच 4.5, I1 वैल्यू 4.5 एंड V2 वैल्यू पता है, V2 कितना है 10। बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज कैन यू फाइंड आउट VS, गिव द आंसर्स, बोलो जी। देखिए V2 इक्वल टू 10, I1 इक्वल कितना है 4.5, सिंप्लीफाई करके VS फाइंड आउट करो। रीना गिव आंसर 58। ओके लगा सकते हैं निकी कुमारी, बट इट बिकम मोर लेंदी। निकी कुमारी फिर जेड में कन्वर्ट करना है, फिर इनवर्स लगाना है, इट बिकम मोर लेंदी ना, दैट्स वाई सिंपली आई एम कन्वर्टिंग स्टार टू इक्वल डेल्टा। क्यों बोल, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका टारगेट कम समय में करेक्ट आंसर। yes दिस वीडियो इज अवेलेबल आफ्टर दिस सेशन आल्सो, अवेलेबल, बाद में भी देख सकते हैं आप। Okay dear students, finally I will show the equations corresponding to ABCD parameters, G parameters and ABCD parameters। देखो जी इधर G parameters के लिए कौन सा इक्वेशन है, करंट इक्वेशन, करंट बोल तो which one, KCL means current division happens correspond to the parallel circuit। Now second one is the voltage equation means KVL, voltage division बोल तो they are current in the series। For this especially Z, which one, next one Y, next one is a hybrid, third one is a G। Try to remember the equivalent circuits and the respective equations। मगर if you come to ABCD parameters के लिए no equivalent circuit is present।
रीजन क्या है बोले, देखिए इनपुट इज डेवलप, फर्स्ट इक्वेशन करस्पॉन्ड इनपुट, सेकंड इक्वेशन ऑल्सो करस्पॉन्ड इनपुट, दोनों इक्वेशन करस्पॉन्ड इनपुट। आप रिमेनिंग पैरामीटर्स देखे तो देखो जी, इधर फर्स्ट इक्वेशन करस्पॉन्ड इनपुट करंट, सेकंड इक्वेशन करस्पॉन्ड इनपुट वोल्टेज। सिमिलरली आप हाइब्रिड जेड वाई चेक करें तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर द इनपुट, सेकंड इक्वेशन फॉर द आउटपुट। मगर इधर क्या है जी, दोनों इक्वेशंस, बोथ इक्वेशंस आर डेवलप्ड विद रेस्पेक्ट टू इनपुट, दैट्स व्हाई एबीसीडी पैरामीटर्स के लिए नो इक्विवेलेंट सर्किट इज प्रेजेंट। ओके, और एक एबीसीडी पैरामीटर्स का एप्लीकेशन क्या है, वी यूज दिस वन इन द एप्लीकेशन ट्रांसमिशन लाइन्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। That's why in the transmission line power transmitted from sending end to receiving end. Receiving end में क्या होना, current should be come outside. मगर इधर क्या दिखा रहा है जी, inwards. We are indicating as a inwards. It should come outwards actually. मगर two port में क्या है condition, it should be come inwards. That's why I am indicating the negative sign. क्यों बोलते हो, if I want to indicate the outward current, how to write this as a minus? I am writing as a minus. Okay. Okay, dear students, with this one today's session is completed. Now in this one at the end I'll give two suggestions. One is the, देखिए from our subject with respect gate point of view, they are asking maximum problems only. In that one problem solve करते समय क्या करो, पहले चेक कर लो problem can able to solve or not. सॉल्व कर रहा बोल तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करो, नो इशू। ना ही कुछ लेंथी है, कुछ कॉम्प्लेक्स चाहिए बोल तो फर्स्ट थोड़ा इजी क्वेश्चंस करने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस आने के बाद कर लो। एंड ऑब्जर्व द करंट डायरेक्शंस, वोल्टेज पोलैरिटीज एंड गिवन यूनिट्स केयरफुली। क्यों बोलते एक पोलैरिटी साइन चेंज हो गए ना पूरा सोल्यूशन बदल जाएगा। एंड एज वेल एज यूनिट्स ऑल्सो, फोकस इन गिवन यूनिट्स ऑल्सो केयरफुली। ओके, and whenever you are doing the calculations, in that calculation part if you are getting wrong for any particular question, don't lose the confidence, try to maintain the positiveness throughout the exam. After the exam also you have to maintain the positiveness, before the exam also you have to maintain the positiveness. देखिए every situation को take this in the positive way, then definitely get the success. Okay dear students, wish you all the best. ओके डियर स्टूडेंट्स, चट्टोपाध्याय आपका डाउट क्या है जी, सेकेंडरी से प्राइमरी शिफ्ट करने से इक्वेशन में और टू पोर्ट ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, okay dear students, wish you all the best. नाउ चट्टोपाध्याय जी आपका डाउट और एक बार भिजवाओ, एक बार डाउट क्या है आपका चट्टोपाध्याय? निकी कुमारी 0.4 क्या है जी, निकी कुमारी जी? देखिए रिगार्डिंग मैग्नेटिक सर्क्यूट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जी। इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट वन, जस्ट बेसिक्स चाहिए बस उतना ही। क्यों बोलते इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट दे ट्राई टू अप्लाई दिस लॉजिक इन द इलेक्ट्रिकल मशीन्स आल्सो। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स गो थ्रू अबाउट दिस मैग्नेटिक कपल सर्क्यूट्स आल्सो। ओके अनुराग जैन, आप इलेक्ट्रिकल है तो थोड़ा चेक कर लो।
इलेक्ट्रॉनिक्स है तो नो प्रॉब्लम, छोड़ दो, नो इशू, ओनली बेसिक चाहिए आपको, नो नीड टू गो फॉर इन डेप्थ. यस अनुराग जैन, डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट वन. सेकेंडरी से प्राइमरी वैल्यू शिफ्ट करने से आंसर निकलता ना वो वाला. हाँ यस, हाँ चट्टोपाध्याय, आप किधर से भी कर सकते हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी कर सकते हैं, तो प्राइमरी से सेकेंडरी भी कर सकते हैं. शिफ्ट करने से थोड़ा आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं चट्टोपाध्याय. सेकेंडरी से प्राइमरी नहीं तो प्राइमरी से सेकेंडरी भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आंसर इज द सेम, आंसर विल नॉट चेंज. आंसर विल नॉट चेंज. एंड चट्टोपाध्याय, दैट इज ऑल्सो दैट मॉडल ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट स्पेशल फॉर इलेक्ट्रिकल. उधर भी कॉन्फिडेंस लूज मत हो जाओ. सत्यनारायण कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे जी आप? देखिए एस एस सत्यनारायण, इफ यू आर गोइंग फॉर प्राइमरी टू सेकेंडरी इट बिकम्स n2 by n1. सेकेंडरी टू प्राइमरी बोल तो n1 by n2. सत्यनारायण, सत्यनारायण, if you are shifting from secondary to primary you will get the formula as a n1 by n2 whole square. शिफ्टिंग सेकेंडरी टू प्राइमरी ऐसे मल्टीप्लाई करना है. प्राइमरी टू सेकेंडरी किया तो पीरियड n2 by n1. यार एक ही स्टेटमेंट है, देख लो, जिधर आप शिफ्ट कर रहे, प्राइमरी शिफ्ट कर रहा बोल तो न्यूमरेटर में प्राइमरी नंबर ऑफ टर्म्स लिखो. सेकेंडरी शिफ्ट कर रहा बोल तो न्यूमरेटर में राइट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सेकेंडरी. ओके सत्यनारायण. लास्ट क्वेश्चन क्या है जी? देखो जी, इधर शिफ्टिंग कुछ भी नहीं कर रहे जी, आप कंफ्यूजन मत हो जाओ. इट इज वन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. ये आउटपुट पार्ट है, इनपुट पार्ट है. ये आउटपुट पार्ट में इनपुट पार्ट है. आउटपुट पार्ट के लिए पहले क्या करूं, डेटा इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया. पावर से क्या निकाल रहे, V2 निकाल रहे. V2 निकालने के बाद I2 निकाल दिया भाई. ओके, आपका हाइब्रिड पैरामीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, आउटपुट का पता है. ये इक्वेशन लेके क्या कर रहे थे, I1 निकाल रहे. ये आउटपुट का हो गया. फिर इनपुट के पास जा रहे. इनपुट क्यों जा रहे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपको, Vs. देखिए हाइब्रिड पैरामीटर में आपको इनपुट इक्वेशन पता है, आपको इनपुट इक्वेशन पता है. इसमें आपको देखिए हाइब्रिड पैरामीटर्स पूरा मैट्रिक्स दे दिया आपको, मगर क्या चाहिए आपको, सोर्स वोल्टेज चाहिए. मगर क्या लिख रहे इधर V1, इसलिए क्या कर रहे इधर केवीएल इक्वेशन लिख रहे इधर. सोर्स वोल्टेज कितना है जी, Vs. इधर कितना है, V1. ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 2I1. रीअरेंज करने से V1 सेपरेट कर सकते ना. इधर V1 ले जाके, इधर V1 का रिलेशन है ना, इधर लेके फिर पुट करो. देखिए आपको इधर I1 वैल्यू पता है, I2 वैल्यू पता है, V2 पता है. I1 कितना है जी, 4.5. V2 कितना है, 10. सिंप्लीफाई करो, ले लो Vs. ओके चट्टोपाध्याय, क्लियर ना चट्टोपाध्याय? ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए जैन एक स्टेटमेंट याद रख लो. इन द टेस्ट सीरीज समटाइम्स व्हाट दे डू इंटेंशनली दे गिव द लेंथी क्वेश्चंस. उसका पर्पस क्या है बोले तो, देखिए लेंथी क्वेश्चंस है तो भी आपका रिएक्शन कैसा रहते, आपका रिएक्शन कैसा रहते, आपका कैलकुलेट स्पीड कैसा रहते चेक करने के लिए. उसमें भी रीज़न क्या है बोलते, देखिए इफ़ यू ऑब्जर्व सम ऑफ द प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस, sometimes what they do, they may give conventional questions as an objective question also. It happens in the previous papers,
स्पेशली होना बोलता है गिव वन बेस्ट एग्जांपल इसरो पेपर देखो जी, इफ यू हैव इलेक्ट्रॉनिक्स इसरो पेपर्स देख लो, होना बोले तो वन ऑफ द ईयर ये कंप्लीटली कन्वेंशनल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. दैट्स वाई आपका थोड़ा माइंड सेट होना बोलते कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो भी आप अटेम्प्ट करने के तैयारी करने के लिए दे आर गिविंग द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, विद दैट वन डोंट लूज द कॉन्फिडेंस. हमेशा कैसा सोचना बोले तो इफ इट इज लेंथी क्वेश्चन फॉर एवरी स्टूडेंट, ऐसा सोचना है. ओके, अनुराग जैन, if you are getting any lengthy question for all the students, not only for you. Okay dear students, good night and wish you all the best once again. Okay, I am closing the session. Okay, dear students, wish you all the best.